We will be starting in couple of minutes. I'm just pinging the room as well as sending some details to groups. Please wait. जब तक जो ऊपर आना चाहे मीनाक्षी जी प्लीज ऊपर ले लीजिएगा, मैं एक बार पिंग कर देता हूँ। ये 50 से कम में ही अनेबल टू पिंग क्यों दिखा रहा सर है? 10-15 मिनट बाद में दोबारा से पिंग कर सकते हैं आप। अच्छा अच्छा, मैं तब तक ग्रुप्स में डाल देता हूँ। जस्ट गिव मी कपल ऑफ मिनट्स। We will be starting soon. Just give us a couple of minutes to set the room in order. Yeah, good to go in another 1 minute. Yes. अरे भाई कुछ लोग ऊपर भी आ जाइए, नहीं तो बातचीत कैसे चालू करेंगे। रॉबिन जी नमस्कार। नमस्कार आंदोलन सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए सर क्या आप, हालचाल। आज मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, आपके रूम वाकई बहुत अच्छे होते हैं सर, छोटे रूम होते हैं लेकिन वाकई बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पर्सनली सबसे जो राइट विंगर अच्छे रूम सबसे बढ़िया आपके ही रहते हैं, आपके या तो फिर वो जो नीरज करके कहते हैं ना, नीरज आगे हाँ डोंगरा हाँ जी हैं, मीनाक्षी जी भी उनको वो करती हैं, काफ़ी अच्छे रूम रहते हैं आपके, काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब हटके रहते हैं थोड़े से। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ऊपर ये जो क्लब है डिटेल डिस्कशन, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो टॉपिक्स जनरली लेते हैं, उसको थ्रेडबेयर डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू वीक्स हम लोगों ने जो रूम्स लगाए हैं, एक हम लोगों ने लगाया था फर्स्ट कजन मैरिज पे अभी रिसेंटली, which was talking about the biological, social and economic concerns related to first cousin marriages, right, in Islamic society predominantly. This was not just Islamic society but first cousin marriage in general. उससे पहले हम लोगों ने पॉलीगैमी द सोर्स ऑफ ऑल सोशल इवल इस पे रूम लगाया था। उसके पहले हम लोगों ने रूम लगाया था क्या कहते हैं, लव जिहाद पे। और हम लोग इस तरह और भी रूम्स लगा चुके हैं। एक हम लोगों ने रूम लगाया था डाइवोर्स पे, डाइवोर्स वर्सेस खुला, द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन with respect to divorces in Islamic society. तो कश्मीरी भाई आप भी ऊपर आ जाइए, 2-4 मिनट जरा थोड़ा सा हम लोगों को रूम चलाने के लिए हेल्प कर दीजिए, in the sense we start the initial discussion, right? तो let me talk about आज के रूम का एजेंडा क्या है। आज के रूम का एजेंडा प्रीडोमिनेंटली ये है कि अगर if any woman
is planning to get married into an Islamic household, right? तो किस तरीके की checklist she has to go through, to be able to structure her decision to marry into an Islamic household. What are the key considerations she needs to consider? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या कहते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं इस तरीके के, वो भावनाओं में बह के लेते हैं। हम लोग लीगल और सोशल और इकोनॉमिक रिपरकशंस उसके एसेस नहीं करते हैं। तो आज के रूम का आइडिया जो है कि वो ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसपे कि हम लोगों को लेना चाहिए। तो we will start with the initiation of engagement, and when I say initiation of engagement, उसमें मतलब particularly if पर आ जाइए थोड़ा सा कन्वर्सेशन को हमारे हेल्प करिए स्ट्रक्चर करने के लिए। तो आज का मैं रूम का ये जो टाइटल है, वुमेन्स चेकलिस्ट बिफोर मैरिंग इन इस्लाम, राइट? तो इसमें हम लोग की कंसिडरेशंस डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्या क्या की कंसिडरेशन होने चाहिए किसी भी महिला के लिए जो कि इस्लाम में विवाह करना चाह रही है। और ये इस्लामिक वुमेन भी हो सकती है और ये नॉन इस्लामिक वुमेन भी हो सकती है, जो who is planning to marry or who is engaged to marry or who has consideration of marrying into a Islamic household. एंड उसके जो की पॉइंटर्स है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इनिशिएशन ऑफ एन एंगेजमेंट, यानी कि जो आप इफ एनीबडी हु हैज कम इन कांटेक्ट विद समबडी फ्रॉम अ इस्लामिक सोसाइटी, where it is a relationship of a girlfriend boyfriend which will ultimately may have a potential to culminate into marriage. तो वो स्टेप वन, वो जो चेकलिस्ट है उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि am I क्या कहते हैं a victim of love jihad or it is true love that one is going after. So that is consideration one. We will discuss what love jihad is and how to specifically identify whether or not you are a victim of love jihad or you are a genuine case of love or engagement based on mutual respect and love. Step two, which is while on the process, if you are not if you do not identify yourself as a case of love jihad and there is true love and affection in the relationship, what are the key consideration of Islam that you need to consider before moving forward into marriage? Step three is the actual marriage itself. What are the key precautions, checklist you need to undertake while engaging in the process of marrying into an Islamic household? Step four is after marriage. Okay, what are the key considerations that you need to keep in mind to keep your status equivalent and secure within the legal framework of India? Step five is with respect to within marriage also and subsequent to marriage also, what are the key consideration to protect your and your next generation financial, social, and economical and legal privileges, and what are the kind of key consideration that you need to undertake. तो इन विषयों पे आज पूरी चर्चा करेंगे so that when you are entering, right, the idea is not to encourage or discourage any woman or lady marrying or not marrying into Islam, but just to provide a checklist कि आप ये सारे checklist एक बार टिक मार्क देख लीजिए, क्या क्या कंसर्न्स होते हैं, उनको कैसे कैसे एड्रेस करा जाता है और किन किन चीजों पे आपको एडमेंट रहना है और कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है so as to maintain status, which was your status pre-married, specifically if you are not coming from Islamic society. तो नीरज भाई आप इस पे थोड़ा सा, रॉबिन भाई, नीरज भाई कुछ अगर स्टार्ट करना चाहे तो फिर हम लोग धीरे धीरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंगेजमेंट प्रोसेस, यानी
whether that engagement or your connection with somebody from Islamic society, would it be considered as love jihad, or it is a genuine love case? You know, Robin bhai, Neeraj bhai, Fire ji, Kashmiri ji, नी- Meenakshi ji. नीरज भाई आप बोलेंगे, मैं बोलूं? पहले स्टार्ट करूं? नीरज भाई हेलो। बोलिए आप, बोलिए रॉबिन जी, आप बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाह रहा था, सबसे पहले तो जैसे कि होता है कि एक हम लोग सब चीज़ से हटके एक चीज़ देखें कि अगर ऐसा कोई रिश्ता बनता है तो सबसे पहले इंसान को अपने अंदर से एक चीज़ जो है कि धर्म को हटा देना चाहिए। मतलब कि मैं हिंदू मुसलमान, देखो होती है क्या है कि जब शादी ब्याह या इस तरह से प्रेम वाला कोई भी चीज़ होता है तो उस टाइम ऐसा नहीं कह सकता, मैं नहीं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है किसका दिल किस पे आ जाए, वो पहले धर्म नहीं देखता, पर्टिकुलर अपने वो इंसान को देखता है। लेकिन होता यहाँ पर एक सिस्टम ये है कि ये यहाँ पर क्या होता है कि जब ये नकली नाम या नकली ये कुछ लेके जब आते हैं तो एक चीज़ हम लोग को, एक लड़कियों को एक चीज़ दिमाग में बैठाना चाहिए कि जो इंसान स्टार्ट से ही गलत उसमें चल रहा है तो उसका दिमाग पहले से पढ़ लेना चाहिए। मतलब लड़कियों को अगर देखा जाए कि अगर एक कदम उठाए तो 2 कदम उसको पहले सोचना चाहिए कि मेरे साथ आगे क्या हो सकता है। जो इंसान अपना सच नाम लेके नहीं आया, अपना मजहब नहीं बोल के आए और या ऐसा करके आए, अगर वो ये सब चीज़ छोड़ के कर रहा है तो पहले से स्टार्ट से करा। दूसरी बात, एक चीज़ और भी देखना चाहिए कि होता है क्या, देखिए क्या, अब हम लोग क्या हिंदुस्तान में रहते हैं तो एक 20-22 करोड़ ये लोग हैं, तो 70-80 करोड़ हम लोग हैं। नॉर्मली चीज़ है, हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं तो आपस में लगाव भी हो सकता है, दूरियाँ भी होती है। हम आज के टाइम में दुनिया में अगर देखा जाए तो जहाँ तक एक हिंदू मुस्लिम को कल्चर अच्छी तरह समझता है या मुसलमान हिंदू कल्चर को कंप्लीटली समझता है, तो उस कंडीशंस में उनको या हमको एक चीज़ है कि अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं हूँ क्या और मैं आगे तुम लोग को क्या दे सकता हूँ, एक लड़का एक लड़की दोनों को। मतलब होता है ना कि जैसे हमारे में एक बार लड़की आएगी तो हम लोग उनके साथ इतनी ज़बरदस्ती कुछ नहीं होता है कि आपके साथ ये होगा, हम आपके साथ ऐसा हो सकता है या कुछ हो सकता है, या आपके पर ये प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं। एक हिंदू की एक सोच होती है। लेकिन जब वहाँ पर होता है, एक लड़का होता है जो कि बात करके, हो सकता है वो बात करता भी हो या लड़की बात करती हो कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करें, लेकिन पर्टिकुलर उसको मालूम है कि हमारे पीछे जो पीछे लोग बैठे हैं वो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि एक जो कट्टरता है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, चाहे हम लोग माने या ना माने, कट्टरता उस फ्रेम में कुछ ज़्यादा है। तो उस कंडीशंस में हमको एक चीज़ देखना चाहिए कि अगर मैं किसी लड़की को लेके आ रहा हूँ या किसी उसमें जा रहा हूँ तो अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि मेरे साथ क्या है, मैं उस सामने वाले को क्या दे सकता हूँ और मेरे से उसको क्या मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है कि विवाह अपनी जगह होता है कि देखो, ऐसा नहीं मैं सकता हूँ कि बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे भी हैं कि वाकई में जो विवाह भी करना चाहते हैं, हिंदू लड़कियों से प्रेम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनके साथ वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनसे मतलब वो लव जिहाद कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो लव जिहाद के नाम पर ये चीज़ करते हैं। तो मेरा ये कहने मतलब है कि जो भी चीज़ें स्पष्ट करके चलें जिससे आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो। क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर मेरे मन में किसी लड़की के लिए एक मोहब्बत का एक वो है तो मैं अगर उसको अपने दिल से मांगूंगा तो उसको सीधी सीधी बात ये है कि मैं अगर उसको बिल्कुल स्पष्ट करूंगा ये चीज़ कि मैं ये हूँ, तो उसके साथ अगर मैं ज़िंदगी अगर गुजारूंगा तो मेरे साथ उसको मालूम है कि हाँ ये सही आदमी क्लियर है या जो भी क्लियर कट है, आगे तक से साथ चल सकता है। लेकिन जब शादी होने के बाद साल 2 साल बाद या 6 महीने बाद या कुछ दिनों बाद जब उसकी जब असलियत खुलती है तो मेरे हिसाब से वो लड़की के साथ या लड़के के साथ जो चीज़ें होती है वाकई वो अमानवीय होती हैं वो जो चीज़ें। क्योंकि वो एक इंसान अपना हर चीज़ जब छोड़ के आता है, सब चीज़ों क्या होता है कि जब ऐसे विवाह होते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ों से इनको लड़ना पड़ता है, पर्सनली अपनी लाइफ से लड़ना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने परिवार से लड़ना पड़ता है, अपनी सोच से, अपने धर्म सबसे लड़के। उसके बाद अगर उनके बदले में उनको साथ उनको धोखा मिलता है तो मेरे को लगता है वो एक अपने आप को एक इंसान को ख़त्म कर देता है। तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक इंसानी तौर पर जैसे मेरे में भी दिमाग उनमें भी दिमाग, उसको सोच अच्छा के सब चीज़ रॉबिन करना जी, चाहिए। आंदोलन सर। हाँ जी सर, बोलिए एक बोलिए। छोटा सा प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जस्ट टू एस्टैब्लिश, यू नो, is love jihad a genuine concern to be tested before सर हिंदी में बोलेंगे ज़्यादा entering अच्छा into रहेगा a मेरे लिए, relationship? मेरे लिए हिंदी में। हाँ मैं ये पूछ रहा था, ये लव जिहाद के बारे में काफी डिस्कशन होता रहता है, केरला से मामला उठा था, उत्तर प्रदेश में भी ये बातें होती है, एमपी में भी होती है। तो एक चीज तो ये होती है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये होक्स है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता है, सब जितने भी केसेस होते हैं वो जेन्युइन होते हैं। तो मतलब अगर सारे केसेस जेन्युइन होते हैं तो हमको चेकलिस्ट की शायद जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 5%, 10%, 15% केसेस भी होते हैं जो कि वास्तव में कुड बी कैटेगराइज्ड एज लव जिहाद, so then it is a real concern, and any woman entering into a relationship specifically with a boy of a Islamic faith, he should definitely consider that ये चेकलिस्ट तो बनानी पड़ेगी कि ये टिक मार्क करके रूल आउट करा जा सके कि ये लव जिहाद का केस नहीं है, जेन्युइन लव का है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये, इज इट अ जेन्युइन कंसर्न टू बी टेस्टेड और इज इट अ होक्स? नीरज जी, कश्मीरी जी।
मेरे हिसाब से तो इट इज़ ए जेन्युइन कंसर्न कि जब आप अपना नाम नहीं बताते हैं, शुरू से ही अपना धर्म नहीं, जो मज़हब है आपका वो नहीं बताते हैं, तो वो दिक्कत है। अगर आप किसी भी हिंदू परिवार के आदमी को बोलेंगे तो वो अपना कभी भी परिवर्तित करके कभी नहीं बताएगा आपको। अब जब आप सामने आते हैं, आप अपना नाम सोनू, मोनू, टोनू करके रख देते हैं, और उसके बाद ये कई इंसिडेंट्स हमने पढ़े कि वो एक बार कोई लड़की मुंबई में जा रही थी तो उसके बॉयफ्रेंड का वॉलेट नीचे गिरा। तो जब उसने वॉलेट अपने पास रख लिया, उसने देखा कि उसके अंदर जो आईडी थी उसके अंदर कुछ और नाम था। जब उसने कन्फ्रंट किया उस लड़के को तो उसने बताया कि नहीं, ये मेरा आईडी नहीं है, या जो भी है कुछ तो बना लिया। वैसे ही कई केसेस हैं जहां पर सामने आए हैं। और पहली बार तो ये केरला में हुआ था, वहां तो क्रिश्चियन जज था जिसने ये बोला था कि लव जिहाद टर्म इट इज़ नॉट गिवन बाय द हिंदूज, इट इज़ गिवन बाय ए क्रिश्चियन जज। तो ये इश्यूज हैं। सो पहला तो स्टार्ट है वहीं से गलत है, क्योंकि मुसलमान लड़कों के सामने भी एक दिक्कत ये है, जो मैं उनके तरफ से भी कभी कभी देखता हूँ, तो मुझे ये दिखता है कि उनको ऑब्वियसली आप पर्दे में रख रहे हैं लड़कियों को, उनको पढ़ने नहीं देते हैं, जल्दी उनकी शादी कर देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि स्कूल कॉलेजेस में या नॉर्मल लाइफ में आपको मुसलमान लड़कियां दिखेंगी ही नहीं, और जो दिखेंगी भी वो भी पर्दे में दिखेंगी। और उनके पीछे, जैसे हैदराबाद की मैंने बात सुनी कि वो कॉलेज के बाहर लड़के खड़े रहते हैं कि अगर आप किसी मुसलमान लड़की से बात करेंगे तो वो आपको आ जाते हैं पूछने को, मारने को। तो ऐसे ऐसे उनके मिलिशिया भी है लड़कियों के को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस केसेस में क्या होता है कि जो मुसलमान लड़के हैं वो तो छुट्टे सांड हैं, तो वो तो कहीं पे भी जाते हैं, मिलते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, और हम कभी रोकते भी नहीं है कि ठीक है भाई बात कर सकते हो आप। तो हो क्या रहा है कि उसी बीच में बात करते करते कभी वो नाम छुपाते हैं, कभी नहीं छुपाते हैं, लेकिन उन केसेस की बात हो रही है जहां वो नाम छुपा कर बात करते हैं, बाद में वही दोस्ती प्यार में बदल जाती है, फिजिकल रिलेशनशिप में बदल जाती है। और फिर लड़की को ये कहा जाता, लड़की या लड़का एक्चुअली, मैंने कई लड़कों से भी बात की, उनको भी ये, उनने बताया कि हाँ मेरा अफेयर था एक मुसलमान लड़की के साथ, लेकिन बाद में उसने कहा कि तुम्हें मुसलमान बनना होगा। सेम लड़के के केस में भी ऐसा होता है कि लड़की को कहा जाता है कि अब तुम्हें मुसलमान बनना होगा। कभी शादी से पहले कहा जाता है, कभी शादी के बाद कहा जाता है। तो ये एक ही तरफ का कन्वर्शन क्यों हो रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मैं उसके बाद में आऊंगा कि फिर उसके बाद होता क्या है। तो अभी हम यही एस्टेब्लिश कर रहे थे कि शुरू कैसे होता है। दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स। यू गेट इन टू ए फिजिकल रिलेशनशिप विद, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, when you get into a physical relationship with any girl and when you tell her that I love you, तो वो आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो किसी भी चीज को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने को तैयार होती है। उसके बाद क्या दिक्कतें आती है मुझे लगता है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। जी। तो नीरज जी या रॉबिन जी या कश्मीरी जी, what how would a girl be able to zero on that whether it is a genuine case of affair, or is it targeted love jihad or something like that? How would somebody make it out? क्योंकि ये जो आपने कहा ये तो कंसर्न कोर्ट ने भी नोटिस करी है, इवन यूपी गवर्नमेंट ने भी नोटिस करी थी। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ये बड़ा मतलब इट इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और केस ऑफ लव जिहाद which was found in UP, basis which the anti-conversion law was amended to include couple of more things. बट मीनाक्षी जी या रॉबिन जी, कश्मीरी जी या नीरज जी, आप लोगों में से कोई ये थोड़ा सा विवेचना करके बताए कि चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? हाउ वुड अ गर्ल कम टू नो whether it is a genuine affair, or is it I'm being targeted for love jihad? नित्या जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर आ जाए। नमस्ते आंदोलन जी। तो टॉपिक जैसे वुमेन्स चेकलिस्ट बिफोर मैरिंग इन इस्लाम, तो इसमें मैं तो यही बोलूँगा कि सबसे पहले ना जो सनातनी लड़कियां हैं उनको अवेयरनेस होनी चाहिए कि देखिए, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं इक्का दुक्का केस हैं लव जिहाद के, आप क्यों बदनाम कर रहे हो उस मज़हब को, या कैसे बोल सकते हैं। लेकिन एक केस कोई आप बताइए जिसमें सनातनी ने अ, उस मज़हब को, किसी लड़की को मतलब अपने प्यार में लाने के लिए अपने को पहले मुस्लिम बना दिया हो और फिर उसको अपने झांसे में फंसा के फिर बाद में बोला हो कि हिंदू हूँ मैं असल में।
ऐसा एक भी केस नहीं होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम लड़कों ने पहले अपने आप को हिंदू बनाया और फिर बाद में अपने प्यार के झांसे में फंसा के फिर उनको लड़कियों को मुस्लिम में लाने। तो यानी कि कुछ तो प्रॉब्लम है उसमें। तो और आपके हिसाब से बाकी चेकलिस्ट का पहला आइटम ये होना चाहिए कि वेदर वंस फर्स्ट टाइम दी यू नो इनिशियल क्या कहते हैं जान पहचान उनकी, उस समय पहचान में कोई धोखा नहीं दिया गया था। दैट्स द फर्स्ट आइटम जी एज पर यू, कि अगर जी पहचान में धोखा स्टार्ट से करा गया है तो देन देयर इज अ प्रॉब्लमेटिक कंसर्न, क्योंकि वो आपसे पहली बार मिलने से पहले ये माइंड शायद मेकअप कर चुका होगा कि अगर मैं इसको झूठा नाम या झूठा रिलीजन बताऊंगा अपना, तो शायद मैं ज्यादा नजदीक आ सकता हूँ। जी राइट, सो दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ यू नो दिस थिंग, राइट? जी। और बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा कि अ, जो सनातनी लड़कियां हैं उनकी ना उनको हमें अवेयर भी करना पड़ेगा उस मज़हब में क्या कुरीतियां हैं। अगर आप उनके मज़हब में अगर जाओगे तो जैसे निकाह हलाला के बारे में उनको पूरा पता होना चाहिए कि देखिए हम जी। कितना भी मतलब बोलें कि ये भी एक है वहाँ तो पे आज का ऐसा कश्मीरी सर रूम इसीलिए हम लोगों ने रखा है। अगर आप रूम का टाइटल देखें, वुमेन्स चेकलिस्ट बिफोर मैरिंग इन इस्लाम, राइट? और यहाँ पे हम लोग कोई मतलब गलत बात नहीं करेंगे। वी विल टॉक अबाउट ओनली व्हाट आर द लीगल राइट्स डिफरेंस बिटवीन अदर सोसाइटीज एंड इस्लामिक सोसाइटीज, and what are the common concerns area which we have noticed in the society where people, specifically women, needs to be aware about before entering into a long term arrangement or engagement or marriage. So this is जी precisely the intent of the room जी। today. और आंदोलन जी मैंने आपको ना एक ट्वीट एक आपको मैसेज किया है तो उसमें भी ना यही दिखाया गया है कि एक मुस्लिम लड़की है तो वो अपने उसका बेटा बीमार हो जाता है थोड़ी मतलब और वो ना अपने पति को बोलती है कि मेरा मतलब आपका मतलब ये बेटा बीमार हो गया है तो इसको देखने आ चाहिए। तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं अभी बिजी हूँ। तो वो उसकी जो बीवी है वो बस इतना उसको बोल देती है कि आपसे ज़्यादा तो जानवर अच्छे हैं जो अपने बच्चों का ख्याल तो रखते हैं। इस बात पे उसका पति मैसेज करता है तलाक 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 और वो मतलब तलाक दे देता है। और फिर उसकी जो मतलब जो लड़की जिसके साथ ये होता है उसकी खुद की माँ मौलवी के पास जाती है और बोलती है कि इसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हो जा ताकि यू कैन गेट बैक टू योर मतलब अपने पति के पास। तो आपको मैंने वो लिंक दिया है तो आप देखिएगा जब भी आपको टाइम मिलेगा। जी, तो जी। ये चीज़ें भी हम लोग उस अवेयर टॉपिक पे भी आएंगे कश्मीरी जी, पर जी मैं इसको एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले जाना चाहता था रूम को, तो इसलिए जी पहले हम लोग स्टेप वन, इनिशियल एंगेजमेंट जो है, यानी इनिशियल मिलना जुलना, जी उसमें आपने पहला कहा पहले खतरे का साइन है अगर किसी ने अपनी आइडेंटिटी छुपा के या गलत बता के आपसे जी इन एंगेजमेंट इनिशिएट करी है, तो दैट इज द फर्स्ट रेड फ्लैग, right? जी That is not a genuine love and affair case, that is entrapment case, right? Or high probability of entrapment case. जी जी। अ, रॉबिन भाई, नीरज जी, आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे अगर कोई और रेड मैं फ्लैग है एंगेजमेंट मैं स्टेज में? हाँ। मैं यही कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि आई थिंक ये एक्सप्लेन भी करते होंगे लड़के उन लड़कियों को कि भाई इस कारण की वजह से मैंने तुमको ये गलत नाम बताया था, राइट? दैट इज द टाइम टू मूव आउट, क्योंकि जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो वो रिश्ता झूठा है। तो मुझे लगता है आइडेंटिटी इज समथिंग विच यू हैव टू एस्टेब्लिश बिफोर गेटिंग इन टू यू नो डीप लव एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। इट्स फाइन टू पुल आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट यहाँ पे दूसरा स्टेप शुरू होता है आंदोलन जी की थ्रेटनिंग। समटाइम्स दे टेक क्या बोलते हैं वीडियोस पिक्चर्स, और अगर वो उससे भी काम ना चले तो फिर निकिता तोमर जैसा केस, राइट? तो या तो इसमें नीरज जी, the second pattern which I'm saying, first pattern is identified a red flag where somebody, कोई आपसे झूठ बोल रहा है अपनी आइडेंटिटी को लेके या अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। दूसरा कॉमन कंसर्न एरिया आता है कि वो आपसे विवाह से पहले ही इस तरीके के रिलेशनशिप बनाना चाहता है कि अगर वो उस रिलेशनशिप्स को एक्सप्लॉइट करके आपको पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज में ला सके। वुड दैट बी अ करेक्ट असेसमेंट टू मेक?
सर मैं फर्स्ट वाले में थोड़ा सा और जोड़ूं क्या इसमें? जोड़िए जोड़िए। आंदोलन सर, हाँ, बोलिए। मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसमें क्या होता है कि देखिए, मैंने अभी इससे थोड़ा पहले भी कहा था कि क्या होता है जब हम लोग आपस में मिले रहते हैं तो बहुत चीज़ें होती है जब दूसरे सामने वाला, हो सकता है कि मैं हिंदू, वो सामने वाला मुसलमान, मेरे से कुछ अच्छा करा जिससे मैं अट्रैक्ट हो गया हूँ, तो वो एक चीज़ क्लियर होती है कि हाँ ये ठीक है। तो उसमें अगर एक लड़की एक लड़के के प्रभाव में आती है, लड़का एक लड़की के प्रभाव में आता है, तो वो एक, इसको हम बोलते हैं ठीक ठाक, जो मतलब एक जो नेचुरल एक लव कह सकते हैं इसको। लेकिन जो ऐसा वाली कंडीशंस है ये थोड़ी सी अलग टाइप की हो जाती है। इसमें क्या होती है, इसमें चाहत अलग होती है, मतलब इनकी क्या होती है, इच्छाएं अलग होती है कि मेरे साथ जो है कि किसी को अपने धर्म में लाना, वो एक अलग कंडीशंस हो जाती है। लेकिन जो फर्स्ट वाली कंडीशन मैं बता रहा हूँ उसको हम लोग कह सकते हैं, वो कहने का मतलब ये है कि वो वाला जो परिवार होता है उसमें एक आदमी अपनी बीवी को बहुत समझता भी है और औरत भी अपने आदमी को समझती है उस चीज़ों को, क्योंकि वहाँ पर उसको पहले से मालूम होता है कि हाँ मेरे साथ, मैं जो जैसे मैं मोहब्बत कर रही हूँ, सामने वाला मुस्लिम है या हिंदू है, तो वो चीज़ जब पहले ही क्लियर हो जाती है तो हो सकता है काफ़ी कुछ चांसेस रहता है कि वो उनकी लाइफ अच्छे से चले। मेरा कहने का मतलब है वहाँ हिंदू मुस्लिम वाला उनके दिमाग में नहीं रहता है। ये मेरा कहना है। थैंक यू। जी, तो हम लोगों ने दो रेड फ्लैग्स यहाँ पे देखे। पहला तो आइडेंटिटी छुपाना या गलत बताना। दूसरा क्या कहते हैं, बिना मैरिज करे हुए क्या कहते हैं सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना और उसको रिकॉर्ड करके एक्सप्लॉइट करना। दीज आर टू रेड फ्लैग्स। और ये दो रेड फ्लैग अगर दिखते हैं तो देन यू आर एबल टू जीरो ऑन वेदर दैट इज अ genuine relationship or whether there's a targeted relationship for purpose other than genuine love and affair. इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेटा पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। यूपी में कुछ समय पहले, दो साल पहले, एंटी कन्वर्जन लॉ में अमेंडमेंट करके उसका वर्ड लव जिहाद नहीं यूज करा गया है, पर इसी तरीके का प्रोविजन आया है जिससे कि इस तरीके की सिचुएशन से बच्चियों को बचाया जा सके और वो एक्सप्लॉइट होने से बच सके। इसका बेसिस था क्या कहते हैं, कानपुर का एक क्रिमिनल केस, जहां पे एक सोसाइटी है जिसको बोलते हैं जूही कॉलोनी। तो जूही कॉलोनी में एक लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी है जहाँ पे काफी हिंदूज रहते हैं। उसी के बगल में देयर इज लॉट ऑफ सेटलमेंट ऑफ मुस्लिम फैमिलीज एंड इट हैज मदरसा, etc etc all of those things. So in 2019 it was discovered that in this settlement of Hindus, which was around 200-300 families, around 20 cases of girls were found which were having affair with Muslim boys. So you have to understand the volume of this issue. एक सोसाइटी जहां पे 200-300 परिवार ही रह रहे हैं हिंदुओं के, उसके बगल में मुस्लिम्स की सोसाइटी है। उस पूरी सोसाइटी में 20 लड़कियों का अफेयर स्पेसिफिकली मुस्लिम लड़कों के साथ होता है। और उस पे फिर वो समाज के लोग ह्यू एंड क्राई करते हैं, तो एक एसआईटी का सेटअप हुआ जाता है, स्पेशल टीम का, इसको जांचने के लिए क्या ये जेन्युइन 18-19-20 केसेस हैं या इसमें कुछ मोडस ऑपरेंडी है विच इज नॉट अबव द वाटर। तो मैं इसमें आपको 18 केसेस का थोड़ा सा एनालिसिस बताऊंगा। इन 18 केसेस में केवल 3 केस ऐसे थे जिसमें कि लड़के ने अपनी आइडेंटिटी या तो छुपाई नहीं थी या झूठ नहीं बताई थी। In 70%, I think there were 18 cases in total. 15 out of those 18 cases, the identity of the boy while he was engaging with the girl was a false identity. झूठ बोला गया था उस आइडेंटिटी। इसके बाद दूसरे डेटा पॉइंट पे आते हैं। 11 लड़कियों ने ये आरोप लगाए कि उनके साथ कोर्शन हुआ है। कोर्शन हुआ क्या मतलब कि उनके साथ संबंध बनाए गए हैं, उसके बेसिस पे उनको ब्लैकमेल करके रिलेशनशिप में होल्ड करा जा रहा है। 11 आउट ऑफ 18 गर्ल्स। इसमें 2-3 बड़े अलार्मिंग फैक्टर्स और थे। ये अफेयर्स यू वुड अंडरस्टैंड 1 साल 2 साल 3 साल के समय से चल रहे होंगे। 10 out of those 18 girls were below 18 years of age, यानी मेजर नहीं थी।
I think 5 girls were below 14 years of age. And there were cases of girls which were less than 12 year of age. And in all these cases, boys age ranged between 21 to 39. So up, this the reason I'm telling you this data, because a lot of people brush up the cases of love jihad under the carpet. यहाँ पे स्टैटिस्टिकली एक सैंपल साइज अगर हम देखते हैं 18-19 लड़कियों का, केवल 3 जेन्युइन केस, सो कॉल्ड जेन्युइन केस नजर आते हैं. 75% of the cases are based on coercion, and more than half of the girls are minor, even between 12 years to 14 years. So, Robin ji, Diksha ji, Neeraj ji, ऊपर आके थोड़ा सा डिस्कशन में कंट्रीब्यूट भी करिए. द आइडिया ऑफ डिस्कशन टुडे इज to create a checklist for women who want to marry into Islam, or who are already in a relationship with somebody in Islamic society. सर इसमें थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ आंदोलन आपके. जी हाँ जी मैडम बोलो. अच्छा, और रूम चूंकि जी रिकॉर्ड हो रहा मैं है, तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि लेट्स कीप द डिस्कशन वेरी सिविल and data and fact based, so that we want to record these sessions so that people can refer these kind of discussions subsequently as well. Yeah, Diksha ji, over to you. yeah, I wanted to reflect upon a fact that even the clothing that the women wear, especially Islamic women, it's mostly covered from head to toe. So, when a teenager reaches a certain age, and there is, of course, attraction towards the opposite gender. So, the only women left out for a person to see is a woman who's not of his own religion. Other than madrasa chaps who are taught to actually go and have this love jihad thing, the Islamic nexus is in itself is like that the person would go for a woman who's not a Muslim woman. Secondly, when we talk about the grooming actually in most of the cases starts, more than 50% cases starts when the girl is either 10 years of age or 12 years of age. And this grooming, it's a child's mind. Whatever imprints in the child's mind goes on with her till eternity actually. So as soon as they start this grooming from a very early age, and as soon as they reach a certain age, be it 16 years of age or 18 years of age, it becomes very difficult for other people to get women of such kind out of this act. And so either they run off and then their life is hell, or we have seen, like you gave an example of how they are trapped within by recording their intimate videos or anything else. So I think it's not just what the Mulanas teach them as in love jihad, but in itself the inbuilt of Islam is like that it's targeting more of other religious women rather than its own. Ji. So, Manan, you wanted to say something. My only request, Manan, is when you are making a point, rather than making a hypersonic point, we normally do not prefer abuse in our rooms. You can make your points calmly, quietly, even if it is in opposition to others' views. Just make it respectable discussion so that the engagement process is on. Right. So over to you, Manan, if you want to make a couple of points. Andolan, my only point is that there is a theory in psychology which says that if you obsess 24 hours, if you are obsessed with something, you become that person. So if so there are some people on Clubhouse, I won't take their names, but they have some obsession about Islam. 24 hours they will talk about Hindu, Muslim. After when they get up, they will say Hindu, Muslim. When they go to toilet also, they will say Hindu, Muslim. When they go to sleep on their bed also, before they will say Hindu, Muslim.
So if you do so much Hindu Muslim, you will. I am afraid you will also get converted to Islam someday. That is my only fear. So come back to Okay, Hinduism. okay. Rahman Rahim. Uh, Vishaka ji, welcome. So, Manan ji, fair, this may be your viewpoint. But having said so, you chose to came up in a room which has a particular title. Would you Why like don't to you speak on the discuss about title or would Hindu you? religion? I would be very glad I to will join discuss. it. तो आप कोई रूम लगाना मैं आ No, जाऊंगा I आपसे am a डिस्कस Hindu, करने so I want to हाँ discuss about Hinduism. Like, why the हाँ obsession with Islam? But सो मनन जी आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो तीन डायमेंशन डिस्कस हो रही हैं हम लोग वुमेन्स चेकलिस्ट बिफोर मैरिज इन इस्लाम कर रहे हैं तो इसमें इस्लामिक वुमेन के भी no, एरियाज but ऑफ are you an कंसर्न हैं हिंदू Islamic वुमेन के भी scholar? एरियाज Like, ऑफ कंसर्न are you the नो आई एम authority to नॉट speak? नो आई एम नॉट Are you an Islamic नो scholar? आई एम नॉट आई एम no, I'm not speaking on Islam, right? If you heard from the last 15 But minutes, we why were don't you talking open about a one room aspect. about Hinduism? अच्छा ठीक है कल हम 5 घंटे का रूम हमने लगाया था हिंदुइज्म पे आप वहां पे आ नहीं पाए Why थे are you तो lying? वो दैट Like, इज योर प्रॉब्लम why are you lying? अच्छा ठीक है Tell me a ओके verse on Bhagavad. Quote a verse on Bhagavad Gita. see this is the problem right with the engaging right I invited him over for a decent discussion and he refuses to speak on the topic. He refuses to even criticize any of the points. He has its own viewpoint and he wants to impose on others. Having said so, let us go to Vishakha ji. There are a lot of new people who have joined in the room. So we are resetting the room. In detailed discussion, we held a lot of women with respect to concerns with women empowerment in Islamic society. Today, we are summing up all those discussions and also trying to prepare a checklist that if a woman chooses to engage in a relationship with somebody who's coming from an Islamic background, what are the key checklist? तो अभी सबसे पहला हम लोग पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे विशाखा जी विद रिस्पेक्ट टू लव जिहाद लव जिहाद सबसे पहले तो ये केस था वेदर लव जिहाद इज अ जेन्युइन कंसर्न टू बी डिस्कस्ड और टू बी इग्नोर्ड and most of the people at least on the forum did agree to the viewpoint that love jihad is a genuine concern and this should form part of the checklist of the lady who either has an engagement with somebody in Islam or intending to marry into somebody with Islam to first rule out whether her relationship is genuine or her relationship is part of love jihad. तो हम लोग उसी पे बात कर रहे थे विशाखा जी आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगी स्पेसिफिक टू अर्ली पार्ट ऑफ एंगेजमेंट विच इज वेदर और नॉट लव जिहाद So love jihad is real for sure. In fact, the Kerala High Court had given a judgment in 2009, December 2009, saying that forced conversion for sake of marriage is or coercion by coercion methods is not acceptable, and the state government should form rules against love jihad. But later on, those 30 cases that went to the Supreme Court, they were rejected by the Supreme Court, looking at the individuality of the cases. But you see, all the mainstream media compared it and said that Supreme Court has denied that love jihad exists. That's not what the Supreme Court said. Supreme Court said in those particular cases, specifically in the case of Sadia, if I'm not wrong. यार मैं नाम गलत ले सकती हूँ, just write down the हादिया name. Hadia. Shit, sorry, my bad. In case of Hadia, that is not a case of love jihad. It is a genuine conversion thing. And if women are wanting to convert and marry Muslim men, it is, it is allowed. Apart from what do you expect if you get married in an Islamic society? This is rare. I will start from the most rarest one. But one of the most rarest thing is that your daughters, they will be cut, and cut in the sense female genital mutilation. And I'll give the reference for this. It's on the chat. मैंने डाल दिया. It is from Sunnah Abu Dawud, and it is talking about how Prophet basically was traveling in Medina, and a woman would perform female genital mutilation. And Prophet said कि ज़्यादा severely मत काटना, but ऐसे काटना कि मतलब husband को मजा आए when he is having sexual intercourse.
and मैंने वो लिंक डाल दिया है चैट पे. It is Sunan Abu Dawud 4773. Apart from that, if you want to marry a Muslim guy, you have to convert, because in Quran chapter 2 verse 221, it's clearly अच्छा written that विशाखा if जी, you're ये एक्चुअली ये मैरिज पे आ गए हम लोग. अभी हम लोग थे इनिशियल स्टेज पे. हम लोगों ने 2 कंसर्न एरियाज आइडेंटिफाई करे थे चेकलिस्ट में, जिससे कि ये पता चलेगा कि वेदर दिस रिलेशनशिप इज लव जिहाद और अ जेन्युइन रिलेशनशिप. दीज टू वर कि आपसे आइडेंटिटी छुपाई गई थी या गलत बताई गई थी. दैट इज चेकलिस्ट नंबर 1. अगर आइडेंटिटी छुपाई गई थी या गलत बताई गई थी क्या कहते हैं रिलेशनशिप को इनिशिएट करने के लिए, तो ऑल प्रोबेबिलिटीज इट्स अ केस ऑफ लव जिहाद रादर देन अ जेन्युइन अफेयर. एंड पॉइंट नंबर 2 कि अगर मैरिज से पहले आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप में फोर्स करा जाता है और फिर उसको मिसयूज करा जाता है एज अ कोर्सिव टेक्निक टू होल्ड यू इन दैट रिलेशनशिप, that's another indication of love jihad. Is there any other checklist item a woman need to consider before deciding whether it is a genuine affair or a love jihad? We'll come to marriage just after this, after concluding this first point. रिलेशनशिप है तो बंदे को बोलो ना विदाउट कन्वर्जन शादी करे, या फिर जस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट इन ऑल दीज लव नहीं जिहाद विशाखा जी, केसेस. इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हम लोग कि लव जिहाद है कि नहीं. जैसे लेट्स से विशाखा हैज अ बॉयफ्रेंड, राइट, हु इज अ मुस्लिम, राइट, एंड विशाखा वांट्स टू नो whether this it is a genuine love affair or is it a case of love jihad which I am trapped into. तो वो डिटरमाइन करने के लिए क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? आंदो जी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताती हूँ. मेरे को तो in the beginning it was all like, oh, aman ki asha, we respect all religions, this that and all. उसके बाद धीरे धीरे जो वो माइंड आपका चेंज कराते हैं ना कि ड्रेस डिफरेंटली, पहले तो वही आया था, ड्रेस डिफरेंटली, डोंट वेयर रिवीलिंग क्लोथ्स, you know I think you're understanding what I'm saying. Then it is wahi ki made, ha, my mind was so fucked up after a point of time. It was literally like, don't celebrate any festivals, like Hindu festivals. And ओके. wahi ki they target people who are genuinely lonely in their life, like maybe they have bad relation with their parents at some point, or career wise or academics wise, thoda shayad issue रहता है, especially the people who don't have much people to talk to. That's the main targets of these people. That's a very interesting third checklist. तो It's मतलब like the आपसे रिलेशन, हाँ हाँ, तो थर्ड चेकलिस्ट ये हो गई कि आपसे रिलेशनशिप तो उन्होंने इसलिए करा क्योंकि आप थी, लेकिन फिर अगर आपको एक्टिवली बदलने की कोशिश करी जा रही है तो दैट इज अगेन a case not of a genuine love but maybe a case of love jihad. That's a third pointer and a very valid one. Okay, so मेरे ख्याल से ये we can take note down these 3 points. आगे genuine, I mean, this is genuinely in even in regular relationships, but यहाँ पे थोड़ा अजीब ही है. यहाँ पे it's like, don't hang out with guys without me. तो ये तो genuine relationship में भी आता है. I don't know how much you can call it love jihad, but ये होता था. And वही subtle way में ना वो mind, more, coercing the woman more towards Islam. कि this is how, what Islam says. I'm like, भैया मैंने पूछा नहीं, बोल क्यों रहे हो? It's like a regular relationship. पूछा नहीं, बोल क्यों रहे हो? In Islam, women have these rights, this, that and all. बकवास. okay, so valid point made, Vishaka ji. Couple of new speakers have come in, Bhagat ji, Texas ji, OG Rajat ji. Let me check with them. ये कैसे आइडेंटिफाई करा जाएगा कि जेन्युइन रिलेशनशिप है या लव जिहाद का है? भगत जी, टेक्सास जी, ओजी राजीव जी, अगर आप लोग कोई पॉइंटर्स इसमें ऐड करना चाहते हो तो देन वी विल मूव ऑन टू द प्रोसेस ऑफ मैरिज. हाँ हाँ जी आंदोलन जी, मेरा तो एक सिंपल सा इसके ऊपर पॉइंट है. थोड़ा सा मैं टॉपिक से डाइवर्ट कर रहा हूँ, पर आई विल रिलेटेड लेटर. आपको शायद पता होगा आंदोलन जी कि सारे सांप जहरीले नहीं होते, बल्कि एक बहुत कम परसेंटेज सांप की जहरीली होती है. कोई आइडिया होगा इस बात का? जी. है ना जी. तो पर फिर भी हम सारे सांपों से दूर रहते हैं.
हाँ जी, बस मेरा इतना ही पॉइंट था बेसिकली, आप समझ गए होंगे। जी। अच्छा, I Bhagat just ji, want over to. to you. And OG after that, after Bhakatji, OGG. But just to let you guys know, this room is being recorded, and we want a very academic and scholarly discussion on the key concern areas, so that this room can be referred to in future also by people who want to go through this checklist. So Bhakatji, over to you. अच्छा, भगत जी नहीं बोल रहे, जिनिया जी कुछ बोलना चाहती हैं। जिनिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे ख्याल से, आप एक बार एग्जिट करके एंटर करिए। तो हाँ, भगत जी आप बोल सकते प्लीज। जी देखिए, नहीं तो मैं सिर्फ इस बात पे सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि भाई कैसे बचा जा सके या फिर मतलब क्या हो रहा है। बाकी ये तो सब लड़कियों को ही देखना है कि भाई इन्हें इन्हें क्या करना है। हाँ, मतलब क्वेश्चन अगर लोग यही है कि भगत जी कि क्या क्या देखना चाहिए, क्या कंसिडरेशन दिमाग में रहने चाहिए इस तरीके के रिलेशनशिप्स पे, और अगर रेड फ्लैग्स है तो क्या होने चाहिए। जी, बात तो ये है मतलब जैसे कि आपने कहा क्या देखना चाहिए, बात कुछ देखने लायक है ही नहीं, तो मैं तो इस पे कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे को अंदाजा नहीं कुछ इस बारे में क्या देखना चाहिए। ठीक है, And हम लोग Andhra, रजत जी के in such relationships now the lady has to be like very assertive, wo babu shona, and that submissive type women who don't have any opinion. It's ऐसा नहीं कि दबाया गया है, her personality ही ऐसी है कि उसका कोई opinion ही नहीं रहता किसी मामले में. For them, they are also the main targets of these groomers. और दूसरा ये रजत लोग जी। जो है हाँ भगत जी ये लोग एक मतलब सेकंड। थोड़ा शेर व शायरी। हाँ भगत जी एक सेकंड, रजत जी आप कुछ कहना चाहते थे, आप बोलिए। Thank you, Andolan ji. First of all, if there is matlab, if there is love in the face of it, we will say that it's okay that you can date or marry whoever you want to. But if there is a nexus who is working in a particular manner, and there have been registered cases and there have been documentations regarding, coercing the woman from a particular religion to get married to people from other religion and use that as a weaponization tool to, you know, to use that as a tool to further their own ideological thing, then that needs to be countered. And how that needs to be countered is, number one, I think people need to be more aware. You should talk about this in your homes, to the girls, or to the men as boys as well, like this is happening, this is the reality. And I'm not saying ki everyone is like that, but if there is an existing, पूरा का पूरा वो चल रहा है, तो उसको हमें आई गेस अच्छे से काउंटर करना चाहिए. काउंटर इन द सेंस दैट जस्ट एजुकेट पीपल and just make them more aware of the consequences that those people face, who get into such things. एंड हम वुमेन के ऊपर फोकस करते हैं, बट इवन मेन, हमें पता है कि हैदराबाद में रिसेंटली जब केस हुआ था, एक को मार दिया था जस्ट बिकॉज ही वाज इन अ रिलेशनशिप विद द मुस्लिम गर्ल, द हिंदू गाय, एंड उसको खुले रोड पे मार दिया गया था. तो वाई सच हेट्रेड? और यहाँ पे मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि मतलब मुस्लिम लड़का किसी लड़की से बात, वो हिंदू लड़की के साथ हो तो उसके घर वाले मुस्लिम लड़के को मार रहे हो, इन द सेंस दैट कि मुस्लिम वाले साइड की. So it stems from a deep hatred and it is in a particular section. मैं इतना भी उनको चलो लीवे दे देता हूँ, बट टू वाइट वॉश इट कि ये ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आई थिंक दैट वुड बी वेरी नाइव फॉर अस टू से. एंड I guess people should be more educated regarding this, and such cases should be, उनको सामने लाके उनके ऊपर एक स्कॉलरली डिस्कशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, एंड जब इमोशनल हो जाते हैं तो वो इमोशनल आउटबर्स्ट जब खत्म हो जाता है तब इंसान फिर से चिल कर जाता है. बट इफ यू हैव दैट स्कॉलरली डिस्कशंस विद द पीपल, तो उनको पता चलता है ओके दिस सिचुएशन एग्जिस्ट एंड हाउ टू काउंटर इट, एंड you are better prepared for it in the future. मेरे को ये लगता है. I think that is all from my side for now. Thank you. Let me take inputs from Ankurji and Jimurthy sir as well. We are first currently only discussing the opening statement of the relationship, which is the initial engagement or this thing. We have identified 3 points which are red flags to the checklist. पहला ये कि आइडेंटिटी अगर छुपाई गई है या गलत बताई गई है. दूसरी, अगर आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप करके कोर्स करा जा रहा है. और तीसरा,
एक्टिवली आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी जा रही है कि ये आप यार क्या कहते हैं त्योहार ना मनाइए, कपड़े ढक के पहनिए, इस तरीके की चीजें हैं। तो दे वांट टू चेंज यू, यू नो, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर, दे वांट टू चेंज यू, एंड दैट्स आल्सो अ रेड फ्लैग। अंकुर जी, जी मूर्ति जी। मैं बोल लूं या फिर ग्रुप? जी जी अंकुर जी आप। सो मैं जब भी रिलेशनशिप का सोचता हूँ, मैं अपना पर्सनल बताऊंगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूंगा, उसी हिसाब से लड़कियां भी सोच सकती हैं। सो व्हेन आई विल थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप, आई विल थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. Okay. And in long term relationship, there are chances that there are 90% chances that I will marry the same individual. And before starting the relationship, one must have a checklist that I will practice my religion, you will practice your religion, and there should be no argument on that. This must be included in the checklist. So this was the point which I was that's why I came up and added this point. Andolanji. ओके 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 ओके, थैंक यू। जी मूर्ति जी आप। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यू नो, अनफॉर्चुनेटली यू कैन नॉट मैरी अ मुस्लिम until and unless you get converted. A Muslim can in a marriage is null and void if you are not a Muslim. So that is the primary thing. बाकी the जो women in Islam, if you look at it, उसमें जो उनका है एक सूरतुल बहार है वर्स 223, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि women is just a cultivation ground. There's nothing more to women. That is how they speak about women. That's how highly they speak about women. In case you want to go to Sayyid Ali Bukhari, so that also says the same thing. Chapter 1 verse 5, you can talk about that. Chapter 5 verse 33, that also says same thing about, you know, women do not have any respect or right in this religion. This is what we need to teach our children. So this is very unfortunate, you know, like somebody is saying that he wants to marry a Muslim. It is null and void. She will not get anything from the property. She won't get anything from anywhere if she marries a person of another religion. It's not possible. Thank you. थैंक यू जी मूर्ति जी। जिष्णु जी एंड देन गौरव जी। Namaste. Just one Namaste. small Can I point, talk? just 10 seconds. Yeah, Vishal. And I would strongly encourage, you know, more ladies from the listeners panel to come up, you know, to speak for and against. This is going to be a respectable discussion. In this club, we hold nuanced discussions which are detailed, threadbare, but at the same time respectful. And we respect counter opinions as well. So please come up and make logical points, and you know you would be heard and given chance to speak. Yeah, Vishal, हाँ. go ahead. So दो तीन सिर्फ दो पॉइंट्स. ओके, एडिंग टू व्हाट अंकुर जी said, वो जो आता है ना कि in the beginning only you say relationship कि you know I will practice my religion, you, होता ये है कि majority times इनिशियली में तो वो हाँ वही यू नो डील बनती है, बट आफ्टर सम टाइम वो आप चाहे ना चाहो वो प्रोसेलेटाइज होता ही होता है. एंड दूसरे केसेस में व्हाट इफ यू रीड अबाउट लॉट ऑफ लव जिहाद केसेस, वहाँ पे क्लियर है कि अगर लड़की को कन्वर्ट नहीं कराया तो बच्चा यू नो मुसलमान होता है. आप आमिर खान का स्टेटमेंट सुन लो, चाहे वो मेरी कितनी भी हिंदू बीवियां हो बट मेरा बच्चा मुसलमान ही होगा. So वो that is another thing. Yes, विशाखा मैं ये ऐड करने जा रहा था, तो थैंक्स फॉर स्पीक. तो मैं ये पॉइंट ऐड करने जा रहा था जस्ट अभी. So let us go to Jishnu, and then we go to Gaurav. Okay. Namaste ji. I am from Kerala. I don't know how many people you know from Kerala in this clubhouse. Here we can see that they are well planned is Popular Front and PFI. Planning a big plan. They are using these liberal DYFI, LDF like parties
communist parties, and they are using these type of liberal parties to take Hindu and Christian girls. According to the Christian their Sabha, we say that a Christian group, they are telling that almost 20,000 Christian girls were converted to Muslim by 10 years. But Hindus have no such Hindus are not united in Kerala. Hindus are fully scattered there, and where no unification of Hindus in Kerala. So it's a big threat. You can see different people like Nimisha Fatima, and many names from Kerala wo Afghan में है, jail में है, and many IS recruitments are coming from Kerala. So I request that the North Indian people should focus to the South India, mainly these Kerala, one of the main terror hub. That's the main point I want to mention. Thank you. We'll go to Gaurav ji to get his inputs. थैंक यू आंदोलन जी। आंदोलन जी, एक पॉइंट देना मतलब मैं हमेशा करता हूँ, आज भी करूँगा। द थिंग इज दैट एक कमेंट बेसिकली मोस्टली फ्रॉम द सोशलिस्ट, सोशल रिफॉर्मर्स, लॉयर्स से आता है कि अगर शादी कर रहे हो तो मतलब ऐसे इंटर रिलीजियस मैरिज कर रहे हो तो यूज द स्पेशल मैरिज एक्ट। मतलब गौरव जी, उस पे हम लोग उस पे तुरंत बात आ रहे, बट वी जस्ट वांटेड टू क्लोज प्री मैरिज द एंगेजमेंट और इनिशिएशन and the topic of love jihad. So once we conclude on that, we'll move to what are the consideration we need to undertake or checklist for marriage. So we'll probably cover the SMA part of it, sir, if that's okay. Yeah, sure. So पहले initially तो मैं बोलूँगा कि first whether you are dating a Muslim, a Hindu or any other religion, whatever, you should first know that who that individual is. उनका पहला identity क्या है, वो असल में क्या है। तो ये चेक एग्जैक्टली तभी आप कर पाएंगे इफ यू हैव अ पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड। ये दिस आर स्टैंडर्ड प्रूफ्स ऑफ एविडेंस, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ कहाँ रहते हैं, इन सब चीज़ों का मेंशन रहता है। सो दैट इज़ वाई इन चीज़ को वेरीफाई करना होता है। और मैं तो सबसे बेस्ट बोलूँगा, वेरीफाई करना सबसे ईजी होता है वोटर आई डी कार्ड। इफ़ यू हैव द वोटर आई डी कार्ड, उसमें वोटर आई डी नंबर रहता है। वोटर आई डी नंबर आप बस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैनल, मतलब जो वेबसाइट है उसमें जाइए, और उसमें जो वोटर आईडी का जो स्कैन कॉपी है, हाँ, उसका जो पहले आईडी डालिए और कौन से डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज नेम वगैरह डाल दीजिए। ऑटोमेटिकली अगर वो इंडिविजुअल सही है, इंफॉर्मेशन आ जाएगा। एंड दिस इज ऑल इन पब्लिक डैशबोर्ड। ये पूरा ओपनली कोई भी कर सकता है, लाइव भी, अभी क्लब हाउस में भी ऐसा करके हम दिखा सकते हैं, बट एनीवेज डोंट डू दैट। सो ये इतना इजी होता है। सो आई विल सजेस्ट एवरी, मैं तो सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों को भी बोलूंगा कि whom you are dating उसका आइडेंटिटी पहले जान लो, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप जो होता है ना, उसका बुनियाद ट्रस्ट, ऑनेस्टी इसके ऊपर होता है। अगर पहले ही उसमें झोल आ जाता है, पहले ही उसमें लाइज, फॉल्सूट के ऊपर रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है, तो इसका मतलब है देयर आर सर्टेन अल्टीरियर मोटिव्स, उसके पीछे कुछ और मकसद है। दैट इज व्हाई झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है ना। एंड समथिंग व्हिच इज पेडलिंग लाइज, व्हिच इज फॉरवर्डिंग फॉल्सूट, इट कैन नॉट हैव सम ग्रेटर कॉज। No, it cannot have something pure, something so pure like you are expecting. So it's best कि आप चीज़ों को पहले as it is जानो कि कौन है वो, उसका काम क्या करता है। इनफैक्ट अगर वो बोल रहा है कि कहीं वो काम कर रहा है, एंड इफ यू आर सीरियस इन द रिलेशनशिप, यू शुड विजिट द रिलेशनशिप। और ये बस मैं लव जिहाद या इस तरह का इंटर रिलीजियस नहीं, हर रिलेशनशिप में बोल रहा हूँ, आप जाकर चेक करो कि वो सही में वहाँ काम कर रहा है कि नहीं। उस जहाँ पे वो काम करे, वहाँ के जो HR टीम होता है, HR टीम जो बैठते हैं, उनसे पूछो, वो क्लियरली आपको बता देंगे कौन से पोस्ट है, ये है। एंड ये दिस थिंग्स अब आजकल बहुत इजी हो गया ये सब ट्रेस करना लिंक्डइन प्रोफाइल से। सो आई विल सजेस्ट कि ये चीज पहले करो। ये कोई भी रिलेशनशिप में जाने से पहले प्राइमा फेसी एकदम बेसिक होता है। अगर ये सही है, देन ओनली मूव फॉरवर्ड। थैंक यू। So Gaurav ji, let me also Robin, you wanted to say something? हाँ, मैं ये बोलना चाहता था सर, अभी आपने एक बीच में पॉइंट भी उठाया था, फिर अपन आगे बात करने लगे थे। तो मैं आप एक चीज आपने कहा था कि इनमें एक चीज और आप देखना क्या होता है कि ये छोटे बच्चों पर ज्यादा हाथ डालते हैं लोग।
मतलब इनकी उम्र आपने देखा ना, वो गुजरात में केस हुआ कि 39 या 40 के आसपास की उम्र के ये रहते हैं, और जो लड़कियां रहती हैं 18 साल या 20 साल। क्योंकि एक टाइम में बोलता हूँ, ये बच्चों का जो उम्र होती है, जो बच्चियों की उम्र होती है, एक तरह से दिमाग इस टाइम इनका बिल्कुल उस टाइप का रहता है। तो उस टाइम में इनको ये सब चीज़ करना, मतलब बहलाना फुसलाना, अपने आप को काफ़ी अच्छा दिखाना, और एक वो चीज़ काफ़ी अच्छा रहता है। जो चीज़ें हम लोग को अपने बच्चों को ये चीज़ बताना चाहिए, जैसे खैर बताएंगे भी तो क्या होने वाला, लेकिन ये लड़कियों को भी समझना चाहिए कि किसी का भी अब्दुल सही नहीं है, देखा जाए तो। ये बात मैं इतना कहना है। ठीक है, आपने एक चौथा पॉइंट डायमेंशन में लाया, एज गैप। अगर आपके रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली इफ दैट रिलेशनशिप इज समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम बैकग्राउंड एंड द एज गैप इज टू मच, then that red flag also needs to be checked in and validated. तो 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। इसके बाद हम चलते हैं, let's say you have ruled out love jihad after checking these 4 points, and these 4 points were आइडेंटिटी आपसे छुपाई नहीं गई थी सिंस बिगिनिंग, आपको कोर्स नहीं करा जा रहा है किसी भी तरह उस रिलेशन में कंटिन्यू रखने के लिए। तीसरा पॉइंट था, आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश नहीं करी जा रही है कि आप इस तरीके के कपड़े पहनिए, इनसे मिलिए, उनसे ना मिलिए, इस तरीके के त्योहार सेलिब्रेट करिए, उस तरीके के ना करिए। और चौथा पॉइंट ये, अगर एज गैप बहुत ज्यादा है तो these are the 4 checklists. Let's say a girl who is in relationship with somebody from Islamic society finds these 4 एक और जोड़ checklists. सकते हैं, एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं चाहे तो। एक्चुअली में इनकी इच्छा क्या होती है, ज्यादातर पढ़ी लड़के चाहिए हाथ डालते हैं, क्योंकि इनके भी लोग तो अपने अंदर पढ़ाते लिखाते नहीं, लेकिन जो इनके यहाँ के बच्चे जो पढ़ जाते हैं तो इनकी नज़र हमेशा उन पर रहती है। हमारी जो हिंदू लड़कियों में जो पढ़ी लिख के ऊपर जाती है, उन पर जो ज़्यादा नजर डालते हैं, तो आप पढ़ने लिखने पर नजर रख सकते हैं सर। थैंक यू सर। तो ये पढ़ने 4 लिखने पॉइंट और 5 आंदोलन जी, आप ये भी देख सकते हैं कि परिवारों में डिफरेंस, लाइक आपका फाइनेंशियल स्टेटस, सोसाइटल स्टेटस, उन चीज़ों पर भी मतलब आप रख सकते हो कि द गैप इन योर So gap in age, फाइनेंशियल स्टेटस। social status or education status should also be a matter of concern to be addressed in the checklist before moving राइट। forward. So let us assume, right, in a relationship, all these 4 or 5 points are checked up, and there's no concern for Andolan ji, love jihad. one more thing. As I said, ये लोग वैसी, like their main target is those people who have less people to talk around, like जो मतलब जो lonely हो अपनी life में, Secluded या lonely, जिनका शायद हाँ secluded, जिनकी like parents से नहीं बनती हो, because of course teenage days में parents के साथ बहुत झड़क होती है, because अच्छा, ये विशाखा जी, मैंने तेरा ये तो मैंने भी देखा है एक जगह पे, girl, एंड ये लोग आते हैं कि she was डोंट वरी, हम आपके साथ हैं, आप सब कुछ मेरे साथ बांट सकती हैं। फर्स्टली यू शुडंट ट्रस्ट एनीवन, डजंट हाँ, पर मैटर मैं द आपको एक रिलीजन। एग्जांपल बता रहा था विशाखा जी, दिस इज इन माय पर्सनल नॉलेज, एंड देयर वाज दिस गर्ल who was who had mental problem, right, and वो बीच बीच में उसको थोड़े से मेंटल इश्यूज होते थे, and it turned out that she zeroed on a boyfriend which was Muslim, and later it came to knowledge that the intent was not a genuine relationship but something else. So what you're saying is right. This girl was not easily accepted by her peers because she had bouts of depression and mental challenges. Otherwise, she was normal, but once in a while she would have that kind of problem. सो आंदोलन जी, ये आंदोलन डिवोर्सी जी, जो है ना, जैसे ये विशाखा ने पॉइंट रखा है, उसके साथ में मैंने देखा है मेरे बहुत क्लोज फ्रेंडशिप में ही कुछ लड़के हैं जिनका डिवोर्स हो चुका है। दे आर गेटिंग क्लोज टू मुस्लिम गाइज नाउ। सो या, दैट इज वेरी क्लियर दैट द इंटेंशन इज एंड डिफरेंट। Andolan, just want to add and one point. if you see one more thing, आंदोलन जी, if you like बहुत सारे cases हैं in which ये लोग, when they get to a point when they can get intimate with the woman even before marrying, I have heard cases, and that's why it is kind of weird, क्योंकि मैंने ऐसे किसी लड़के के साथ तो नहीं सुना ऐसे कि लड़के मतलब वो छुपा के कैमरा से वो कुछ भी रिकॉर्ड कर ले वो इंटीमेट मोमेंट, वो तो फिर भी समझ आता है। आई हैव हर्ड फ्रॉम लॉट ऑफ माय ओन फ्रेंड्स कि ये बोलते हैं कि हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, व्हेन यू डू दैट, हम लोग रिकॉर्ड करते, इट विल बी सो मच किक watching both of us do that in a video,
I've heard such cases also. Like that is weird. Like who says that? जब ऐसे कोई भी बोले then it is a clear indication वो तुम्हारी काटना चाहता है. In मुझे simple words. मुझे लगता है ना विशाखा जी, इन सभी जितने भी केसेस होते हैं ना, इसमें जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि एक तो नॉलेज नहीं है लोगों में प्रॉपर, कि भाई मतलब व्हाट इज द एक्चुअल मेंटालिटी. लेट्स फॉरगेट अबाउट कि मुस्लिम बॉय अलग अलग होते हैं. ऐसे लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी है, हर कोई एक जैसा नहीं है. वो ऐसा नहीं है. आप चेक करो कि अगर कोई इस्लाम को फॉलो करता है तो व्हाट इज द इस्लामिक आइडियोलॉजी. इस्लामिक आइडियोलॉजी में ही सीधा बोलते हैं कि भाई लड़के जो है वो दे आर अलाउड टू मैरी आउटसाइड ऑफ देयर रिलीजन, आउटसाइड ऑफ मुस्लिम, राइट. उनके साथ मैरिज कर सकते हैं, बट लड़कियां नहीं कर सकती है. ये साफ साफ दिखता है कि कैसे दोगलेपन है कन्वर्ट इनके करा दिमाग के में. शादी कर सकते हैं वो भी. हाँ, मतलब कन्वर्ट क्या ही होता है. अगर आप कन्वर्ट तो वो करते ही है, बट लड़कियों के साथ तो आप कर ही नहीं सकते. अगर कोई मुस्लिम लड़की है वो नॉन मुस्लिम के साथ तो कर ही नहीं सकती. उनका तो ऐसा सिस्टम बना हुआ है. ठीक है, तो ये तो एक हो गया. दूसरी बात मैंने जो देखी है ना, जो मुस्लिम लड़के होते हैं दे ट्राई वेरी हार्ड. मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि हम लोग भी कहीं जाते आते हैं तो कोई जैसे एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, भाई नहीं हो रही, छोड़ो हटो. ये लोग भाई इसके लगे ही पीछे रहते हैं. लोग रहते हैं. हाँ, ये लगे ही रहते हैं. मतलब दे डोंट गिव अप जल्दी. वो उनका पता नहीं क्या माइंड में सेट रहता है कि भाई नहीं, ये हिंदू लड़की है तो भाई मुझे तो क्लोज आना ही है इसका. ये माइंड भाई सेट रहता है इनका. हिंदू लड़की माले गनीमत होती है, तो इसका जो है इसको जब हलाल करते हैं तो इससे आगे इनकी वंश चलता है. ये एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन है, इनको आगे आगे कन्वर्ट करना. अगर मुसलमान लड़की हिंदू घर के में जाएगी तो इनके चार मुसलमान कम हो जाएंगे. दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट रिलीजन. सो और दैट्स मैं व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. एक रियल टाइम एक्सपीरियंस बताता हूँ. एक मेरी फ्रेंड थी, मुस्लिम लड़की थी, तो उसके साथ थोड़ी मेरी फ्रेंडशिप अच्छी हो गई थी, तो मैं उसके घर वर भी जाता था. बिलीव करोगी, उस लड़की के जो छोटी बहन है वो अपनी बड़ी बहन को क्या सलाह दे रही है. मतलब आई वाज ऑन द अदर रूम और मैंने सुना वो जब बोल रही थी तो आवाज आई मुझे. तो बोल रही है ना कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, थोड़ा इससे दूरी बना के रखो. छोटी बहन बड़ी वाली को बोल रही है कि ये मुसलमान नहीं है, इससे थोड़ा दूर रहो. मतलब समझ रहे हो आप. मतलब वहां पर घर में माँ बाप भी सलाह देते हैं बच्चों को कि भाई नॉन मुस्लिम से रिलेशनशिप, लड़कियों को बोलते हैं वो लोग. मुझे लगता है हमारे यहाँ फैमिलीज में ये चीजें भी होनी चाहिए. हम लोग सोचते हैं नहीं नहीं लिबरल है हम लोग, फ्रीडम होना चाहिए, अपना चॉइस होना चाहिए, बट घर में पेरेंट्स को भी आई थिंक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को समझाए कि ये जो चीजें हो रही है ये मतलब दे हैव अदर इंटेंशंस, और ये बचपन से डालना होगा, उनको बताना होगा, सो दैट कि बाद में प्रॉब्लम ना हो उनको. आई एग्री विथ यू हनी जी. ये क्या है कि ये एकदम सही आपने बोला है. अगर ये डिटरेंस, ये फायरवॉल नहीं रहेगा ऑन आवर डॉटर्स एंड सिस्टर्स, वो समझ नहीं पाएंगे कि इनका ग्रेव इश्यूज क्या है. Dude, अधिकतर आप Gaurav, not just women, even guys. Like कितने लोग मर गए. हाँ, ट्रू 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 ट्रू. वी हैव सीन दैट. हाँ, सो वो चीज उनको अलर्ट कर पहले. देखिए अगर आप उनको नॉलेज देंगे, ये जो इंफॉर्मेशन से जो न्यूज आ रहा है ये सब चीज उनको देंगे, तो आपको कुछ बोलने का नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड आई हैव सीन विद इन माय फैमिलीज. मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था, मैं बस उनको न्यूज अच्छा गौरव जी, देता था. जी अच्छा जी. मैं see, discussion is not to encourage or discourage any kind of relationship. The discussion is centered around having a checklist so that women who are entering into this relationship can go through this checklist and determine for themselves whether their relationship is genuine or there is an agenda behind But this relationship. why to get into that नहीं हनी जी, problem actually? which is okay. The room's title is such, so we decided to get into that discussion. So now we move from the initial part of the relationship to relationship getting stronger and maybe culminating into marriage, and the girl has done a checklist कि भाई ये लव जिहाद के जो 4-5 चेकलिस्ट हैं उस पे उनका रिलेशनशिप लव जिहाद वाली कैटेगरी में नहीं आता है, जेन्युइन लव वाली कैटेगरी में आता है. बंदे ने, सामने वाले ने झूठ बोल के आइडेंटिटी नहीं छुपाई थी, उसने किसी भी तरह से कोर्शन नहीं करा है रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखने के लिए. तीसरा ये है कि वो किसी भी तरह से ब्रेन वॉश नहीं कर रहा है उनको अपने रिलीजन या उनके कल्चर से. और चौथा, एज गैप, एजुकेशन गैप और सोशल स्टेटस गैप
कंसर्न्ड नहीं है, हो सकता है, पर एंड अगर वो आपके पेरेंट्स से आपको दूर नहीं धकेल रहा, लाइक खाई नहीं खोद रहा सॉरी लिटरली। बीच में फोन आ गया था। तो लेट अस नाउ मूव ऑन टू कि अब इस रिलेशनशिप में लेट्स से आगे होता है और शादी होनी है, तो फिर क्या क्या कंसिडरेशन रखने चाहिए, क्या क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? नीरज जी, विशाखा जी। हाँ, एक पॉइंट और ऐड करना था, आई जस्ट वांट टू ऐड कि दे वांट टू मोटिवेट यू, दे विल गिव यू एग्जांपल लाइक दिस AR Rahman has converted and now they are he is very successful, so you will get हाँ, to वो know ऑलरेडी something. कवर हो गया ना ब्रेन वॉशिंग में। Okay, sorry. तो let us start with नीरज जी, विशाखा जी, गौरव जी, और एनीबडी wants to take a go Yeah. कि क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए शादी करने से पहले और क्या प्रोसेस होना चाहिए शादी का, इसकी चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए, I think so that इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। हाँ, right. तो अब टाइम ये आ गया कि you dig deeper into it, and because you are thinking of the whole life, you are getting into a religion where 4 wives are allowed, and obviously अगर आपको 2-3 बच्चे हो जाते हैं then the guy can marry someone else. Now you have to think about law, you have to talk to your parents also, maybe you have to talk to your siblings, you need to talk to friends, and you need to know about those issues which happened in the past. And a larger discussion has to happen, because in India, when it comes to marriages, the marriage is not only between you and the person, the marriage is between your family and the other family. And a family which has given you 20-25 years of the life, you need to take them into consideration, because they will always think about your well-being. Most of the times, inter-religious marriages will attract um, a lot of criticism from the family, but at the same time you need to be very much cognizant of the fact that your family is the most closest to you, which will think about you, because this is your present family. And if you just leave behind your family and go into a new family, so you need to talk with the new family also, and need to go through all these things. This is what happens in your religion. Is this what, like, you need to have a dialogue, and for that dialogue you are not mature enough to talk because you're still 20-25. You need people on your side, maybe friends, maybe a family, and you need to have a discussion, which generally happens in India. Like, दो परिवारों के बीच में शादी होती है तो दोनों परिवार बैठ के बात करते हैं. अच्छा, परिवार साथ में नहीं आ रहा तो आपके सारे जितने भी आपका जो सर्कल है वो आपके साथ. अगर आप अकेले ही निकल पड़े हैं तो समझ लो कि रास्ता बहुत ही कठिन होगा, या उसमें आपकी जान भी जा सकती है. तो यही होता भी है. तो आपका एक सर्कल तो होना चाहिए, 10 बंदे तो आपके साथ होने चाहिए शादी में. अकेले शादी करने मत चाहिए. ये मेरा दूसरा होगा. और हाँ, नो मोर अबाउट इट, कि ये जो पॉलीगैमी है, नो अबाउट निकाह हलाला, कि ऐसा भी होता है. इफ यू आर ओके विद पॉलीगैमी एंड निकाह हलाला, प्लीज गो अहेड. No, we are not going to stop you, but that's the biggest checklist. मैं ये ऐड करूंगा कि know about it, where you are stepping your foot into. okay, so let me structure this marriage part into 2 areas. एक तो मैरिज, जैसा कि नीरज जी ने बताया, ये जो हम लोगों ने लव जिहाद वाली चेकलिस्ट पे टिक मार्क लगवाए थे, नीरज जी कह रहे हैं ये टिक मार्क आपको अगर अकेले ही आप लगा रहे हो और कोई इसको वैलिडेट नहीं कर रहा है आपके फैमिली और फ्रेंड सर्किल में, then there is an issue of concern that you might have tick marked these basis certain biases. So at least convince 3 or 4 well wishers कि आप genuine love relationship में है, लव जिहाद में नहीं है. अपने आप को कन्विंस करने के साथ साथ एक फीडबैक 2-3-4 लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से भी ले लीजिए, और उसके बाद अगर वो अप्रूव करते हैं, दैट इज अ बेटर थिंग टू मूव इनटू मैरिज. नाउ हैविंग सेड दैट, मैरिज में जैसा नीरज जी ने कहा, मैरिज आप 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट. स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आप मैरिज करती हैं तो बेसिकली आप ये जो हलाला वाला इशू है, पॉलीगैमी वाला इशू है, इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, राइट? So if I just want some legal opinion also, if you are in SMA, can you then stop your husband for marrying anybody else?
because to the by best of my knowledge you may be able to. So let us first आंदोलन जी, discuss आई this. डोंट थिंक कि ये पॉसिबल होगा, क्योंकि एक तो पहले तो जब आप लड़की कोई भी हिंदू या जैन या किसी और रिलीजन से है, वो शादी से पहले शी हैज टू बिकम मुस्लिम, ठीक है? तो वो तो मुस्लिम हो गई, मैं तो उस आप लोग को assumption पे हिंदू नहीं जा रहा हूँ हनी जी, मैं उस assumption पे नहीं जा रहा हूँ। इस पे सेकंड आएंगे। पहले तो हम इस assumption पे जा रहे हैं कि she retains her religious identity. Ideally that should be the case, right? वो सिर्फ निकाह में होता है, दैट आपको हाँ वो कन्वर्जन, हाँ स्पेशल मैरिज हाँ में नहीं होती। हाँ स्पेशल मैरिज में कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए जो रेकमेंडेड प्रैक्टिस है इस तरीके के रिलेशनशिप को कंज्यूमेट करने की, वो स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, जिससे कि आप अपने आप को कई लीगल सिचुएशन से जो आपको डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं, उससे बचा सकते हैं। तो स्पेशल मैरिज एक्ट इज डेफिनेटली अ बेटर मैकेनिज्म। बट मैं एक बार इसको टेस्ट करना चाह रहा था, इफ समबडी हैज एन ओपिनियन, कि अगर हम एसएमए करते हैं तो कैन आई स्टॉप माय हस्बैंड टू मैरी अ सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, एक्सेट्रा, एंड व्हाट हैपेंस टू द डाइवोर्स सिस्टम्स, सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, एक्सेट्रा। ये मेरे ख्याल से एसएमए का कोई अगर हमको व्यू पॉइंट दे सके। सो ओवर टू यू गौरव जी, जी मूर्ति जी, रॉबिन जी, अंकुर जी, नीरज जी, एनीबडी? सर क्वेश्चन क्या, एक बार थोड़ा सा करेंगे रिपीट, क्या एक लाइन में रिपीट कश्मीरी करेंगे सर क्या? एक मिनट, मैं ये बता रहा था कि इसमें एक चीज ऐड जरूरी करना है कि जो कश्मीरी मुस्लिम है अगर कोई, तो उसके साथ बहुत ही इजी पॉइंट है, उसको बोलो बुरहान वानी मुर्दाबाद बोल दे, वो नहीं बोलेगा। अच्छा उसको बोलो जी मूर्ति आर्मी जी, हिंदुस्तान की। जी मूर्ति जी, नहीं अच्छा नहीं, आपने I'm just telling you, no. अरे एक सेकंड जी मूर्ति जी सर, आपने ये भी In देखा case होगा there is a रिप्लेस ऑन है, तो थोड़ा सा हम लोग हाँ मतलब हाँ इसको बड़ा नहीं, फोकस I'm telling you डिस्कशन the रखते हैं, fact स्कॉलरली। हाँ because I am from Kashmir, so I can tell you about Kashmiri Muslims. So he will never say Indian army is good, no, but जी मूर्ति जी, army the is idea is not to understand Muslim, the idea is to help the girl prepare a checklist, okay. That's right? what I'm saying. So if it happens to be a Kashmiri Muslim boy, then this is an easy way of identifying his design, nefarious design. बाकी ये है कि जब टीनेजर हो जाती है लड़की 16-17, जैसे वो बोल रहे थे रॉबिन जी, कोई बोल रहा था, तो इनका जो है इसमें थोड़ा सा जब हार्मोन हाई लेवल्स पे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो हाई जो उनकी समझ पे वो अच्छा थोड़ी जी बात मूर्ति जी, क्वेश्चन जो था वो स्पेशल मैरिज एक्ट पे था, उस पे सर कुछ ऐड अच्छा करना अच्छा चाहेंगे? सॉरी, नहीं मेरे को नहीं। अच्छा, तो नीरज जी, विशाखा जी, on the marriages part of it, what should be the आंदो जी, आई एम checklist? अनअवेयर ऑफ इट, मैं ढूंढ के आपको बताती हूँ, गिव मी 5 मिनट। क्योंकि मेरी नॉलेज कहती है कि इफ यू आर इन एसएमए, आप क्या कहते हैं, हिंदू बनी रहेंगी या जैन बनी रहेंगी या क्रिश्चियन बनी रहेंगी, रिस्पेक्टिव ऑफ द फेथ दैट यू आर कमिंग फ्रॉम, और सामने वाला बंदा अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है। लेकिन चूंकि आपने स्पेशल मैरिज एक्ट कराया है, लेट्स से यू आर अ हिंदू, you can then restrict your husband for marrying a next wife. You would also gain maintenance rights as well as property rights in case of dissolution of marriage, as per the Dissolution of Marriage Act, not as per the Islamic jurisprudence of talaq. And third is, you would have equal right on kids and offsprings in case of dissolution of marriage. So the biggest checklist, and this is a major item of checklist, is never go beyond SMA when you want to solemnize this relationship. अगर कोई SMA करने को तैयार नहीं है, that is the biggest red flag in the relationship, that they are not marrying you as an individual, they have a differing objective. So गौरव जी, हनी जी, रॉबिन जी, आप लोग कुछ इसमें सर मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, मैं इसमें एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे ये हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम लोग इसको प्रैक्टिकल एक लाइफ में देखा जाए, एक लड़की अगर मुस्लिम परिवार में जाती है, तो क्या ये कैसे भी करके पॉसिबल है क्या कि ठीक है कि जैसा सरकार ने एक एक्ट बनाया है, हम लोग सोचते हैं हम लोग इंसान है, लेकिन वो एक जब लड़की एक कहें कि भेड़ियों के झुंड पे जा रही है, अंदर जा रही है, तो अपने आप को कैसे अपने आप को जीवित रखेगी जहाँ पर उनके परिवार में चारों। जस्ट वन सेकंड, रॉबिन जी,
No, रॉबिन no, जी it's मैंने not. फिर वही It's कहा not कि protected. रिप्लेस ऑन आंदोलन जी, it's not protected under the Special Marriage Act क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है, उसमें ये जो बंदा है इसने दूसरी बीवी जो एक हिंदू थी, इसकी पहली एक बीवी थी जो मुस्लिम थी, इसने दूसरी बीवी के साथ शादी की है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट ओके डिसअलाउ करता तो ओके ये शादी ही नहीं होती। दिस इज अ कंसर्न एग्जैक्टली एक्चुअली ये गुवाहाटी हाई अच्छा कोर्ट ने मैं ऑब्जर्व किया एक सेकंड गौरव भाई एक सेकंड मेरी रिक्वेस्ट है सबसे राइट ये भावनात्मक डिस्कशन नहीं है। मैं बार बार उसको रिपीट कर रहा हूँ रिप्लेस ऑन है डिस्कशन भावनात्मक नहीं डिस्कशन वुमेन एम्पावरमेंट के इश्यूज को एड्रेस करते हुए चेकलिस्ट आइडेंटिफाई करने का है बड़ा मेथोडिकल प्रोसेस राइट। तो इसमें जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उनको एक्सप्लोर करके एक चेकलिस्ट बनानी है जिससे कि आगे कोई इस रूम को रेफर करे तो उसको कुछ इनपुट मिल सके। हाँ तो भावनाएं तो हम लोग अपनी व्यक्त करते रहते हैं कई रूम्स में। हाँ विशाखा जी मैं हाँ तो आंदोलन जी दैट्स व्हाट हनी जी एक सेकंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग आंदोलन जी, जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि अगर किसी ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर किसी हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान आदमी से शादी की है, कैन शी स्टॉप हिम फ्रॉम हैविंग फॉर द सेकंड वाइफ और द थर्ड वाइफ? द आंसर इज नो, बिकॉज टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है जहाँ पे इस मुसलमान आदमी की पहले एक बीवी थी एंड इसमें कोई हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है, तो इट इज स्टिल ब्लैंक, बट इन 90% हम अज्यूम करें कि नहीं हो सकता बिकॉज इसकी पहले बीवी थी, इससे दूसरी हिंदू लड़की से शादी की अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट एंड ये इसकी दूसरी बीवी बनी एक हिंदू लड़की अंडर द स्पेशल पर मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट में दूसरी शादी तो अलाउड है ही नहीं विशाखा जी। मतलब वही तो आइडियली दिस वही तो वॉइड। यस कोर्ट ने उस पर क्लैरिफाई भी किया था। इट वाज गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है असम में उन्होंने किया था और वो कोर्ट ये कोट किया था। इट वाज कोटिंग सेक्शन 4 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। द कोर्ट सेड दैट वन ऑफ द कंडीशंस रिलेटिंग टू सोलेमनाइजेशन ऑफ स्पेशल मैरिजेस इज दैट नाइदर पार्टी हैज अ लिविंग स्पाउस। तो ये नहीं होगा। और सिर्फ वही कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के भी जो एक जजमेंट था इट वाज बिटवीन शहाबुद्दीन अहमद का जो केस था, तो उस केस को भी वो साइड किया था और बोला था कि ये मतलब पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्पेशल मैरिज एक्ट के जो नंबर ऑफ प्रोविजंस है उसको वायलेट करता है। सो दैट्स द पॉइंट। I have one point. So is it possible to, okay, maybe the marriage act might not support that, but if the girl wants to get the prenup before marriage, right? So in that, I think this clause also can be put up, right? That okay, prenup in the sense that okay after the marriage. प्रीनप का कोई कॉन्सेप्ट इंडिया में मेरे ख्याल से है नहीं। That I am not sure. So let me, अगर लिसनर्स में कोई लीगल प्रोफेशन से है और ऊपर आके इस विषय पे थोड़ा सा इंसाइट दे सकता है तो दैट वुड बी ग्रेट। मेरी अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि मैंने एक केस देखा हुआ है पर्सनल उस पे एक फ्रेंड का who had married a Hindu girl and he tried to give him triple talaq, but his talaq was struck down by the courts because the marriage was under the SMA and the court specifically ruled. Andolan ji, but that is because of talaq, na, not for second marriage. नहीं, I think even second marriage SMA में second marriage भी नहीं हो सकती। हाँ वो ठीक है, बट अगर तलाक तो तभी देंगे ना जब निकाह हुआ हो। जब निकाह ही नहीं हुआ, जब मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ये क्या बोलते हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दोनों के बीच, जब निकाह ही नहीं हुआ फिर तलाक अप्लाई नहीं होता। तो विच इज हम लोग उसी पॉइंट पे आ रहे थे कि SMA इज अ बेटर वे टू मूव फॉरवर्ड और प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू मूव फॉरवर्ड देन एनी अदर फॉर्म। हरवल जी ऊपर आए हैं। हरवल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस विषय पे? एक बात कहूंगा मैं यहाँ पे कि लेट्स अज्यूम द गर्ल इज यंग एंड ऑब्वियसली 21 साल उम्र ज्यादा नहीं होती है और परिवार वाले भावुक हो जाते हैं, जैसे आपने देखा कि हमारे अंदर भावनाएं बहुत भरी होती हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में परिवार को अपनी बेटी को इस प्रकार से नहीं जाने देना चाहिए, जाके एटलीस्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में उनकी शादी करवा दो रेदर देन जस्ट रनिंग अवे। जो भी नहीं रोक पा रहे हैं, स्पेशल ये जो मैरिज एक्ट है बहुत अच्छा वाला है बिकॉज इसमें प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर है, राइट्स ऑन द चिल्ड्रन है, बहुत कुछ है।
तो आप इसमें करवा दीजिए शादी, तो उसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा रहेगी। बाद में भी कभी कोई इशू आता है, इनफैक्ट एवरी मैरिज शुड बी रजिस्टर्ड। कई लोग शादी रजिस्टर नहीं करते हैं हमारे यहाँ पे, बट ये अगर ऐसा केस हो रहा है तो परिवार वालों की ये जिम्मेवारी बनती है कि भैया अब हम नहीं रोक पा रहे हैं, तो हम ये स्पेशल मैरिज एक्ट में करवा दें। मैंने ऐसी ही एक शादी देखी थी, तो सारे लोग उस परिवार पे हंस रहे थे कि अरे देखो मुसलमान लड़का पूरा सहरा बांध के इनके दरवाजे पे आया, या जैसे भी आया, आई डोंट नो क्या बांध के आया था, बट पूरी बारात लेकर इनके दरवाजे पे आया, तो सारा समाज उन पे हंसा। लेकिन उस परिवार ने बड़ी धूमधाम से वो शादी करवाई। आई होप कि उन्होंने ये वाला एक्ट में शादी करवाई हो या रजिस्ट्रेशन करवाई हो। तो कहने का मतलब है डोंट रन अवे व्हेन इट इज लाइक हो ही रहा अच्छा है। नहीं, इस और लड़की के इसमें पास इसमें सपोर्ट नीरज सिस्टम जी, है। हाँ इसमें नीरज जी एक चीज और भी है, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ भावनात्मक चीजें, इफ इट इज लीगली प्रोटेक्टेड कॉल ऑफ अ I गर्ल can I add one एंड thing ही here? इज, So, हाँ जस्ट so वन सेकेंड हनी जी, एक सेकेंड, राइट? तो अल्टीमेटली मतलब वो क्या कहते हैं, शादियां इस तरीके की होंगी एज अ सोसाइटी, हम लोगों को उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। हमको केवल एक चेकलिस्ट बना के ये चीज एक रैशनल माइंडेड तरीके से अपने बच्चों को इनेबल करना चाहिए कि ये सारी चेकलिस्ट से वो थ्रू हो सके। तो वन थिंग, हाँ हनी जी आप बोल लीजिए। under the section 44 of the Special Marriage Act, bigamy is considered a punishable offense under section 494 and 495 of the Indian Penal Code. So I think it is not allowed. It is यस, punishable. माय अंडरस्टैंडिंग वाज ऑल। अच्छा लेकिन अच्छा एक मिनट एक मिनट जस्ट वन सेकंड जी मूर्ति जी, हु सेड दैट पॉइंट राइट नाउ? It was I. हनी जी हाँ ओके ओके, थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग दैट, बट फिर मेरा ये जवाब दीजिए। सो अगर पहली बार शादी कर रहा है वो लड़का, तो अगर उसने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी की है एक हिंदू लड़की से, तो वो दूसरी बार निकाह या फिर दूसरी शादी नहीं कर सकता, राइट? दैट्स व्हाट नो यू आर सेइंग। नो नो नो, ठीक है विशाखा, यहाँ पे ग्रे एक इशू है, मैं ऑब्जेक्शन यहाँ पर ला रहा हूँ। देखिए वो जो गुवाहाटी हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसमें कोर्ट ये ऑब्जर्व कर रहा है, द पिटिशनर नॉट बीइंग अ मोहम्मदन, द मैरिज वुड नॉट बी अ मैरिज विदाउट स्ट्रिक्ट मीनिंग ऑफ द मोहम्मदन लॉ। In the present case in hand, it is seen that the petitioner was not married as per customary Mohammedan law, but she was married under the Special Marriage Act 1954, and the provisions of section 4A of the act renders the marriage as void. Moreover, the petitioner is still using her Hindu name, and there is nothing on record to show that the petitioner has accepted the religion of Islam as her faith, the court said. So यहाँ पे एक चीज इससे एविडेंट होता है कि if that girl whose name was something Kalita, the Dipandita Kalita, so if she had converted to Islam and married and did a nikah under the Mohammedan law or the Shariat Act, then there is I think court would have given a different kind of judgment अरे as भैया per the मैं बोल नहीं रही, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि मानो इफ आई मैरी अ गाय हु इज मैरिड फॉर द फर्स्ट टाइम, उसकी पहली शादी है, and that is under the Special Marriage Act. Okay, that's a Muslim guy. Now tomorrow he can't do a nikah with someone else or anything under any other Special Marriage Act. यस वो मान यस लिया, यस वो मान लिया, वो मान लिया, but honey, but एक second यार, let me complete. But glitch and sorry, honey, answer this. तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मैं ऊपर लगा देती हूँ. So it is talking about a Muslim man's second marriage with Hindu woman under Special Marriage Act. ओके अच्छा गौरव, ये आप इस केस के बारे में बात कर रहे थे? ओके सॉरी, माय बैड। हाँ सो Gaurav's point is right. Gaurav's point is right. जैसे one thing I will एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट सुन लो, फिर मैं जा रहा हूँ। देखो गौरव का पॉइंट राइट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि इफ मुस्लिम मैन आफ्टर डूइंग स्पेशल मैरिज एक्ट, जस्ट वन सेकंड, हाँ, तो आई एम सेइंग कि अगर वो हुआ भी है एंड बंदे की पहले से एक बीवी है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर नहीं करा सकता। ये हाँ, शादी वो नल एंड वॉइड है। हाँ ओके, आईडी थैंक्स फॉर क्लैरिफाइंग। हाँ ग्लिच, बट वो निकाह कर सकता है, बट वो निकाह कर सकता है। जस्ट वन सेकंड गौरव भाई, या ग्लिच, गो अहेड। सी व्हाट आई सेइंग वाज दैट कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट किया उसने किसी हिंदू या मुस्लिम वुमन से, तो उसके बाद इट डजंट प्रिवेंट हिम, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट का जजमेंट ने उसी सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है, उसमें डजंट प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग अ निकाह अंडर मोहम्मदन लॉ, है ना?
So I can see if I'm a Muslim man, I can marry a special marriage act with somebody, then do a nikah with a Muslim woman. ओके, सो नहीं ग्लिच इसमें, एक सेकंड विशाखा जी, एक सेकंड। ये जो आप केस बता रहे हैं इसका रेफरेंस दे दीजिए, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट में बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर आपकी शादी एसएमए में हुई है तो बाइगैमी इज क्रिमिनल और हाँ वो पॉलीगैमी इज नहीं क्रिमिनल। बोल रहे, वो नहीं जस्ट बोल वन रहे। सेकंड नहीं, विशाखा that जी, is जस्ट वन सेकंड, जस्ट वन सेकंड, राइट? क्योंकि इस तरीके के केसेस ग्लिच हमने देखे हैं और इस पे मैं नेक्स्ट आना चाहता था कि होता क्या है, लोग पहले एसएमए करते हैं, उसके बाद उसी लेडी से निकाह पढ़ते हैं, उसको कोर्ट ने वैलिड माना है कि हाँ आपने एसएमए कर दिया पर बाद में इस्लामिक तरीके से शादी कर ली, तो अब वो एसएमए ओवर रूल हो गया इस्लामिक मैरिज से, Exactly. and That's then the boy can go and marry second, third or fourth. that is also true, but but even if he But if doesn't SMA do is in force, if SMA is in force, then he cannot do 2, 3, 4. no according to Guwahati की जजमेंट है वो जो गौरव, इफ यू कैन पिन इट ऊपर, उसमें बड़ा क्लियर वो रेफर ऊपर किया है। हुआ है। हाँ हाँ, तो उसमें आप देखिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किया है उसमें लिखा है कि बिकॉज द सेकेंड वाइफ is not a Hindu, is not a Muslim, and the marriage has not been done under Mohammedan law. Therefore, she is not entitled to benefits of being a wife. You see, so it implies that if she was a Hindu, if she was a Muslim, and the No, you are second marriage was interpreting it wrong, Glitchy, which is precisely what I said. कि SMA से जो सेकंड मैरिज उसने करी हिंदू लड़की से इस पर्टिकुलर केस में, उस मैरिज को ही नल एंड वॉइड कर दिया गया कि वो मैरिज हो ही नहीं सकती है SMA के अंदर, क्योंकि उसकी ऑलरेडी एक पहली वाइफ है। no, क्योंकि she was not, it was not done under Mohammedan law. हाँ, तो अंडर मोहम्मदन Not लॉ ही कैन, not because first ग्लिच marriage was SMA, but because second marriage was not a Mohammedan law. सो No, ग्लिच you विच are इज, understanding हाँ the case हाँ, आप completely मैं wrong. फिर से The case मैं is फिर से क्लैरिफाई करता हूँ विशाखा, राइट? मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूँ, इस बंदे ने जो पहली शादी करी थी वो अंडर मोहम्मदन लॉ करी थी, राइट? सो ही वाज एंटाइटल्ड टू मैरी द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम अंडर द मोहम्मदन लॉ, राइट? हाउएवर ही वेंट अहेड एंड मैरिड अंडर SMA। SMA में ये अलाउड नहीं, SMA आपको अलाउड नहीं है अगर आपकी ऑलरेडी एक बीवी है तो SMA was held null and void and the court said अगर तुम्हें शादी करनी ही थी दूसरी तो तुम मोहम्मदन लॉ में करते, SMA तुम्हारे लिए ओपन नहीं है। Exactly, that's what I'm saying. हाँ, so So yeah, if a Muslim, SMA, हाँ, so you know from a checklist perspective, SMA से आपका एक हिस्ट्री चेक भी हो जाता है। अगर आप SMA कर रहे हो और उस बंदे ने पहले से कोई शादी कर रखी है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा और उस केस में द गाय वुड अवॉइड SMA. So if somebody is not doing SMA, one is he has malified intent. Second is it is high probability that either he is already married or intends to marry more than you. or can marry. Exactly. So the entire point is कि even if you're marrying a Muslim guy, do it under the Special Marriage Act. Only. And by the way, ऐसे of course, because अगर आपको अपनी 3 सौतने चाहिए तो great, उनसे 10 बच्चे चाहिए तो great, because until uniform civil, ये सब सिर्फ तब तक रहेगा जब तक uniform civil code नहीं आता. Once uniform civil code is there, the practice of polygamy will end, property rights will be given, and domestic violence also will be covered. So जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आता थोड़ा बच के चलिए। एंड हाँ, स्पेशल मैरिज एक्ट में करेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज अगर स्पेशल, हाँ, बट ऐसा भी ना हो कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली, बाद में शादी के बाद उसने बहला फुसला दिया, आपने निकाह पढ़ हाँ, लिया, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने वो हाँ, निकाह पढ़ लिया, मैं उस पे सेकेंडरी आ जिस रहा दिन हूँ। निकाह पढ़ लिया, हाँ, जस्ट एक पॉइंट, जिस दिन निकाह पढ़ लिया, दैट ओपन्स द गेट्स फॉर हिम हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, एंड ही कैन डिवोर्स यू बाय जस्ट सेइंग तलाक इन 1 month, देन थोड़े टाइम पीरियड बाद के बाद दूसरा तलाक, तीसरा तलाक, एंड आप आउट। राइट, So don't commit that mistake. या आंदोलन जी, एक रिक्वेस्ट है कि आप जो ये चेकलिस्ट बना रहे हैं प्लीज पेज पे या कहीं पे लिख के रखिए, बिकॉज वी वांट टू मेक ए थोड़ा एक पोस्ट कार्ड जैसा, एंड आई वांट टू स्प्रेड दिस मैसेज। हाँ, नहीं ये सर इसका इसीलिए मैंने रूम को रिकॉर्डेड रखा और मेरी बार बार रिक्वेस्ट सबसे इसीलिए यही है कि हम लोग एक सिविल डिस्कोर्स चाहते हैं, और इस पे जो आप कह रहे हैं उसको मैं समराइज करके ट्वीट भी कर दूंगा, इसी का जो मैंने ट्विटर करा था इस रूम का समरी। तो व्हाट इज कमिंग आउट क्वाइट क्लियरली, इन केस
आपने लव जिहाद को रूल आउट कर दिया है और आप शादी करने जा रहे हैं, SMA is the only option. If the guy is not agreeing to SMA, that's a big red flag. Big red flag. आंदोलन Let जी us मेरा थोड़ा अब सा नोट ऑफ आंदोलन डिसेंट जी है। एक चीज मैं पूछना चाहता था कि इसमें लिखा हुआ है कि दिस एक्ट अप्लाइज टू एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। yes. अब वो व्हाट्स अबाउट 54 दैट? में था अब ना हाँ जी, वो मूर्ति जी, वो पर अब वो 1954 अब में वो अब वो रूल आउट हो गया। अब मेरे ख्याल से SMA also applies to Jammu and Kashmir or not yet. Well, that's what is the question. नहीं, नाउ So आई we थिंक will just एवरी लॉ। circle back to this. हाँ अच्छा नहीं, और मैं बता देता हूँ इसके अच्छा बारे में, विशाखा 2 सेकंड। रणबीर पिनल कोड जम्मू में लगता था, अब IPC लगेगा। तो दैट क्लियरली सेज दैट जितने भी इंडिया में लॉ अब हैं वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर की जुरिस्डिक्शन में जाएगा। आर्टिकल 370 इज गॉन। सो लगेगा ये, अच्छा एग्जैक्टली मेरे को लगेगा। एक पॉइंट बोलना था। जितने भी लड़कों को मतलब वो लोग भी सजेशंस मांग रहे हैं, तो उनके लिए एक लिंक है। आपके लिए तो इतनी लीनियंस रहेगी भी नहीं, क्योंकि आपसे तो कुछ फायदा मिलेगा नहीं उनको, तो आपको तो डायरेक्ट मार दिया जाएगा। जितनों को भी शौक है मुस्लिम लड़कियों से शादी वादी करने की, हैदराबाद याद रखना। एंड वो लिंक जरा खोलना, उसमें हैदराबाद, दिल्ली, झारखंड, अरे एक सेकंड गुजरात। आंदोलन चाहिए, जस्ट एक सेकंड ना। वो लिंक खोलना, आप ये बोलेंगे hindu.com से है, why will it be reliable? वो आर्टिकल खोलना, एक केस का मेंशन है, और उस एक केस फॉर एग्जांपल रीसेंट हैदराबाद का अगर हुआ है तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डेक्कन हेरल्ड के 3 आर्टिकल्स के लिंक हैं। फिर दूसरा केस, फिर 3 आर्टिकल्स, फिर तीसरा केस, फिर 3 मेन स्ट्रीम आर्टिकल्स। तो पढ़ लो। अच्छा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है विशाखा जी। Let's say both the parties, since the checklist is not just confined to Hindu girls, okay, it is also to Christian girls, Jain girls, and even Muslim girls. If a Muslim girl marries a Muslim boy under SMA, I think he or she would also हो be सकता able है to क्या? avoid. हाँ, हो सकता है, right? SMA is not just for interreligious marriage. SMA is for all marriages. 2 Hindus can also marry under SMA, right? तो अगर इस तरीके का, and this is again my understanding, but I need validation thereof. If a Muslim girl chooses to marry a Muslim boy under an SMA, not under Nikahnama, is she protected from his husband marrying second, third, and fourth? The unequal proportion of succession rights and divorce, dissolution of marriage right, I think the same would get extended to her as well. सेम No, अगर no. स्पेशल Yes. मैरिज See, एक्ट में हुआ है। Vishaka, 1 second, please. See, you must have known the case of Chand Mohammad's Bhajan Lal's son. Okay, he was married, then he converted to Islam, became Chand Mohammed, and he married that additional PA of Chandigarh Court, right? And that marriage was valid. So, if you do a marriage once in a special marriage act or in Hindu act, and you become Muslim, it doesn't prevent you any kind of marriage, special marriage बट act वो otherwise. क्वेश्चन हो ही Listen नहीं to रहा me, ना। please let me finish here. So it doesn't prevent you from doing a nikah in Muhammadan, according to Muhammad law, the second time, third time, or the fourth time. It does. So Special Marriage Act Legit. is not a guarantee Is that second marriage will not happen. it does glitch, क्योंकि अभी हनी ने सेक्शन 44 पढ़ा था स्पेशल मैरिज एक्ट का। अगर शादी, और ये प्रोटेक्शन आपको आर्य समाजी मैरिज या हिंदू मैरिज में नहीं है। अगर आपका हस्बैंड इस्लाम कन्वर्ट कर लेता है तो फिर वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ शादी कर सकता है। लेकिन अगर आपकी शादी SMA में हुई है तो सिंस दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इवन आफ्टर कन्वर्शन your husband would be bound by the rules and framework of SMA. So that is why I said, even if it is a Islamic girl marrying a Islamic guy under SMA, she would be able to stop her husband for marrying for second, third, or fourth time, and she would enjoy succession rights granted to her under SMA. She would have dissolution of marriage rights granted to her under SMA. So SMA is possibly for all religious women, irrespective of even agnostic or atheist women, right, is probably the best course of marrying a Muslim guy.
Would that be a correct statement to make, or is there any counter views to that? Absolutely. So Atharvi and Harwal are there in the panel. Atharvi and Harwal, would you like to make some point? Harwal, you are not, your mic is open, but you're not audible. So, would you like to speak something? Yeah, that's right. I was waiting for you to finish. So first thing, I think earlier I wanted to make this point, but someone else spoke in between. So you asked that whether the contract marriages are allowed in India or legal in India. No, contract marriages are not allowed in any religion, even under Special Marriage Act, because by law, marriage is a sacrosanct event in life of a citizen of India. It is आप brought प्रीनप के रेफरेंस से बात कर रहे हैं हरवल जी? any sort of agreement. So agreement is more of a business part, but the marriages in India is not a business at all. So understand from perspective of Western versus India. So Western में क्या होता है कि you do a marriage, if you don't feel like you move out of marriage. India में ऐसा नहीं होता है. India में okay, so long story short, contract marriages are not legal in India for any religion. Okay. Yeah, that's first Okay. part. Second part, I just missed that when. So I think someone, I'm not sure who was saying that if I as a Hindu been married and I convert to a different religion, and if I marry a number of times there as per that religion, the law would allow that, or that is something. Was that right, or I may have misunderstood that? No. The law will not Okay. allow you to marry under Special Marriage Act. So if you're, Yeah, that's right. so Harwal, if your first Money- marriage was solemnized under the Special Marriage Act, irrespective of which religion you convert to, Yep. if your initial marriage was under the Special Marriage Act, without dissolving that marriage legally, you cannot marry anybody else. Yeah. So this equally applies on Hindu Marriage Act as well, 1955. Yes. So if I as a Hindu, yeah, correct. Right. So, so what we were coming to, especially in interreligious marriage, SMA is the only way forward. अगर सामने वाली पार्टी SMA के लिए एग्री नहीं कर रही है, तो it is deemed to be having a malified intent. Acha, Andolan ji, I have a question, and this is for Yeah. you, okay? So, अभी कुछ लोगों के लिए ना marriage for some reason they don't just like it, just going and signing documents. Like they don't feel that like a marriage. So tomorrow if it's a Hindu Muslim marriage, take an example, okay? तो हिंदूज में फेरे हो गए पहले एंड आजकल बहुत लोगों को चुल मची रहती है ना वो बॉलीवुड मूवीज देख देख के कि पहले शादी होगी फिर निकाह की सेरेमनी होगी लाइक दोनों वेज से शादी. So if it is already done under the Hindu जो भी मैरिज एक्ट वो फेरे वगैरह लेना it is still counted as marriage, right? रजिस्टर ना भी हो तो it is counted Yes. as marriage. Yes. So the moment हाँ तो पहले समझो वो कर लिया. So the moment the nikah is read, तो क्या वो हिंदू मैरिज एक्ट टूट गया? Yes. ओके. एंड व्हाट इफ इट्स द ऑपोजिट कि पहले निकाह हुआ उसके बाद अगर वो फेरे हुए तो क्या इस्लामिक मैरिज एक्ट टूट गया? Ideally, yes. That's how it works. Ideally, yes. Okay. If that's Because the case, I'll tell you, Vishakha ji, when you are doing marriage as per Hindu Marriage Act or you are doing nikah as per the Islamic Act, the basic provision which is deemed is that you both are Hindus or both have agreed to be Hindus. Similarly, if you are doing a nikah, either both of you are Muslim or you have agreed to be a Muslim. Had it been the case that one is Hindu, the other one other religion or any two religions, the only way to retain your individual identity is SMA only. In SMA, you will remain what you are, irrespective of what the other party is. and जो ये लोग leftist बोलते हैं ना, if a Hindu woman wants, Neeraj, just one point, if a Hindu woman wants to convert to Islam, the point is great. उस पे आते हैं विशाखा जी, उस पे आते हैं. ये एक बहुत ही
इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कल भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इस पे हम लोग आते हैं, इस पे बड़ा डिटेल्ड चर्चा की जरूरत है, राइट? नहीं, मैं बस वो एक पॉइंट बोल लूँ। पॉइंट ये है कि जब वो होता है, बट यू हैव टू सी द ramifications ऑफ इट व्हेन यू कन्वर्ट विल इट कम टू इट। ग्रोस। विशाखा जी, ये पूरा एक अभी हम लोग अभी 15 मिनट में 10 मिनट में इसको एड्रेस करेंगे और डिटेल में करेंगे, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम एरिया। तो या आंदोलन जी, तो हरवल अभी दिस साइड। आंदोलन जी हम बात जस्ट कर रहे थे रजिस्ट्रेशन ऑफ वेट, लेट मैरिज। नीरज टी जस्ट अ टॉक। सेकंड गाइस, आपकी आवाज ब्रेक हो डूड, रही है नीरज। वेट, या आई जस्ट वांट टू इज दिस वॉइस क्रैकिंग ओनली टू नाउ। मी? या नीरज जी, आपकी इट्स वॉइस फाइन, क्रैक हो रही है अभी ठीक है? मैट्रिक्स में। आप, हाँ अब बेहतर है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज अलग अलग एक्ट्स के अंडर तो नहीं होगी कि हिंदू मैरिज एक्ट में भी हो गई, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके अंडर भी हो गई, और जो स्पेशल मैरिज एक्ट हो। शादी आप जैसे मर्जी कर लें, आप निकाह पढ़वा लें, वो कर लें, बट एक्चुअल रजिस्ट्रेशन तो एक ही होगा ना तीनों में से, या तीनों कर सकते हैं? यस यस, तो अगर नहीं आपने तीनों नहीं कर सकते। वही जो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट जो ये है एसएमए, ये आपने करवाया है, इसमें भी वो 30 डेज का टाइम देते हैं, फिर पता नहीं वो सोलमनाइज वगैरह, तो वो एक प्रोसेस शुरू हो गया आपका। तो उसमें वो अलग तरीके से आप अब आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो यू स्टार्ट विद एसएमए, तो बाकी आप जो मर्जी सेरेमनीज करनी है वो करते रहिए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है मेरे नहीं को है लगता है। नीरज जी, है। अगर आपने एसएमए करने के बाद निकाह कर लिया, और निकाह चूंकि सारे निकाह रजिस्टर होते हैं मौलवीज के पास, उसका डॉक्यूमेंटेशन इज पोस्ट डेट ऑफ एसएमए, तो उसमें फिर देन इट कैंसल्स योर तो एसएमए। उसमें फिर सरकार को कुछ करना होगा कि अगर आपने एसएमए हाँ में मैं आ रहा पहले हूं। कर रखा है, हाँ वट एवर इज द फर्स्ट दैट शुड बी द मैं उसी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीजन आए हैं वो इसमें आए हैं कि अगर आपने एसएमए करा और उसके बाद में आपने उसको निकाह कर लिया, राइट, तो फिर निकाह सुपरसीड्स एसएमए, वट एवर पोस्ट डेट्स द फाइव, जो भी बाद में हुआ दैट वुड पोस्ट डेट द अर्लियर वन। और ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। So Ando sir, और this is a very big issue because that famous case of that Wajid Khan's wife, Kamal Rukh, she had married him under Special Marriage Act. She was in a relationship with him for 10 years and then she got married under Special Marriage Act. But the family was continuously pressurizing her to convert. And till date, she's in court trying to make sure that she and her children get their share of property. Yes, and Yeah, this so is only it's not possible. clear-cut. This is only possible, Hiraji, because she maintained the status quo of SMA. Had she given up and conducted a nikah, ये जो आज बच्चों का क्या कहते हैं परवरिश का जो उसका अधिकार उसको मिलेगा एसएमए के कारण, वो उससे छिन जाता। जो प्रॉपर्टी का अधिकार उसको मिलता है एसएमए के कारण, वो छिन जाता। जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट में इक्वल स्टेटस है वो छिन जाता। तो गुड शी डिडंट कंडक्टेड अ निकाह आफ्टर एसएमए। तो एसएमए जी ये भी आपकी चेकलिस्ट में आ जाना चाहिए कि अगर एसएमए किया है तो आप निकाह नहीं करेंगे। हाँ, मैं पहले इसीलिए मैं इसको एक एक पॉइंट में ले रहा था। तो अगर एसएमए करा है तो सबसे पहले तो अगर मैरिज हो रही है तो एसएमए के अलावा अगर कोई भी सजेशन दिया जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ मैलाफाइड इंटेंट। द गाय और अ गर्ल chose you for what you are, not for what he wants you to become. But Ando sir, it's still going on, the pressure and the pressure on her. I know. This is not yet ruled it out. No, I'm not ruling it out. I said I'll just take it up as a discussion. हम लोग अभी शादी पे हैं, शादी के बाद वाले पे अभी आते हैं। हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को ले रहे हैं। अभी हम लोग ने शादी से पहले वाली चेकलिस्ट बनाई थी कि लव जिहाद है कि नहीं, उसको कैसे चेक करते हैं। दूसरा, शादी करनी है तो क्या क्या कंसिडरेशन देखने। तो अभी शादी करने में ये कंक्लूजन आ रहा है, सिंगल चेकलिस्ट आइटम इज एसएमए करने को रेडली तैयार है कि नहीं दोनों पार्टीज। अगर नहीं है तो मैलाफाइड इंटेंट है। That is the checklist for marriage. We'll come to post-marriage subsequently. Andolan bhai, I have a question on what you just said a few minutes back. Can I ask?
सॉरी। प्लीज गो अहेड। ओके, सो आपने अभी बताया कि लेट्स से द कपल गेट्स मैरिड अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट और 6 महीने बाद दे गो टू अ काजी और व्हाट्स क्या होता है उनका, और वहाँ निकाह पढ़ा और वो रजिस्टर हो गया। तो व्हाट यू आर सेइंग इज कि मोमेडन व्हाटएवर देयर मैरिज शरीयत विल फॉलो देयर, इज इट? लाइक शरीयत विल ओवरराइड स्पेशल मैरिज एक्ट, इज इट? इन केस निकाह बाद में पढ़ा गया, यस। तो एक चीज बताओ, देखो यहाँ एक कंफ्यूजन है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो एंड दिस वन इज फर्स्ट फॉर विशाखा जी। सो विशाखा जी, व्हाट यू सेड वाज कि बॉलीवुड में वो सॉरी सेलिब्रिटीज करते हैं, फेरे भी ले लिए, निकाह भी पढ़ लिया, क्या होता है? सो हिंदू मैरिज एक्ट सेज कि फेरे, अग्नि के 7 फेरे इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ मैरिज। अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सप्तपदी। नाउ सप्तपदी इज नॉट 7 फेरा, ओके? द इसमें हरवल जी मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको शॉर्ट में करते हैं, नहीं तो दूसरे डायमेंशन में चला जाएगा। अगर आपकी मैरिज हिंदू ट्रेडिशन से हुई है, एंड व्हेन आई से हिंदू ट्रेडिशन से, दैट मींस कंप्लीटली एज पर हिंदू ट्रेडिशन, राइट? हाँ, you would, if you go, you can choose to register this marriage under the Hindu Marriage Act, right? That is a choice. पर अगर आपकी मैरिज रजिस्टर नहीं भी हुई है हिंदू मैरिज एक्ट से, बट ट्रेडिशनल आपने सारे फॉलो करे हैं और उसके एविडेंसेस हैं, मतलब फोटोग्राफ्स, वीडियो कैमरा, 10 रिश्तेदार, राइट? तो आपकी मैरिज को हिंदू मैरिज ही माना जाएगा। नहीं, मैं आपको यहाँ आंदोलन भाई मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ। अगर लड़की और लड़के ने बोला कि सप्तपदी की रस्म नहीं हुई है, दैट मींस, अरे तो भैया समझ गए हरवल भाई, पर उसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करेंगे ना मैरिज के। ठीक है, तो उस केस में जैसे आप बोल रहे हो कि शरीयत विल ओवरराइड स्पेशल मैरिज एक्ट, नहीं, पर इसमें शरीयत कहाँ आ गया? इसमें शरीयत कहाँ से आ गया? मेरा कहना क्या है, एक लड़का लड़की ने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी किया, रजिस्टर नहीं हुआ, छोड़ दो, शादी किया, 6 महीने बाद ड्यू टू व्हाटसोएवर रीजन वो काजी के पास गए और निकाह पढ़ लिया। यस, व्हाट विल ओवरराइड? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ हरवल जी, मैं वही आपको रिपीट करके कई बार ये बात बता चुका हूँ। मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो निकाह होता है, निकाह का 100% रजिस्ट्रेशन होता है, कोर्ट में नहीं तो मौलाना के पास पेपर वर्क होता है, ठीक है? वो सुपरसीडेड माना जाएगा बाकी किसी चीज से, इफ दैट इज पोस्टेड। आंदोलन जी, यहाँ पे क्वेश्चन था, हाउ विल यू नो कि लड़के का पहले स्पेशल मैरिज एक्ट या किसी और एक्ट में या निकाह, मतलब एज पर शरीयत एक्ट शादी या निकाह हो गया है? क्योंकि जैसे ये जो ये आसाम में जो हाई कोर्ट वाला जो केस में दिखा गया, इस केस में आया कि लड़की को पता ही नहीं था कि हस्बैंड का वो पहले से हो गया है। हाँ, तो गौरव जी उसमें हो क्या गया ना, अगर आप, हाँ मैं आपको क्वेश्चन समझ गया, राइट? आपको पता नहीं चलेगा, राइट? लेकिन जो सामने वाला लड़का है उसको ये पता है कि वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने जा रहा है, जिसके लिए 2 साल, एक सेकंड, जिसके लिए वो 2-3 साल तक जेल भी जा सकता है। तो वुड ही रेडीली एग्री फॉर एसएमए इन दैट केस? आंदोलन जी, यहाँ पे ये लोग खेल खेलते हैं। द रीजन इज दैट, अरे हम खेल की बात नहीं कर रहे गौरव जी, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, बट आई एम सेइंग, इज दिस अ डेटरेंट और नॉट? इट इज अ डेटरेंट। दादा इज अ लीगल, दादा ऊपर आइए, हम लोगों के काफी लीगल क्वेश्चंस हैं। Anand, I think it is a deterrent, but they play a different kind of game here, because if you which is okay. I mean, see, which is fraud, that is fraud, right गौरव जी? पर हम ये कह रहे हैं कि इस फ्रॉड की संभावना कम हो जाती है अगर आप एसएमए इंसिस्ट करते हो। Yeah, that's true. You know, तो चेकलिस्ट में आप मतलब वो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर तो हर केस में नहीं लगवाओगे ना। आप बेसिकली चेकलिस्ट में यही है कि अगर एसएमए करने को रेडीली तैयार हो गया, तो दैट मीन्स probably there is no history of any other marriage. Dada, we had few questions with respect to Special Marriage Act. Would you be able to clarify? I would try, आंदोलन जी बताइए। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन ये है, गुवाहाटी केस का जिक्र हो रहा था जिसमें एक मुस्लिम युवा थे, उनकी ऑलरेडी एक शादी हो चुकी थी मुस्लिम महिला से पहले, उसके बाद उन्होंने एक हिंदू महिला से स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली।
तो क्या कहते हैं, जैसा कि सेक्शन 44 हम लोगों को किसी ने बताया कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में हैं तो पॉलीगैमी परस्यू नहीं कर सकते। जी, there is the provision 44 talks about punishment for bigamy. Okay, and what is that punishment, Dada? That I think it's similar to what's prescribed in the other. Under it needs to be taken care under 494 and 495 of IPC. आंदोलन जी। मतलब 2 से 3 साल की सजा का तो प्रावधान होगा ना? जी। That's 10 years Yes. punishment. 10 Actually, years. Okay. yes, 7 to 10 years, and we along with a fine. Okay, so that's almost equivalent to a rape सजा. Okay. ठीक है। सो तो हम लोग अभी इस पे पॉइंट पे थे, चेकलिस्ट प्रिपेयर कर रहे थे कि आपको अगर खासकर इस्लामिक हाउस होल्ड में शादी करनी है तो क्या क्या चेकलिस्ट है। हम लोग मैरिज तक पहुंचे थे एंड इट इज कमिंग आउट क्वाइट क्लियरली दैट इवन अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ये था दादा, लेट्स से अ मुस्लिम गर्ल मैरिज अ मुस्लिम बॉय अंडर एन एसएमए, That can't be. Okay. That marriage cannot be registered under an SMA. आंदोलन जी। Okay, okay. So same religion marriage cannot be registered under SMA, is it? Only inter-religion. Okay, so thanks for that clarification. आपने हमारा एक misconception दूर कर बट दिया. आंदोलन जी Sorry, एक I have a उसमें question here. उसमें मैंने देखा था कि इट इज रिलीजन एंड कास्ट, तो मुस्लिम्स में भी तो अलग अलग कास्ट हैं कि नहीं है? वोंट इट फॉल अंडर दैट? हाँ, एक शिया लड़का एक सुन्नी लड़की से शादी कर रहा है तो एसएमए यूज कर सकता है कि नहीं? आई थिंक यस, बिकॉज इट्स अ कास्ट, राइट? आई डोंट नो वेदर इट इज आइडेंटिफाइड वन और नॉट, बट इट इज कास्ट एंड रिलीजन. Arey, SMA is only a mean of register. I mean, to get the marriages registered, yeah. So they have a legal sanctity, right? I mean, this legal this thing is required because of the further legislations that come in picture, the right to divorce, इसमें succession, हाँ, मैं यही पूछ etc., रहा था etc. कि that was my second question. So let's say, but I think नीरज जी, दादा is valid in saying that same religion का है तो एसएमए अप्लाई नहीं करेगा. But Andolan ji, I know guys who are from same religion and they have registered marriage under Special Marriage Act. I know the guys actually. वो इंटरकास्ट थे कि नहीं थे? Okay, so see, marriage mein caste doesn't come into picture unless those are scheduled. There are some tribes, so I can pretty much say they were not from those tribes, right? So See, okay, I Special can. Yeah, there Marriage are Act, four. no. Okay, Special Marriage let Act me. is basically for people from two different religion. Two different, yeah. ऐसा वो दादा, yeah. Okay. Okay. I'll get more details, but I know the boy and the girl both are Indians, both are Hindus, and they have registered marriage under Special Marriage Act, and they are in Australia right now, and I know them. So okay, that's So fine. I'll just pin this. So It this is says the religion and caste. this is the okay. Fine. It No, says it does religion. apply. Special Marriage Act does apply because caste भी आता है ना वहाँ पे. So Ashraf guy marrying a Pasmanda girl. Guys, fellows. let It's them only a medium of registration. आंदोलन जी It's एक वर्ड एक मिनट अमित भाई, एक हाँ। मिनट अमित भाई, दादा कुछ कह रहे थे. हाँ, जी मैं बोल रहा था सिर्फ एक registration का माध्यम है. There are conditions that people can get married, but it's unlikely that that of the same religion is permitted. Why would anyone register under same religion to create What so if they is are that different अच्छा, castes, Dada? just one second, just one second, Archie एक second, okay, 1 minute. So Dada, can you validate this point? That same religion people cannot marry under this SMA. There's no Because validation I just hold on, guys, just hold on, right? Because अभी मेरे पास एक 2 साल पुराना केस है जहां पे एक मुस्लिम बॉय का मुस्लिम लड़की से ही शादी हुआ था, पर चूंकि वो शादी उन्होंने एसएमए में रजिस्टर कराई थी विदेश जाने के लिए, वो लड़का उसको डाइवोर्स नहीं दे पा रहा था. to
Andolanji, the only one of the intents of SMA or getting registered under SMA is to clearly lay down the divorce provisions in inter-religious marriages, no? So SMA, I mean, registering it under SMA would also mean that they have definitive grounds for divorce. Yes. नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती What है if किसकी तरफ से, मतलब लड़की के what if रिलीजन वाले से डिवोर्स दें या फिर yeah लड़की के रिलीजन no से. no Can I say that's what one I'm line? saying. The thing is, if the girl does not want to follow the Hindu Marriage Act or the Muslim Personal Law Board वाला, she can go with the Special Marriages Act. और ये ऊपर साफ क्लियरली मैंने जो लिंक लगाया इसमें मेंशन्ड है, इट इज रिलीजन एंड कास्ट. तो वैसे भी आप इस यू कैन चूज राइट. इट्स नॉट दैट कि इंटर रिलीजन है तभी आप कर सकते हो. आई थिंक मुझे लगता है सबको करना चाहिए, बिकॉज इसमें आपको इक्वल राइट्स मिलेंगे. मुस्लिम लड़कियों को ठीक भी है. करना चाहिए इसके अंडर. हाँ, अगर ideally, which is what we, but let us park this in absence of till we get a clarity on this particular issue. Let us park this and let us, update our checklist of marriage. I think whenever you are marrying in Islam, the best or the only way to marry is through a special marriage act. अगर सामने वाली पार्टी एसएमए के लिए तैयार नहीं हो रही है, there is a malafide intent. There's nothing, no harm in presuming that there is a malafide intent, right? अगर और इस दूसरा विषय पे वाला किसी को और छोटा सा पॉइंट रखना है नहीं तो आंदोलन जी, आप उसमें दूसरा भी इन्वॉल्व कीजिए ना, कि इसके बाद आपको निकाह नहीं करना, क्योंकि आप वो करेंगे तो फिर वो स्पेशल मैरिज पे, उसके बाद हम मैरिज, जब आप मैरिज होके घर आ गए तो उसके बाद क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है उसकी भी चेकलिस्ट है, उस पर हम लोग आगे बात करते हैं. मैं आए आंदोलन जी, एक ही लाइन बोलना था. हाँ, बोल दीजिए अमृत जी. मुझे जो लगता है, जो चीज नहीं लिखा है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट. मेरे लिए जितनी मुझे जानकारी है वो है इंटरफेथ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस. जैसे इंटरनेशनल मैरिज भी, जैसे राजीव गांधी और सोनिया क्या नाम था उसका पहले, वो इंटरफेथ फेथ, ये चीज मेरे ख्याल से शायद जो उसमें लिखा नहीं है वो है स्पेशल मैरिज एक्ट. बस यही कहना था मुझे. फेथ इज अ मोटिव. Yeah, applicabilities to Hindus, Muslims, Buddhists, Jains, Sikh, Christians, Parsis, Jews. Basically फेथ everyone. में आ गया ना, फेथ में वो And सारी for चीजें आ गई. Agnostic and atheist. एवरीथिंग. yes, they can also register. So applicability besides these extends to any person irrespective of religion. That's the broader applicability, Andolan ji. तो मेरा एक स्पेसिफिक क्वेरी है, मैं इसको तुरंत आपसे आंसर नहीं मांग रहा हूं, पर अगर आप वैलिडेट करके मुझे बाद में भी बता देंगे. कैन टू मुस्लिम्स मैरी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट? Andoji, what I'm certain is that marriages can be registered under the Hindu Marriage Act or the Special Marriage Act. But I'm not sure about I mean, technically they should be. As I said, Special Marriage Act is only an act of registration. You can, there is no ceremonial validation that is needed after registration. But while registering, even prior to registration, there is no ceremonial validation required, right? No. Registration and you're married. Yep. So there's a 30 period time, 30 yeah, days 30-day period period. time. Yeah, we have to put up the notice, and after that you can just go and sign the paper. So no ceremony required prior or post, right? No requirement. If you want to do it, you can, but बट स्पेशल मैरिज एक्ट में जो लोग शादी करते Special हैं, Marriage Act, 1 second, Harsh. But Special Marriage Act is very clear. You can marry irrespective of religions. So I don't think they should have an issue, because अगर वहाँ पे इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजन, इंटरफेथ दोनों हैं, तो अगर एक ही फेथ में दो कास्ट है तो आप शादी नहीं करवाओगे अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट. हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर दोनों सेम कास्ट के लिए सब कुछ सेम है, can I not register my marriage under special marriage act? Yeah, also you can. Andolan ji, I don't know, like I am not that versed with the Special Marriage Act, but I don't think that caste specifically is a provision of or a sectional provision of Special Marriage Act. I don't think that it mentions about नहीं caste. see यहाँ पे it's very clearly written that this act applies not only to Indian who belong to different caste and religion, but also to Indian who live in India. But यहाँ पे लिखा है कि this act includes Hindu, Muslims, Christians, Sikhs, Jain, Buddhist marriage.
and it is applicable to everywhere except Jammu and Kashmir. हाँ वो भी हाँ दादा ये तीसरा क्लैरिफिकेशन था that initially this act was not applicable to the state of Jammu and Kashmir, but after I think a blanket implementation of all Indian laws on the state of Jammu and Kashmir, would this act also hold water in Jammu and Kashmir, the state? It technically should be, Andolanji. I don't think now they would have any issues in extending it. Earlier, probably because, well, if someone is marrying outside if someone is getting married to someone inside the state, so by default they would have the property rights. To stop that evolution, like I mean the devolution of property in succession, they did not extend this. मेरा सवाल ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करते हैं, लेकिन संपत्ति के जो कानून है वो उस पर लागू होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि कोई हिंदू गर्ल अगर जो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करती है तो वो एसएमए के तहत रजिस्टर होते हैं, लेकिन उस लड़के को अपने पिता या दादा से जो संपत्ति मिल रही है जब मुस्लिम लोग के तहत, वो उसको एक्सटेंड करनी है ना करनी है वो तो शरिया के अनुसार जाएगा। तो इसमें एसएमए तो कुछ नहीं कर सकता ना वो प्रॉपर्टी के अंदर। Yes, you are right, Harsh. प्रॉपर्टी शेयर जो होता है ना, प्रॉपर्टी शेयर हमेशा पार्टीज के बीच में होता है, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होता है। ये नहीं कि उसने कहाँ से इनहेरिट की है, उसको गिफ्ट में मिली है, उसने खुद बनाई है, जो भी उसकी होगी ही हैज टू शेयर एट द पॉइंट ऑफ डिवोर्स। हिंदू मैरिज एक्ट में ये है कि अगर जो मुझे मेरे पापा या दादा से जो मुझे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रही है उसके अंदर मेरे साथ मेरे भाई या बहन हिस्सेदार होगी, मेरी वाइफ नहीं। मैं आपको जब तक बताता मैं जिंदा हूँ, हूँ मैं आपको तब बताता तक हूँ। मेरी वाइफ provision मेरी of एंसेस्ट्रल succession प्रॉपर्टी में act. कोई अधिकार नहीं है। नहीं क्लियर कट है। बट एक चीज है, हाँ आंदोलन जी, यहाँ पे आपने जो बोला है, यहाँ पे 4 कंडीशंस है विच यू नीड टू फुलफिल फॉर दिस फॉर क्वालिफाइंग अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। एक तो एक है एज, सेकंड है एट द टाइम ऑफ मैरिज बोथ द पार्टी मस्ट बी मोनोगैमस, दैट इज बोथ मस्ट बी अनमैरिड, एट द सेम टाइम शुड नॉट हैव एनी लिविंग स्पाउस। सेकंड, सो यहाँ पे पॉलीगैमी इज टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। Third, ये है, it is given in order to be able to decide themselves. The party should be mentally fit and they must be sane at the time of marriage. The चौथा वाला is very important. They should not be related to themselves through blood relation. That is, they should not be subjected to prohibited relationship that otherwise acts as a ground for dissolving their marriage. तो यहाँ पे very clearly यहाँ पे दिया है, पहली चीज polygamy will not be allowed. It only monogamy, and obviously वो age है. Second है no blood relation marriage. That's also been put over here, which has been very clearly defined. These are actually Dada, provisions I of also section have 4. I have a question. It's written over here that if a Hindu, Buddhist, Sikh, or Jain marries outside of these communities, they are no longer considered part of the undivided family, which means they cannot inherit ancestral property if they marry a Muslim, Christian, etc. Checklist Only item under is the बिल्कुल सही बात है। अगर जो मैं कोई दूसरा धर्म कन्वर्ट हो जाता हूँ तो मेरे पिता मुझे अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। अगर जो मैं हिंदू ही रहता हूँ तो वो मुझे मेरी दादा की संपत्ति में बेदखल नहीं करेगी, लेकिन अगर जो मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाऊँ, बुद्धि में कन्वर्ट हो जाऊँ, तो मेरे पिता को पूरी शक्तियां मिल जाती कि वो मुझे अपनी संपत्ति में बेदखल कर दे। दैट्स अ क्लियर कट। एक काम करते हैं Got आंदोलन जी, it. एक काम करते हैं आंदोलन जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये स्पेशल मैरिज एक्ट Yes. हो गया या हाँ प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। हाँ ये पोस्ट मैरिज भी डिस्कस होंगे, क्योंकि सक्सेशन राइट्स भी मुझे डिस्कस करनी है, उसमें क्या क्या कंसर्न्स हैं। तो एसएमए इज द ओनली वे फॉरवर्ड। एक छोटा सा रीसेट दे दे सबको so that they understand what's going on. हाँ अच्छा, अब मैं 2 मिनट लूंगा, अगर विशाखा जी या नीरज जी आप लोगों में से कोई रीसेट दे सकता है क्या, इफ दैट्स पॉसिबल? अच्छा so वैसे Viva, Andolan ji, that point is technically not true. The succession rights one. See, section 21 talks about succession of property of parties who are married under this act, right? Now, for Hindus, Jains, Sikhs, it is essentially Hindu Succession Act that applies the provisions of Hindu Succession Act. So, I mean, the male, whichever community he is from, he inherits those succession rights. There's no way that an individual can be devoid of the ancestral property in case of a cogent. That's He what can I said. claim, essentially, yes.
That's what I said, Data. In a special marriage act, both the parties retain their original characteristics as far as religion is concerned. So a girl, let's say a Hindu girl marries a Muslim boy. So girl would have the same right to property under an SMA because she remains a Hindu. However, if the girl converts and then marries the Muslim boy under nikah, not under SMA, that would mean that she would, the his ancestral property being from a Hindu family may not be granted to him. Is that a correct statement? यस एब्सोल्यूट। उसको, लड़की को अपने पिता की तरफ से जो संपत्ति मिल रही है उसकी शादी के बाद, वो उसके पिता चाहे तो नहीं भी मिलेगी अगर जब वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगी तो। ये लड़का और लड़की दोनों पर और एप्लीकेबल। HUF या दादा की प्रॉपर्टी है तो भी अगर जो कोई लड़की मुस्लिम से शादी करके मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाती है तो उसके हिंदू पिता को संपूर्ण अधिकार रहेगा कि उसके दादा के साइड से जो संपत्ति मिल रही है उसको शादी के बाद भी उस पर रोक लगा सके। ओके। No, there is nothing. I'm not sure, but नहीं, ये HUF गुजरात is हाई a कोर्ट में हो different. चुका है, एक्चुअली मेरे पड़ोस में ही हो चुका है। हमारी पाटीदार समाज की एक गर्ल थी, उसने हमारे अहमदाबाद की एक मुस्लिम से शादी की, तो उसके पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी। मेनली उस लड़के ने उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी देखकर ही शादी की थी उस लड़की से, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दी गया है कि लड़का हो या लड़की हो उसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में समान अधिकार रहेगा, नो मैटर वो विवाहित है अविवाहित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया और ऑफिशियली उसने निकाह से मतलब शादी की, तो उसके पिता को जैसे एडवोकेट ने कहा, उसने ऑब्जेक्शन राइज किया कि मेरी संपत्ति जो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत मुझे मेरे दादा से मिली है और मेरी लड़की जो कि अब मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी है तो मुझे पूरा अधिकार है उसको अपनी संपत्ति में से बेदखल करने का, और ये वैलिड रखा है गुजरात हाईकोर्ट ने। All right. All right. Yeah. I want to give So a that's small all the more reason to look at SMA for marriage. हाँ विशाखा जी। हाँ, and अगर मैं एक दो points भूल जाऊँ तो please feel free to interrupt. But एक second. So I'll give a small reset to everyone. So we were talking about because there are genuine love jihad cases. I'm not saying all Hindu-Muslim marriages end up like that, but there are genuine love jihad cases where women are forcefully converted after marrying, or they are tricked into conversion, or they are tricked into falling in love with Muslim guys. Now, what are the ways to prevent it? We were talking the first, part of the story is when before marriage, that is when you're dating or something, and the warning signals are that he hides your identity from you. There are multiple cases where Muslim guys have said that they are Hindus and then dated Hindu women, and then the secret busts out that he's a Muslim. That is a clear indication that something is fishy. Secondly, the second indication would be if he's trying to somehow coerce you into converting to Islam. He's preaching a lot of Islam unnecessarily to you without you even asking for it. That is a second sign. And third sign is if he's trying to change the way of your life, the way you live. For example, when I was dating one, he would ask me to not wear probably sleeveless or shorts, and wear clothes that cover your your thighs and all that. That is one warning sign. So these are Then before forcing to marriage. eat meat, then forcing to eat meat, then not allowing to bring idols or Hindu Yes, yes. those So shrines and those stuff things inside. come. Yeah. Gaurav, so those things come under trying to change the way you live, right? That is one. That was before marriage. Those are the warning signs. Second red signals are when you are about to get married. First biggest signal is if he is not willing to register under Special Marriage Act. What is Special Marriage Act? And Neeraj ji is right. I rechecked again. Under Special Marriage Act, irrespective of religions, you can marry under the Special Marriage Act. Even if you're a Hindu and a Hindu, you can marry under the Special Marriage Act. So if you're a woman who feels that Hindu Marriage Act is not providing you property rights, Special Marriage Act will provide you property rights, divorce, succession, everything. Second point is, and especially when you're a Hindu girl marrying a Muslim guy, the best is Special Marriage Act because for two reasons, or maybe 2-3 reasons. First is you will have your property rights.
Under Islamic law, women get only half the property of the sorry, 1/3 of the property of the man. So you will be prevented. If you get divorced, you will have right to succession as well. Second point, you will be able to prevent polygamy. For example, if you are a Hindu girl who has married a Muslim guy, under the Special Marriage Act, you can prevent him from having a second wife under the Indian Penal Code, because the Special Marriage Act prohibits and has a punishment up to 7 years of imprisonment if you try to marry a second wife. So if you're a Hindu girl who has married a Muslim guy under the Special Marriage Act, if he has married another woman, he will be imprisoned for 7 years. That's the punishment. मेरा Third, सवाल ये wait, है Harsh, रुकिए, I'm giving a reset for everyone. Third, जब आप Special Marriage Act के अंदर शादी करते हैं, it is very easy to have a divorce, which is very difficult under Islamic law, especially if you're a woman asking for Equal divorce. rights for a divorce. Equal right Equal to rights for a divorce. divorce, equal rights for succession, and domestic violence law will be easily applicable, because बहुत time Muslims में ये झंझट होता है, because in Sharia it is permissible to beat your wife. So these are the benefits when you marry under Special Marriage Act, but only one warning signal. If you're a Hindu girl who has married a Muslim guy under the Special Marriage Act, do not do a nikah later on, because if you do, the Special Marriage Act will get cancelled, because you have done it under the Special Marriage Act, thinking, for example, if I have a strategy that if I'm marrying a Muslim guy, I want him to prevent from having the right to marry any other woman, I will do it under the Special Marriage Act. But tomorrow, if he coerces me into doing a nikah again with him, Special Marriage Act will get cancelled. Henceforth, under the Sharia personal laws, Muslim Personal Law Board, he will have the right to bring in a second wife and divorce you as he wishes. So these are very crucial things. So this was a small reset. So 3 simple points after marriage: do it under the Special Marriage Act, because it gives you right to divorce, equal right to divorce, equal right to property and succession, and prevent him from marrying a second wife. But only one warning signal: do not do a nikah once you have registered under the Special Marriage Act. And if he is not wanting to do it under the Special Marriage Act, or if he is coercing you into doing a nikah after the Special Marriage Act, those are warning signals that something is really wrong. Yes. And here comes the most important point: post marriage. What is the checklist post marriage? Vishaka ji highlighted point number 1: post marriage under an SMA. If there is a pressure on you to convert, if there is a pressure on you to do a subsequent nikah under the Islamic Act, so nikah can only happen when you convert. Otherwise, it cannot happen. So basic requirement or ingredient of a nikah nama is that both needs to be Muslim. So do not take it lightly that I just want to do marriage under our own ceremony. So go ahead and sign a nikah nama, because signing a nikah nama also means that you have converted to Islam. इसमें Otherwise, सवाल you ये है cannot. कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आपने शादी कर ली तो आप लीगली दूसरे शादी नहीं कर सकते, मुस्लिम लड़का है वो, लेकिन जब से अब एडल्ट्री हट चुकी है तो इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप किसी शादीशुदा है तब भी किसी अन्य No, वो एक अलग चीज हो महिला गई. के साथ हाँ हर्षी, वो एक अलग नहीं टॉपिक हो गया. मैं एक बात बताता हूँ, अगर जो किसी को रिलेशन रखना ही है किसी लड़की के साथ शादी के बाद भी, That's a तो valid point. उसको शादी करने की जरूरी थी क्या? क्योंकि उन Anjali, दोनों let के me answer this. But just 1 minute, विशाखा जी, just 1 minute, just एक सेकंड. यहाँ पे हम लोग चेकलिस्ट बना रहे हैं शादी करने की, और शादी करने के बाद क्या क्या कंसिडरेशन देखनी है. To have an adulterous relationship without a criminal, problem, it's also available to a woman as it is available to a man. Yes. Right? So that is not a point of discussion, right? Because if your husband chooses to cheat upon you, you cheat upon your husband, right? हाँ आंदोलन जी, मैं बस एक पॉइंट इसमें बोलना चाहूंगी. हर्ष जी, दैट इज पॉसिबल, यस. सो अंडर, एक प्लीज म्यूट कीजिए हर्ष जी, आई एम टॉकिंग ना प्लीज. हाँ. सो अंडर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, adultery is decriminalized. So yes,
if a Hindu girl has married a Muslim guy under the Special Marriage Act, he can still have, extramarital affair with any other woman, and that is not a crime. But however, though it is there, एक point तो आंदोलन जी only said कि even the woman के पास वो right है. So if the guy is cheating on the woman also has the right to cheat on the guy. So both will not be crime. But very important thing that I wanted to say, it is a ground for divorce. And it is very easy to get divorce under Special Marriage Act. But if the same was under Sharia, firstly, it is not illegal under Sharia to कहीं पे भी मुंह मारना. It is permitted. But if it is under Sharia, it is very difficult to get a divorce. So even if it is under Special Marriage Act, if there is an extramarital affair, it is a ground for divorce. But if it is under Sharia, it is very difficult. Also, one more point: if one is getting their nikah done under the Shariat Act of AIPLMB, they are not entitled to any kind of alimony. The woman is not entitled to any kind of alimony or maintenance from her husband. But when it comes to Special Marriage Act, the wife is entitled to maintenance monthly, or as a big large one time alimony or maintenance from the husband. And not just that, he has to also maintain the children who are born out of that marriage. So these kind of protections which we found in any secular laws, even in the Hindu Marriage Act, are all entitled or all enshrined into the Special Marriage Act. So you are also getting covered from this way too. Thank you. ओके, तो एक्चुअली विशाखा जी, नीरज जी, मैं 5 मिनट लूंगा. मुझे एक्चुअली कुछ गेस्ट आ गए तो मुझे अटेंड करना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ ये रूम कंटिन्यू रहे और पूरे पॉइंट्स पे डिस्कशन. मैं अपने आखिरी I'll take 3 or 4 minutes just to explain post marriage scenarios. तो पोस्ट मैरिज सिनारियो में एक विशाखा जी ने बड़ा क्लियरली हाईलाइट करा, रेड फ्लैग है अगर फैमिली का, ग्रूम फैमिली का आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है कन्वर्ट करने को, या आपको बहला फुसला के कहा जा रहा है कि अरे हम लोगों को अपने घर की रीतियां पूरी कर लेने दो, निकाह पढ़ देने दो, ऐसे में कर तो चुके हैं तुम्हारे कहने से, हमारा भी मन रख लो. आपने जैसे ही निकाहनामा पे साइन करा, आपने कन्वर्जन एक्सेप्ट कर लिया और आप मुस्लिम बन गए. और जो एसएमए में जो जो आपको प्रिविलेजेस या सिक्योरिटी कवर था, वो आपके ऊपर से हट गया. अब आपका पति दूसरी शादी भी कर सकता है, आपको तलाक भी दे सकता है. आप तलाक नहीं दे सकती, केवल रिक्वेस्ट कर सकती है तलाक के लिए, जिसको खुला बोला जाता है. तलाक के बाद आपको सक्सेशन मेंटेनेंस राइट भी नहीं मिलेगा, केवल जो निकाहनामा पे रकम लिखी है मेहर की वो मिलेगी और आपको तलाक दे दिया जाएगा. बच्चों की परवरिश पे भी आपका अधिकार बहुत लिमिटेड हो जाता है एज कंपेयर टू एसएमए. मेरा जो एक ओपिनियन था, और यहाँ पे थोड़ा लीगल चेंजेस की जरूरत है, जो जैसा कि विशाखा जी कह रही थी कि लेफ्टिस्ट कहते हैं कोई अपनी मर्जी से अगर मतलब रिलीजन बदल लिया तो क्या प्रॉब्लम है. इन केसेस में प्रॉब्लम है, और मैं यहाँ पे रेफरेंसेस देना चाहूंगा विशाखा गाइडलाइंस का, जो कि कॉर्पोरेट में अप्लाई होती है. मैं रेफरेंस देना चाहूंगा दहेज क्या कहते हैं प्रोविजंस का. मैं रेफरेंस देना चाहूंगा SC/ST प्रोविजंस का. इन तीनों प्रोविजंस में विशाखा गाइडलाइंस क्या कहती है कि अगर आपका मैनेजर अथॉरिटी में है, पोजीशन ऑफ पावर में है, और आपके साथ सेक्सुअल रिलेशंस रख रहा है even with your consent, it is assumed that your consent came from a position of power or submitting to a position of power and authority. Same kind of deeming provisions are there in SC/ST Act. Same kind of deeming provisions are there in the Dahej Act, जहां पे डीम कर दिया जाता है कि you are in a position of power and hence the guilt is preconceived. You don't have to prove it. इस तरीके के केसेस में भी अगर एसएमए हुआ है और उसके बाद किसी ने निकाह पढ़ भी लिया या इस्लाम कबूल भी कर लिया, तो इसको प्रिज्यूम कर लेना चाहिए दैट हैज हैपेंड बिकॉज द अदर पार्टी वाज इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पोजीशन ऑफ पावर, and the girl should have a right
to revert as and when she chooses to and claim the original settlement of marriage. This is my viewpoint. There is a lack in the law with that respect, and that is why ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि एसएमए होता है, उसके 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद, बच्चे अच्छे होने के बाद फैमिली प्रेशर के कारण निकाहनामा पढ़वा दिया जाता है, लड़की इस्लामिक बन जाती है और फिर आदमी के पास डाइवोर्स राइट्स, सेकेंड वुमेन मैरिज राइट, सक्सेशन राइट्स ऑफ द वुमेन बीइंग curtailed, ये सारी चीजें हो जाती है। यहां पे भी डीमिंग प्रोविजन लगाने चाहिए और इस तरह के खासकर जो केसेस हैं इंटर रिलीजियस मैरिज के, उसमें ये प्रिज्यूम करना चाहिए कि जिस घर में लड़की गई है शी इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, सो इवन while she might have given consent, that consent would have come from misuse of authority and power, like we do in Vishaka Guidelines Incorporate. So this is my submission. Over to Neeraj ji, Vishakha ji, and Hira ji to run this room, forward from here. And my last checklist item is, if the family is forcing you to convert, the family is forcing you to do a nikahnama, that's a big red sign to seek help from people outside this family you have married into. Acha, so forward from this, I think we should focus on two things: what after the marriage, and if there is cases of, genuine extortion from the women, like torture, in terms of converting or any other thing, what should be done there? So those are the two aspects left that we have not spoken even now. So if anyone has any suggestions as to what should be done after marriage, post marriage, one thing that Andolanji and I both said is do not read a nikah later on. Once you're married, and firstly get married under the Special Marriage Act, that should be your only option. Nikah is not an option, because if you do it, it is an option legally. But remember, if you do a nikah, if you're a Hindu girl who does a nikah, you open doors to your own life being destroyed, because the man will have the right to marry 4 women. You can't inherit his property. You will not have alimony rights. And also, another thing is, you will not be able to have the custody of your children very easily. And forget all of that. The most difficult thing is you can't even ask for a divorce. I mean, you cannot even give divorce. You can only ask for a divorce if you do a nikah. So always prefer a Special Marriage Act. But in case you have done a Special Marriage Act, do not nikah, because that will immediately cancel out all the benefits and security that you were getting under the Special Marriage Act, and you will be thrown down to everything that you feared. That is polygamy, that is no alimony and succession rights, and finally no custody of your child and not even being able to give divorce. But Special Marriage Act protects all of these rights of any Hindu woman who is marrying into an Islamic faith. So now post marriage, what are the things? So, couple of points I want to add here. Like after marriage, if you have celebrated your festivals, you went to temple, obviously, or if you belong to some other religion, Buddhist and Jain, to your own, or Sikh, to gurudwaras, uh, just check before marrying, actually, that will that be allowed after marriage, right? So that is, I mean, if you want to continue with your tradition, you don't want to give away your religion. I mean, obviously, that is the criteria of a Special Marriage Act. I mean, if you want to become a Muslim convert, then it's a different story. But these are the things. Are they continuing, or there is a push post marriage not to follow your culture, your way of life, your way of worship? Then it is also a red flag. And I think this one we should have added before marriage. So in the before marriage column, so if before marriage, if you will of course decide about the kids, right? And now everyone doesn't want to have a kid, I understand. But those who want to,
you will of course decide which religion the kid will belong to, right? So if there is constant apprehension that the kid has to follow Islam, you're in deep troubles. That is one of the biggest red red flag signs. Not all the time, but most of the times. All the time, nahi, because there are some cases like Kiran and all these Amir Khans. They wife, they live fine. But remember, if you marry under the Muslim Personal Law Board's nikah nama, if you go according to that, you can't even stop your child. You can't even decide your child's religion because it will be entirely on the father, and the child will be a Muslim. So that is one more thing to worry about. And if he's a Muslim, by the way, you can't prevent any Islamic practice being done on your child. For example, khatna. So I didn't want to go this deep, but I'm going. If your child is a Muslim, what will you do? The Islamic law asks him to do khatna. Can you prevent that if you're a Hindu woman? Can you, even if you haven't converted, can you prevent your child from not getting a khatna done? Of course not. So yeah, Gaurav. Well covered, Vishaka. Those were very critical points, and every woman should remember before going into such kind of interfaith or interreligious marriages. And not just that, you can see that most of the Hindus these days are vegetarian. They follow a strict vegetarian diet. And the thing is that mostly, if you see that when all these cases are coming up in a Muslim household, in a Muslim family, they normally follow a very strict non-veg diet. And not just that, they have a notorious attempt that when a Hindu or a non-Muslim comes to their house, they have an attempt to poke her with these jokes on beef, with jokes on why Gau Mata is why cow is considered as Gau Mata, why we worship Gau Mata. So this kind of poking nose and tauntings and humiliations and embarrassing in front of all the members, this it is there within, and we can see it very evident within the kind of conversations that have on social media platforms, be it Facebook, YouTube, Clubhouse, then in Twitter Spaces too. So you get it clarified with your fiance or spouse pre your marriage, because post marriage I don't think that you don't have much options. So you clear it out that if such things will happen or not, if they will be allowed to follow a strict vegetarian diet if you are a vegetarian, and if even if you are a non-veg, then if beef or such kind of stuffs aren't going to be forced upon them or not. So these things must be clarified, because once you are getting married, a lot of things are actually getting changing. You are having a defined identity, your life, your way, many things will get affected. May not be directly, but indirectly there will be an influence. So it is very important that you clarify on these stuffs too. Not just that, when having kids, in which way that kid will be groomed or educated, because it's an interreligious marriage. So whether he would be giving the or taught the ways of the husband's faith or the wife's faith. So these elements needs to be clarified, or how the kid will be named, the namkaran ceremony or the namkaran process, whether it will be done or not, because in Hindus we have a process known as anyaprasan, then there is this namkaran, and which name would that child adopt? It will be a Sanskritized Hindu, Hindi, or a regional language name, a traditional native Indian or Bharatiya name, or it will be an Arabized Turkic like Taimur, like Abdul. Such kind of names will be adopted. So these things, I will say that pre your marriage you decide. If you have such kind of assertions, if you're proud of your culture, proud of your roots, the culture which you are grown up and groomed in. So I will always suggest that do it pre your marriage and observe the red flags, because the only way you can stay safe is by observing the red flags. And if you can spot out these red flags, then the things can go either ways. So please be careful and be sharp while deciding, because no one wants that their marriage is going to break. Everyone wants their marriage is going to be successful. It will be have a very happy ending. So please act accordingly. Thank you. Yeah, okay, thanks for that. On a lighter note, when you spoke about having names, Arabic or Hindu, or like Indian names, marry a Sanatani Muslim. Then you won't have an issue of all this. Okay, that was on a lighter But note. Vish, a Sanatani Muslim, Amir Khan, his so 3 kids are named Ira, He is Junaid, and not a Azad. one. He is a typical. Don't you know he's member of Tablighi Jamaat? Amir Khan. He's a member of it. No, I didn't He know might, this. and
he is a member of Tablighi Jamaat. So, okay, Nityam, I'm the one that you wrote on chats. I was not saying that. I was saying कि ये जो आमिर खान की see, I was saying कि in most cases, yes, Hindu women get brutalized after marrying into Muslim households. But जो I was saying कि आमिर Khan's child have मैं वो जब child के point पे आया, then I was saying कि child might be Muslim, but his wife is still okay. So in some cases, the wife might be okay even after naming the child that. But in most cases, women object and they get beaten or worse. So your best safeguard, if you're firstly, I would suggest don't do interfaith marriage with Muslim guys. But if you do it, the best and the safest measure till now that we have is the Special Marriage Act. And the benefits of it, again, I will repeat, it will prevent, and it not prevent, it will prohibit your husband from having a second wife. It will give you equal divorce rights, which if you marry under Sharia, that is the Muslim Personal Law Board in India, if you marry under that, you can't divorce your husband. You can ask for a divorce, and if he refuses, you have to go to the Sharia court, that is the Maulvi. That will be prevented under the Special Marriage Act. You will have right over your kid, and this is I think this is general IPC, that if a child is below the age of 5 years, its custody will go to the mother. So you will get that right easily under the Special Marriage Act, which you will not get under Sharia. Under Sharia, you can't even divorce your husband. So if a Hindu girl is even thinking of marrying into a Muslim household, the best protection with all of your rights, whether it's having a monogamous relationship, whether it's protecting yourself from unequal succession or alimony or anything, this Special Marriage Act will protect you in that. So this is the best known solution until now. Once uniform civil code comes, then हाँ भाई सारे ceremonies कर लो, कोई फायदा नहीं होगा, because UCC will only hold. But for now, this is the best solution. Yeah, anyone else wants to add? I think Akshay, you came up. You want to add something? Hi everyone. अरे एक basic point missing है विशाखा. I was in the room for a bit in the early. I would ask women to at least pose or at least posture one question to their Muslim partner, lover, whoever they are considering to live their life with. Just pose one question कि भैया घर वापसी कर लो ना, झंझट ही खत्म, तुम भी आजाद मैं भी आजाद. Why can't that be a red flag? We can ask, भाई आप छोड़ दो, इस्लाम छोड़ दो, इट्स बेटर. हमारे उधर कोई मतलब आपको मंदिर नहीं आना है, मत आओ, जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है. So why can't that, if they even pose that question, that is will act as a trigger point for all the red flags that you're asking for. Don't you think? I agree that if someone is asking you to convert, why don't you ask them to convert, right? If घर they वापसी कर लो, क्या दिक्कत है भाई? Yeah, exactly. I mean, the point. So we don't want to. So this room, mostly, I just want to say that we are just trying to find out the red flags. But if someone is asking you to convert, then you can also ask the same question back. Nothing wrong. And then you can obviously observe एक है ना, that what's the हर response. चीज में ना जब क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं ना, जनरली एक एसिड टेस्ट होता है. सो दिस एक्ट्स लाइक अ परफेक्ट एसिड टेस्ट. But कोई एक that way you सिंपल सा are सवाल taking है. away their own personal fundamental right? Marrying the second person, third person, fourth person. That is not possible if they convert, right? अरे भाई, The groom side. he is ready to commit to that girl. मतलब जान से प्यारी है वो लड़की उसके लिए. अरे जान से प्यारी is तो not a उसका तो कोई lifetime सवाल ही thing नहीं यार. है. अक्षय भाई, come on, क्या बात कर रहे हो? It's not a lifetime thing. It's जान से I प्यारी know. till I like it. See, the हाँ. thing is, they just say the limited part. जान से प्यारी, उसके बाद का कोई पूछता नहीं, लेकिन कब तक? कब तक का तो सवाल आगे ये रिडंडेंट ही हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ये सवाल खड़ा होगा ना कि आप चलो, आप इस्लाम छोड़ दो, आई विल बिकम एथिस्ट, यू आल्सो बिकम एथिस्ट, बोथ ऑफ अस विल गेट मैरिड इन कोर्ट एंड we'll name our kids something like moonshine or whatever. it it doesn't matter.
तो वहीं पे किस्सा खत्म हो जाता है। ऑल द रेड फ्लैग्स दैट वी बीन डिस्कसिंग ना, सारे के सारे एक सेकंड में खड़े हो जाएंगे। वैसे ये बात सही है आपकी अक्षय भाई, लड़की से ज्यादा लड़का कन्वर्ट हो जाए तो बहुत आसानी रहेगी बहुत उसकी। ज्यादा आसान है। लड़की को देखो तो ना, बहुत अपने को झेलना पड़ेगा, टेंशन है कि भाई उसका बच्चा क्या दोनों का होगा, पैदा लड़की का होगा। फ्यूचर क्या होगा। लड़का कन्वर्ट हो जाए हाँ, तो कि बहुत आसानी हो जाएगी बहुत आसान है, जी बड़ा मैं सिंपल है। क्योंकि देखो उनके तरफ से तो लड़की को तो आप ब्याह के ला नहीं सकते हो। नहीं अगर लाए तो मतलब इट इज अ मैं टिकिंग टाइम बॉम्ब दैट यू आर गेटिंग इनटू योर हाउस। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये रूम जो है ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट द गर्ल्स मैरिंग इनटू मुस्लिम फैमिलीज, इट्स अबाउट एवरीवन, लाइक मतलब इवन कुछ द भी हो सकता बॉयज, है, या no, इवन but द the बॉयज। boy also सो marrying a Muslim girl, and you bring her to your house, it's a ticking time bomb. We all saw what happened in Hyderabad in broad daylight, no? राइट, See, वो तो मतलब बेवकूफी होगा कोई बंदा जो मुस्लिम लड़की को ले आएगा और फिर सोचेगा कि मैं जिंदगी काट लूंगा इसके साथ पूरी। बट अक्षय तो भाई वो, हम ना हाँ, थोड़ा आगे पहुंच चुके हैं, जहां हमने प्री मैरिज, अब पोस्ट मैरिज की बात हो रही है। तो पोस्ट मैरिज अब शादी हो चुकी है, बोथ ऑफ देम हैव डिसाइडेड टू गो बाय, लेट्स अज्यूम, स्पेशल मैरिज एक्ट, और अब वो शादी में हैं। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अब क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं, बिकॉज पीपल हैव टेकन डिसीजन, पीपल आर टेकिंग डिसीजन, दे आर मैरिंग। तो एक हमने आइडेंटिफाई किया कि निकाह के लिए तैयार नहीं होना है कभी भी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा हमने ये भी देखा कि कहीं वो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, let's assume you said that I'll be a Hindu, you will be a Muslim, we'll continue. If your practices are being encroached कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम idol worship नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तो these are also red flags. What else do you think, and in which the help should be sought? क्योंकि अब तो हो गया ना, शादी हो गई है, हम उस स्टेज पे हैं while we are discussing. तो what are the red flags where a girl or a boy should think that I should come out? And especially we are talking about अच्छा girls because नीरज they're जी, more आई vulnerable. वांट टू ऐड वन पॉइंट. दिस इज अ स्मॉल स्टोरी, जस्ट मैं एक ही मिनट लूंगी. सो दिस वाज वन ऑफ माय ओन फ्रेंड जिसने ये मुस्लिम लड़की भगाई थी. आई एम नॉट किडिंग यू. उसको लिटरली उन्होंने पकड़ लिया एक टाइम पे एंड इतना पीटा उनको. ये शिवाजी नगर एरिया लिटरली एक घेटो है. आई डोंट लिव देयर, वहां से बहुत दूर रहती हूँ, बट इन बैंगलोर उसको इतना पीटा, पीट पीट के उसको मुर्दा समझ, उनको लगा कि मर गया तो मुर्दा समझ के छोड़ के गए. एंड वो लड़की की पहली शादी हो चुकी थी एंड वो शादीशुदा औरत, उसकी पहली शादी हो चुकी थी. उसका हस्बैंड उसको पीटता था, सिगरेट जलाता था उसके हाथ में. एंड ये लोग पता नहीं किसी एंटी सीए प्रोटेस्ट पे मिले एंड इनको प्यार हो गया. एंड फिर ये जब लड़की डिवोर्स लेके जैसे भागी तो अब उसके पेरेंट्स, उसके पहले तो उसके क्या बोलते हैं, मायके वालों ने, फिर उसके ससुराल वालों ने लगा दिया. एंड सॉरी, डिवोर्स भी नहीं हुआ था, मायके वाले एंड ससुराल वालों ने लगा दिया. एंड इसको लिटरली पीटा, इतना पीटा कि मुर्दा समझ के गए. बट फिर इन्होंने पता नहीं कैसे वापस कांटेक्ट किया एंड ये दोनों, एंड उस दिन मेरे को कॉल किया था रात को. एंड ये दोनों लिटरली बैंगलोर से भाग गई बॉम्बे. एंड बॉम्बे में रहे ये लोग, क्राउड फंडिंग करा के इन लोगों को किसी तरह जिंदा रखा कम से कम 6 महीने. कोविड का टाइम, वो भी समझिए, कौन पैसे देता है कोविड के टाइम में क्राउड फंडिंग में. उसके बाद जब ये सब हो गया, उसके बाद फाइनली किसी तरह ये लोग, मतलब लड़की के बाप ने, मतलब मायके वालों ने कॉल करके बोला कि एक बार मिल लो हमसे, हम माफी मांगते, जो भी हमने किया मिल लो हमसे, एक बार मिलो. जब मिलने गए, इनको इस बात का तो कंफर्म था या तो जिएंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे या तो हम मारे जाएंगे. एक्सेप्ट किया एंड ऑफ द डे में. बट पता है क्या, वो सिर्फ 6 महीने तक चला बिकॉज लड़के को इन्होंने कन्वर्ट करा दिया इस्लाम में. अब उनका निकाह हो गया है, अब उसने कन्वर्ट कर लिया. 6 महीने तक सब चला कि बेटी के साथ वो लड़का रहता था एंड एक साथ लिव इन टाइप, जो भी बाप आके देख के जाता. मैंने उसके बाप को खुद देखा है. बट 6 महीने बाद क्या हुआ, लड़के को बोला कि चलो निकाह कर लो, तो निकाह के लिए कन्वर्ट कराना पड़ता है. एंड कन्वर्ट कर लिया उसने निकाह कर लिया. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. या तो आपको मुर्दा समझ के फेंक के जाएंगे या तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कन्वर्ट करा के ही छोड़ेंगे. ऐसे नहीं होता. एंड दिस इज माई ओन फ्रेंड, उसकी स्टोरी बता रही हूँ. मेरे को याद है 3 बजे रात को कॉल आया था.
Yeah, sorry guys. Anyone wants to add, please go on. मैं एक ही मिनट में वापस आई. There is a glitch. ब्रह्मा जी आप कुछ कह रहे थे, डू यू हैव एनी? अल्लाह के नाम पर ऐसा है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी बातें हैं संसार में छिपी हुई हैं। इस्लाम के अंदर एक औरत नहीं होती, इंसान नहीं होती, वो एक ऑब्जेक्ट होती है। उसको औरत एक इज शैटल के रूप में ट्रीट किया जाता है, शैटल, लाइक मैंने उसको। आपको हाँ जी, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था ना, औरत इज अ डेरोगेटरी वर्ड हाँ, इटसेल्फ। वो औरत कह लो, नारी कह लो, स्त्रीलिंग कह लो, कुछ भी कह लो, विमेन कह लो। कहने का मतलब यह है, द पीपल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, अ मैन वुड मैरी an object, and that is the reason a man could hold many objects. बहुत सारी कारें इकट्ठी कर ली गैराज में। औरत का जो उसकी कोई पावर नहीं है, इसलिए शी इज नॉट ट्रीटेड एज इक्वल इन इस्लाम। यू ऑल नो दैट। उसका दिमाग भी आधा माना जाता है। इफ आई एम ए वुमन, पहली बात तो मैं जाऊंगा नहीं उस खेमे में। सेकंड, मैं भागूंगा विद और विदाउट शूज, जूते मिले ना मिले, मैं बहनचोद भाग जाऊंगा जितना दूर हो सकेगा। बिकॉज अल्लाह मेहरबान करे मेरे पर कि मुझे बचा ले इस दर्द से, क्योंकि आई विल बी रिड्यूस टू अ शैटल। तो ऐसा है दोस्त कि मैंने दोनों तरफ की बातें देखी हैं। एक मेरा दोस्त है, प्रोफेसर है फ्लोरिडा लॉ स्कूल में भी। उसने एक अफगान लड़की से शादी करी। उसने कहा मैं पेपर साइन नहीं करूंगा। उसकी लड़की ने शादी करी, उसने मुसलमान बन गया वो शर्फ शादी के चक्कर में। नहीं तो लड़की वाले कह रहे थे हम शादी नहीं होने देंगे। वो कहाँ टिक रही थी, पर चली नहीं बात, कहानी हुई नहीं, फिर हो गया, कहानी खत्म, तलाक। दूसरी एक औरत है, मैं जानता हूं उसको, मेरी बहुत क्लोज फैमिली के लोग हैं, पाकिस्तान के हैं। उसने 3 शादियां करी, 3 मुसलमान बनाए, एक के थ्रू बच्चा भी हो गया। अब वो बड़ी फेमस है, बॉलीवुड में भी फेमस है वो लड़की, उसका नाम नहीं लूंगा मैं। तो एक तो नॉर्वे के बंदे से शादी करी, एक अमेरिकन से बंदे से शादी करी, तीसरे को मैं जानता नहीं हूं। अब वो बच्चा भी, वो कहाँ टिकने थे, वो मुसलमान बन गए थे। एक अब बेटा है, बेटे को रेज किया जा रहा है मुस्लिम, क्योंकि माँ का ही वो होता है ज्यादातर। लेकिन ये जो विशाखा ने एग्जाम्पल दिया, दैट एग्जाम्पल वाज, वो उसका है, क्या बोलते हैं, इस्लाम का है। वो इस्लाम ज्यादा जरूरी है, बेटा बेटी जरूरी नहीं है। इस्लाम बचना चाहिए, बात बेटे बेटी की नहीं है। बेटे बेटी को तो मार दिया जा सकता है, लेकिन इस्लाम बदनाम ना होए। तो दिस इज अ concept of numbers. बट ब्रह्मा जी I was just मेरा एक I दोस्त was था, just reading. I'll give a concluding stuff today, इसमें which मैं आपको horrified me. एक आइडिया बताता हूँ। अगर जो कोई लड़का हिंदू हो, But I'll just finish my ब्रह्मा trip. फिनिश, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि रूम में अभी ये डिस्कस हो रहा है कि व्हाट इफ यू हैव ऑलरेडी मैरिड, यू आर इन ए रिलेशनशिप, यू बता तो दिया, जूते हो ना हो, दरवाजे खुला ना, खिड़की से कूद जाओ, भाग जाओ जितना दूर भाग सकते हो। पर रेड फ्लैग अल्लाह तो कुछ दिखे अल्लाह ना। तुम्हें ग्रेस दे, अल्लाह तुम्हें ताकत दे। हैं? नहीं, रेड फ्लैग्स की बात हो रही है कि क्या क्या देख के आप भागेंगे, मतलब व्हाट चेंज पहली अरे भाई वो बोल रहे पहली पूरा का बात तो पूरा वो को इस्लाम ही रेड बुरा फ्लैग। सपना था। एक मिनट में बताता हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पर है, वो भागा था, तो उसने सबसे पहले तो, लड़की मुस्लिम थी, वो हमारा यहाँ का ये, तो सबसे पहले सीक्रेटली दोनों ने रजिस्टर के वहां जाकर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करी। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। शादी होने के जब मैरिज सर्टिफिकेट बन गया दोनों का, तो वो 2 महीने बाद भागे।
तब लीगली वो तो हस्बैंड वाइफ हो गए। तो मतलब लड़की वाले मुस्लिम हो या आईसिस के आतंकवादी हो, किसी के बाप की ताकत नहीं होगी उन दोनों को अलग करने की, ठीक है। तो इनको पता था कि ये होगा, जो दोनों भागे तो लड़की के मायके वाले जो कि मुस्लिम थे इनको पकड़कर वापिस लाए, लेकिन इन दोनों का ऑलरेडी जो कि मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका था, लीगली हस्बैंड वाइफ थे। तो लड़की के ऊपर ऑब्वियसली वो किडनैपिंग की धारा नहीं लगी। हाँ, अगर जो कोई लड़का भगा जाए ना लड़की को, तो ये लोग लड़की को दबाएंगे, कुछ भी मारेंगे, पीटेंगे, गलत स्टेटमेंट दिलवाएंगे कि बताओ, ये कहो कि इसने मुझे रेप किया और इसने मुझे भगा कर ले गया, ठीक है। तो जो लड़का भगा कर ले गया कि उसकी तो लीगली भी बैंड बजेगी, और वो उनके तो लफंगे होते हैं मारने के लिए रेडी बैठे हो, तो लड़के की जान पर बनाएगी। तो अगर आपको भागना ही है तो सबसे पहले सीक्रेटली मैरिड कर लो ऑन पेपर लीगली, उसके बाद भागो। और आप मतलब आपके पास वैलिड पॉइंट रहेगा, और आपकी जो लड़की है उसको ले जाए इसको जबरदस्ती, और आप हर्ष दोनों को अलग कर दे। सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, वो सब बहुत अच्छा लगता है सुनने में ऑन पेपर, एंड ऑन पेपर वो सही भी है कि कोई माइका लाल हाथ नहीं लगा सकता। इनफैक्ट आप कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर भी ले सकते हो। हाँ, बट उन्होंने यू नो लिया था। हाँ, बट यू नो होता क्या है ऑन ग्राउंड। फॉर एग्जाम्पल आप सत्यमेव जयते, आई थिंक वेरी बैड एग्जाम्पल, बट स्टिल इट विल वर्क इन दिस केस, इट विल वर्क। उसका एपिसोड आप देख लीजिए, आई थिंक लास्ट सीजन का, जो लास्ट सीजन आई थिंक एयर हुआ था 3-4-5 साल पहले। जस्ट वॉच द लास्ट सीजन का ये एपिसोड ऑन इंटरफेथ लव। उसमें दोनों टाइप का दिखा है, एक हिंदू सॉरी एक मुस्लिम लड़का था जिसने हिंदू लड़की से शादी की थी, तो उसके मतलब कलकत्ता के बहुत रईस थी वो लड़की, तो उसके पेरेंट्स ने इस लड़के को मरवा दिया क्योंकि ये प्रोफेसर था, यू नो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब करता था, मरवा दिया, उसकी लाश पटरी पे मिली। तो वो साइड भी दिखाया। साथ ही साथ एक मुस्लिम लड़की जिसने हिंदू लड़के से शादी की थी, वो वाला भी दिखाया। इनफैक्ट उसमें ये दिखाया कि हाँ, उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर ली, लड़की भाग गई आदमी के साथ, उसका एंड कोर्ट से उनको ऑर्डर मिले हैं। ये सत्यमेव जयते में है, वो दोनों बैठे भी है, एक लड़की वो पीली साड़ी में एक औरत होती है। उस वक्त हरियाणा का ये केस था, आई थिंक हरियाणा के कोर्ट ने ये कह दिया कि इनको जहाँ तक जाना है इनको छोड़ के आइए, एंड इनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इन लोगों ने जैसे उनको छोड़ा, इन लोगों ने पकड़ लिया उनको, एंड किसी और स्टेट की पुलिस ने इनको अरेस्ट करवा दिया इनसे कह के, एंड फिर लड़के की टांग तोड़ दी, पूरी तरह से मतलब हैंडीकैप कर दिया उस लड़के को। ये अभी भी आप गूगल करोगे सत्यमेव जयते के एपिसोड में आपको इजीली मिल जाएगा। लड़के की टांग तोड़ दी एंड उसको ऑलमोस्ट मार ही डाला था, बट अगेन सोच के गए कि मर गया बट जिंदा था। तो ऐसे ऐसे करके तो इतने सारे केसेस हैं। तो हाँ, एक बॉटम लाइन ये है कि इस्लाम में इट्स अ वन वे ट्रैफिक, ब्लड इन ब्लड आउट। आप जा सकते हो, खून खराबे से जाओगे तो उसी प्रकार से खून खराबे से बाहर, और आप जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते। तो ऐसा है दोस्त, किसी को बुरा नहीं लगेगा अगर आप मुसलमान बन जाओ, सब ठीक हो जाता है। सब मुसलमान बन जाओ एक मुसलमान के साथ, मुसलमान नहीं बदलेगा अपना धर्म, वो नहीं बदलेगा। मैंने तो देखा नहीं बॉलीवुड में कोई एक्टर, आमिर खान, वो दूसरा वो जो गधे की नाक वाला है, उसका नाम भूल गया मैं, एक और खान है तो वो सलमान खान, नहीं दूसरा है, शाहरुख खान, अजीब सी शक्ल है उसकी, सैफ अली खान, शाहरुख खान क्या नाम है, दोनों ने हिंदू लड़की से की है, बट हाँ या जो भी पता नहीं, लेकिन ये बदलते नहीं है अपना। बट ठीक ऐसा है, अल्लाह के नाम पर सच्चे हैं तो अल्लाह के नाम पर सच्चे रहने दो, उनको छोड़ो। जिनको जाओ है तो रास्ता ही अलग है उनके रास्ते सही हैं। प्रॉब्लम आती है जब आप यू वांट टू मेक योर लाइफ मोर कलरफुल। कलर ये मोहब्बत वगैरह अपने हाथ की बात है। You have to control yourself. You can't be falling in love with anyone and everyone you see. रोड पे चलते हुए, फिल्म में देखते हुए। बट ब्रह्मा जी हम उसके अगेंस्ट नहीं है, हम सिर्फ ये just try to identify the red flags and create a checklist for the biggest red flag is you meeting someone who is a Muslim. A Muslim, मुसलमान अल्लाह का पक्का बंदा है, वो अल्लाह से दूर नहीं जाएगा, उसकी बात की इज्जत करनी चाहिए। भाई लीव यू अलोन, तेरा रास्ता तो अपना रास्ता ठीक है।
तुम अगर ये सोचोगे और मैं इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मिस्टेक है। ये जो अच्छा सिस्टम है ना, ब्रह्मा जी, ये सारी, ये सॉरी टू इंटरप्ट, ये सारी बोले पॉइंट्स टेकन। सो हमने अभी 3 एस्पेक्ट्स पे बात की। पहला एस्पेक्ट कि बिफोर मैरिइंग व्हाट आर द रेड सिग्नल्स दैट इट इज अ जेन्युइन रिलेशनशिप और अ लव जिहाद। वी स्पोक ऑन दोज। आई डोंट वांट टू रिपीट बिकॉज पिछले 2 घंटे से चल रहा है रूम। सेकेंड एस्पेक्ट हमने ये बात की कि शादी आपको किस तरह से करनी है। दैट आई वुड वांट टू रिपीट because the best way is Special Marriage Act. Why? Again, it prevents, if you are married under the Special Marriage Act, आपका पति जो नया मुसलमान पति है वो दूसरी बीवी नहीं रख सकता। स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर उसने किया तो उसको 7 साल की जेल हो जाएगी। दूसरा, आपको इक्वल राइट टू डिवोर्स मिलेगा। जो अगर आपने निकाह नामा साइन किया तो आपको डिवोर्स, आप डिवोर्स दे नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई मैरी अ गाय, आई कैन जस्ट बी लाइक, fuck off, I'm giving you a divorce. But if it is under the nikah nama, I can't give him a divorce like this. I have to say, can you please give me a divorce? And अगर वो नहीं माना, and most cases में नहीं मानते, अगर वो नहीं माना, then you have to go to a qazi, and there again वो पूरा hearing होगा कि divorce देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, and वहाँ पे भी guarantee नहीं है कि आपको divorce मिलेगी. Point number 2, you will have better succession rights, and you will the rate of even alimony is much higher of you getting if you are married under the Special Marriage Act compared to the Sharia Act in India. And very important thing, if you have done the Special Marriage Act, do not do a nikah nama later on. बहुत सारे केसेस में होता है कि हाँ स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी हो गई, समझ लीजिए अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होगी, फिर लड़का और उसकी फैमिली कुछ सालों बाद बोलेंगे आप निकाह पढ़ लीजिए, हमारा भी दिल रख लीजिए। बेवकूफ़ी में मत पढ़ना। द मोमेंट यू रीड द निकाह, ऐसा है कि एक मिनट ब्रह्मा जी एक मिनट। द मोमेंट यू रीड द निकाह, द स्पेशल मैरिज एक्ट गोज नल एंड वॉइड। सो जितने भी आपको प्रोटेक्शंस थे कि 4 शादी नहीं कर सकता, वो आपको इक्वल राइट्स टू डिवोर्स मिलेगा, प्रॉपर्टी, एलिमनी, सब खत्म हो जाएगी द मोमेंट यू डू निकाह। एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय सेवरल हाई कोर्ट्स। सो इसमें कोई बहस रह नहीं गई है। सो दीज वर द 2 वार्निंग साइंस। सो वी डिस्कस्ड अबाउट बिफोर मैरिज, when you're getting married उसमें क्या करना चाहिए, and after marriage. Now the other aspect which is the very important aspect that everyone wants to discuss is, for example, मान लीजिए सिनेरियो कि आफ्टर मैरिज में जो आपको डर था वही हुआ, कि वो आपको फोर्स कर रहे कन्वर्ट करने के लिए, आपको मार रहे, पीट रहे। इन दोज केसेस व्हाट शुड यू डू, एंड हाउ शुड द गर्ल्स फैमिली, दैट इज उनके मायके में, बिकॉज इन मोस्ट केसेस लड़की को डिसोन कर दिया जाता है, उसके मायके में कैसा एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन दिस थिंग। नीरज जी, Can इज इट I ऑल can I राइट? come in? हाँ हाँ Himanshu ji, हिमांशु जी, गो ऑन। Okay, so I'll never speak between marriage of two adults. I have seen a lot of these cases, but 2 offers I am giving. If a girl is in distress in such a situation, they can either DM me or send me a back channel on Twitter. I will save the girl at any cost. And if a family is going through this, a father needs help, I am there. Other than that, I will never speak in their marriage because knowingly they jump in this well. So I can't say anything. Thank you, Himanshu That's ji. a good thing, Himanshu ji. Yeah. And And anyone else? एक point, Himanshu ji, what we are trying to do here is try to find out the red flags when they should approach you. अरे इन लड़कियों को सब पता होते रेड फ्लैग। वैसे वो बात आप करने वाली थी विशाखा जी कि शादी के बाद तो लड़की के मायके वालों ने तो उसको मतलब छोड़ ही दिया होता है, तो ऐसी स्थिति में वो लड़की क्या करे, क्योंकि नहीं, मायके वाले को तो बैकअप ऐसी रहेगा स्थिति नहीं। में हम लोग हेल्प करेंगे। और आप शायद गुजरात में गए हो। Himanshu हरीश, ji, your voice is cracking. Kindly fix your network. बस 2 मिनट में मैं आपके पास वापस आती हूँ। सो या इन दैट केस, पहली बात तो आई वुड सजेस्ट पेरेंट्स नॉट टू डिसोन योर किड्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो नीरज जी ने कहा कि बहुत केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं मानते एंड तक। अब ऐसी सिचुएशन ना हो जाए कि बच्चे ही भाग जाए आपके घर से। सो बेटर इज, अगर नहीं मान रहे कि फॉर एग्जाम्पल, okay, this is said, okay, let's take an example of my own life. My mom has said, किसी से भी शादी कर लेना, ऊंची नीची जाति कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सिख हो, किसी से भी कर लेना, सिर्फ मुस्लिम से मत करना।
And she has a reason for saying that, because of course we know how the Shariat Act is drafted in India. You don't get rights. So if, take an example, I was a very ziddi person, I would be like, nahi mere ko isi se karni hai, isi se karni hai. The best thing would be for my mom is कि special marriage act में करवा दो, क्योंकि in most cases जब कोई भाग जाता है घर छोड़ के, उसको निकाह पढ़वा देते हैं. So that is even more dangerous for the woman, कि अगर आपको निकाह पढ़वा दिया, भाई आपके तो सारे protections गए. So first would be that, and second would be in case वहाँ पे उस लड़की के साथ शोषण हो रहा है किसी भी तरह का, then it is time for the girl's family side. You might have hundreds of complaints कि क्यों की शादी, but that time it's up to them to stand up and bring the girl back to their home. That has to be the family side. You can't be ignorant. But in case, worst case scenarios, family ने पूरी तरह से disown कर दिया, then in those cases, Bajrang Dal, VHP and all these organizations are working very hard. There is a woman called Kajal Hindustani. You can Google her. Anytime you contact, एक second, please don't pull up Jai Sharma, this Baman Buster. Yeah, please don't pull him up. So in those cases, when your family has disowned you and you're getting tortured in your in-laws house, that is the Muslim household, either to get convert, जैसे कि वो कौन थी नीरज जी, जो वो पारसी औरत थी जो वाजिद खान की वाइफ थी, I'm forgetting. Kamal Rukh Khan. हाँ. So in that case, she was getting tortured, right? It was up to her mother's family to come and, her, Maika to come and stand with her. But in most cases, जब ये नहीं होता, the best is to contact Hindu organizations like Bajrang Dal, VHP, RSS, or any Hindu Vahini. बहुत सारे organizations हैं, they will help you in rehabilitation, getting you jobs. In fact, if you see Kajal Hindustani ke interviews on YouTube, she even helps women to get jobs in government posts. So these are the best ways for now, but the best option would be that parents do not disown your kids, because once you disown, what happens to your kids? Kajal Hindustani. Mira, you're breaking. अच्छा, मैं एक बात रखना चाहता था, if you permit me. हाँ जी जाइए अमित सर. जी, एक बस ये मैरिज का बात चल रहा है ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा रियल लाइफ केस है, वो बता रहा हूँ. मेरे फ्रेंड है, उसके काका मतलब चाचा चले गए अमेरिका. उन्होंने एक अमेरिकन से मैरिज कर ली, फिर उनकी फैमिली आगे बढ़ी, जो उनका बेटा हुआ उसने फिर जापानीज से शादी कर ली, और अब उसकी बेटी भी अभी बड़ी हो गई होगी. तो मैं जस्ट ये रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ इस केस को, कि इस केस में क्या स्पेशल मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगा इस तरह के मैरिज में, जो इंटरनेशनल मैरिज होते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ. एक बात, अगर जो वो सिटीजनशिप त्याग चुके हैं भारत की, और अगर जो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बन चुके हैं, तो उस पर भारत सरकार के कोई भी कानून लागू नहीं होंगे. ठीक है, वो सिर्फ OCA कार्ड होल्डर रहेंगे. अगर जो उन्होंने सिटीजन रखी है इतने सालों के बाद रखने के बाद भी, तो वो जो जापानी से शादी की है आपके चाचा के बेटे ने, तो उस जापानीज को 7 सालों तक शादी रखनी पड़ेगी. उसके बाद वो इंडियन गवर्नमेंट उसको वैलिड करेगी, उनके मतलब वो मैरिज को. 2 टाइप है, सिटीजनशिप नहीं छोड़ी होनी चाहिए. सबसे पहली बात तो ये है. हाँ, एंड बार चैट में ये आ रहा है कि why is it only towards women, our room, because in most cases women are targeted into conversion. and जहाँ तक मर्दों की बात है, भैया तुम तो कन्वर्ट करो ही, तुम तो पढ़ो ही मत ये सब रिलेशनशिप विद द मुस्लिम गर्ल, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो boys who are into marriage with Muslim girls get killed, lynched, my bad, not killed, get lynched by the girl's family. It has happened multiple times. We saw a week back example in Hyderabad, what had happened. So पढ़ो ही मत in this case for boys. Simple suggestion. And not just वैसे क्या ये डर मुस्लिम लड़कों में भी नहीं होना चाहिए कि अगर जो हमने हिंदू लड़की की शादी की तो हर्षी, that's not the point. That's not the point. हाँ, हम लोग इस रूम को बेसिकली ये रूम एक्चुअली रिप्लेस, और दूसरा डिटेल डिस्कशन के फोरम में हम लोग जो भी रूम्स लगाते हैं, ये द आइडिया इज टू सो दैट पीपल कैन, when they listen to this room even after finishing, they can gain something out of it. अगर हम लोग केवल भावनाओं वाली बातें करते हैं, हम लोग हर फोरम्स में करते ही हैं, ये वाला फोरम स्पेसिफिकली हम लोग एक डिटेल्ड थ्रेडबेयर
एनालिसिस और डिस्कशन के लिए करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को वो उस तरीके की Exactly. डिस्कशन से बचना होगा। हाँ, Acha, Andolan ji, I'll just give one reset to everyone. So, in today's room, we discussed on 4 fronts. The first front was before marriage, what are the red signs? And one of the best red sign is, अगर वो ज़्यादा चू चपाट करे कि follow my religion, or start dressing differently, he's trying to change you. He or she, let's include the boys as well. He or she, if they are trying to change you, your ways, your beliefs, that is a big red signal that something is fishy. Second, if he has faked his identity, he or she, they have faked their identity, that is another big sign, because there are multiple cases. It was recently in Bihar, I think, a guy named Mohammed Rahim who had sex with a Dalit girl in the pretext of marriage and later did not marry her, saying that if you don't convert, I will not marry you. So these are multiple cases. So that is point number 2. Point number 3 is that anytime if it's a genuine love jihad case, they will try to proselytize you. They will try to break you from your social circles, whether it's your friend, whether it's your parents, whether it's anybody. They'll try to break you from from your own social circles. So those are the red flags before marriage. लड़कों के लिए बेस्ट सजेशन, भैया करो मत, कूट दिया जाओगे किसी दिन सड़क पे, which has happened. The dusra instance was, how do you get married? 2 options you have. One is the nikah nama, and I'm speaking specifically for Hindu women. One is the nikah nama, and यहाँ पे men have little bit leverage, because if a Hindu guy converts to Islam, तुम्हारे तो भाई फायदे ही फायदे हैं. So we are not talking about guys here. If it is a woman who is converting, remember, you are falling into a trap, because these are the things. And if anyone thinks this room is hate speech, be it, because the way you can proselytize your religion, even we can do it. So the 2 problems that you will have if you do, and jo ye leftists bhi mere ko kal bol rahe the ki if a Hindu woman wants to convert by her own wish, what is the problem? The problem lies here. Point number 1, if you convert to Islam and if you are doing a nikah, remember, if you are doing a nikah that is under the Shariat Act, you will have to convert. There is no option. You will have to convert. And when you convert, you open doors to all kind of atrocities on you. First, biggest thing is polygamy. Polygamy under the Islamic personal law in India is legal. So if I marry a Muslim guy by doing nikah, that is convert and then sign a nikah nama, my husband can have a second, third, fourth wife and I cannot object to it. Second disadvantage that I will be in is that I can't divorce him. He can divorce me anytime he wants. I can't divorce him. What I can only do is I can only ask for a divorce. And in that case also, if he doesn't gives me a divorce, I have to go to the हाँ, Qazi. विश जी, हाँ. एक छोटा सा इंटरजेक्शन। मेरे ख्याल से वॉइस बाउंस हो रही है, एक बार अपना स्पीकर ऑफ कर दीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये जो डाइवोर्स और खुला का है, इस पे हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन में एक रूम पहले रखा हुआ था। सो इफ यू वांट टू नो अबाउट इनइक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन with respect to dissolution of marriage in Islam, you can go through the discussion in that particular room. There's a threadbare discussion within the Islamic scriptures, how these two, nikah and khula, which are normally presumed to be the same, has huge difference, and that is basically unequal rights for dissolution of marriage. और just to add on to Vishakha ji's point, lot of people claim कि अगर लड़की अपनी consent से कन्वर्ट कर रही है शादी के बाद, तो प्रॉब्लम क्या है? इस पे एक बेसिक इशू आई सी, currently it is not covered legally, but I think there should be a initiative to make these kind of conversions illegal. बिकॉज अगर आप विशाखा गाइडलाइंस देखिए जो कॉर्पोरेट इंडिया में एप्लीकेबल होती है, इफ डिस्पाइट ऑफ द कंसेंट, इफ अ मैनेजर हैज सम काइंड ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिज सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट गर्ल और whatsoever, it is presumed that the manager or the supervisor is in position of power to
derive that consent. Same thing should also apply when a person of, specifically woman of other religion, marries into Islam. She is under the influence of authority of the family members and her husband to give that consent, maybe under force of society or fear of society, or to under vulnerability कि भाई बच्चे हो गए, अगर अब कन्वर्ट नहीं करा और कल को पति ने डाइवोर्स दे दिया तो क्या करेंगे टाइप्स. तो इसका एक प्रिजम्पटिव और डीमिंग प्रोविजन बनाना चाहिए, जैसे विशाखा गाइडलाइंस में बना हुआ है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंसेंट भी दे दी है और लेकिन पर्सन इज मैनेजर और सुपरवाइजर, it will still amount to rape. It will not be counted as consent if the woman later suggest otherwise. So at any given point of time, अगर कोई महिला विवाह के बाद, स्पेशल मैरिज एक्ट करने के बाद उसको फोर्स करा जाता है या इवन कहा जाता है कि उसने अपनी कंसेंट से निकाहनामा पे साइन करा. निकाहनामा पे साइन करने के 2 रिपरकशंस हैं. पहला तो ये कि यू वुड बी डीम्ड टू बी अ मुस्लिम. Andoji, can I As soon, continue here? हाँ, just last point 20 seconds. हाँ, सो क्या कहते हैं, निकाहनामा पे साइन करने का पहला प्रोविजन है यू आर अ मुस्लिम इफ यू आर साइनिंग अ निकाहनामा. Hence, all the provisions of Islamic Marriage Act starts implying to you, and you convert into a Muslim. Your husband gets the right to marry 2, 3, or 4. Your property right, your succession rights are all now, after signing a nikah are under the Shariat law. राइट. सो दिस को Yes. डीमिंग प्रोविजन एक बनाना चाहिए कि अगर कंसेंट लिया भी है आफ्टर मैरिज टू कन्वर्ट अ स्पेशल मैरिज एक्ट इनटू अ निकाहनामा, दैट शुड बी अप टू द लेडी टू रिवर्ट टू SMA any point of time, irrespective whether or not a nikahnama has been signed post facto. All right. One thing, I wanted to continue. Neeraj ji, just 2 minutes. मैं reset ही कर रही थी room को. हाँ. So I was saying. So the second aspect we discussed was as to how to marry, and the first thing was do it under the do not do a nikah. I was telling you what will happen if you do a nikah. First is you cannot stop your husband from having more than one wife. That is one issue. Second issue will be you cannot give him talaq. What you can give him, you can't even give him. What you can ask him is khula. Now khula means you're asking him to divorce you. Okay. And if he prohibits or if he refuses from divorcing you, when you have requested him, please divorce me, I don't want to live with you. If he refuses, you have to go to a qazi, and depending on which school of thought in Islam, Hanafis बोलते 3 साल तक अगर पति नहीं आया उस केस में तलाक दे सकते हैं. दूसरे school of thoughts बोलते 90 years, like that's crazy. Those issues will happen. So divorce, if you are marrying according to Islamic law or Shariat Act, is very difficult, especially if you're a woman asking for a divorce. However, your man can divorce you at any time. Third, your kids will have to be Muslims at any cost if you're marrying under the Shariat Act. You cannot inherit property, you cannot inherit alimony if you're marrying under the Shariat Act. So that is first option, and this does not seem like a good one. You have a second option. Now here are the benefits where all your rights are covered. Second option is the Special Marriage Act, which is of the 1954, which is on the top. And Yusuf, do not interrupt me, let me complete first. Under the Special Marriage Act, all your problems will be solved. Point number 1, which I raised, which will happen in a nikah, which will be covered under the Special Marriage Act. First point that I raised, which will be a problem for Hindu women if they marry a Muslim guy under nikah, is polygamy, that is having more than one wife. Under the Special Marriage Act, having more than one wife is punishable to 7 years of prison. That point is covered. Second, you will have equal right to divorce, not ask for a divorce. Under Islamic Shariat law, you can only ask for a khula, and if he refuses, you have to go to a Maulvi. Here, that is not the case. Here, you can divorce him. You will have equal rights to divorce. Third, you will have the right to alimony and property from him. So these things will be covered, and you can demand that your child will not be a Muslim. If you want, you can, but there is only one warning when you marry under the Special Marriage Act. That is, once you have married under the Special Marriage Act, do not get coerced into doing a nikah later on. For example,
Take an example, I marry a Muslim guy under the Special Marriage Act. Tomorrow, his family says, ki, you know, listen, we listen to your wishes, we fulfilled your wishes. Now, could you just keep our heart and, you know, do a nikah for us? That's our tradition. Do not fall into that, because every nikah is registered. And you know what will happen once you do the nikah? All your rights that you got under the Special Marriage Act will get dusted. You will have no rights. That will get cancelled completely, because now you are a Muslim and Shariat law will apply to you. So what are those laws? Your husband can have 4 wives. You can't stop him. You can, he can divorce you anytime. You can't Madam, even ask for it. actually, You can't even madam, divorce him. Wait, you are actually confusing. Yusuf, wait. Let me complete. Yeah. And last one aspect that we discussed was after marriage. After marriage, what are the red signs that this marriage is toxic? Point number 1, he's forcing you to convert. Point number 2, and this will happen, your child will be a Muslim. 100, there is not one single case, even a famous Bollywood celebrity, if anyone knows, please write it on the chat. I would apologize then. There's not even a single Bollywood celebrity who was a Muslim man who married a Hindu woman and his children are Hindus. No. Most cases they are Muslims. And you know what? If I am a mother tomorrow, I would be very hurt to see my child getting circumcised at a very young age, which happens in Muslim community. It is a very common thing. Whether it's a boy, in very rare cases, even women. Very rare cases, but women as well. But boys, mostly. So that right to protect him, protect your child from that, you will not have if you do a nikah. But under Special Marriage Act, you will have all these rights. So the best thing for Hindu women, if you're marrying a Muslim guy, is to register your marriage under Special Marriage Act. And if he is refusing, or his family is refusing to marry both of you under the Special Marriage Act, there is something fishy. And there is something fishy Yeah. because they either want to convert you or they have other ulterior motives. Right. So Vishaka, as you said, Special Marriage Act is very good, even for the Muslim girls. Okay, not only for the Hindu girls who are marrying into Islam, but for the Muslim girls also, because they do not have rights. It's a patriarchal society, as we all know it. I don't want to get into the details. Vishaka can talk on that, and she has already mentioned a lot of it. But it is good for the Muslim woman also, smart Muslim woman who wants to have rights over their children, right of divorce, right over the children's, right, property. They should go for the Special Marriage Act. That's all I wanted to add. And one more important thing, you can pull up Yusuf now. One more last important thing. In most cases, when there are, Hindu women, Yusuf, do not open your mic. Let me complete. I'll take 1 minute, then you can speak. In most cases, when Hindu women have married Muslim guys, most of the cases, the girl's side of the family, that is the Hindu family, disowns the girl. Now that is very dangerous, because once you do that, if there is genuine case of love jihad, where the girl is getting tortured into conversion, forcing her to convert, or her child is being forced to convert, those cases, that girl needs a family. And when she does not have a family, that girl her life is fucked. So in most cases, in my opinion, the family should not disown the girl. In fact, if there are for example, I gave you my example, if tomorrow I am very rigid कि मेरे को इसी मुसलमान लड़के से ही शादी करनी है, if my parents come to know at a situation कि भाई this person is very serious, अगर नहीं माने तो ये भाग भी जाएगी, in those cases the best thing for parents to do is get them married under Special Marriage Act. It's better than them running away, or when they run away, in most cases the girl is put under a nikah marriage. So when that happens, all her rights, all the problems that we just listed down, 4 wives, not having right to divorce, not having right to property, not having right to alimony, everything will fall on your daughter. So if you know a situation that your daughter can flee with the guy, the best is get them साथ में जाओ, शादी करा दो under the Special Marriage Act, कुछ होगा तो वापस ले आना. That's the best thing you can do. And last one thing, worst case scenarios, when women, and this happens most of the times, when women's family ने completely disown कर दिया लड़की को. Let's take the worst case scenario. अगर it happens, the best is that woman contacts any Hindu organization like the RSS, the Bajrang Dal, the VHP, Hindu Yuva Vahini,
Any such organize or any women's organization, they'll help you get a job, they will give you, they'll rehabilitate you, they'll help you in rehabilitation, they'll find you a government job. You know, Kajal Hindustani does that. So she is a woman, you can find her on Twitter. So these are the precautions that you need to take, and even the girl's family, to be very honest. I think Neeraj ji, you will agree. Yeah, I Yeah, agree, Vishakha. So let's go to Yusuf now. Yusuf, go Actually, ahead. I was listening that Mullah Vishaga, and she was saying that that in Islam, that the property she mentioned. Let me start with the property, right? And she said that that as per Sharia, I'm not talking about Islam, I'm talking about Islamic Sharia law, which is right now yeah, in Sharia India law, run by okay, the but as per the Sharia law, that Shariat Act. yeah, inheritance, property inheritance, when a woman, you mean that women do not have either the property inheritance or property right? That was what she said. And first place, I wanted to answer her, and that is a wrong statement. First place, and I think either she is ignorant or she deliberately do not want to disclose. The fact of the matter is that actually that a woman, actually that I mean that a daughter entitled to have a property, half of the property, not full I'm property. For talking about example, the wife. I'm talking about the wife, yeah, Yusuf. wife will get one seventh, 1/3. 1/7, Yeah, I don't need 1/7. 1/7. Thank you. There is, that if there is a six children, in that context, that if 1/7 she is inheriting her husband's property, and other than that, her father property also, half of the father's property also inheriting her. And that in Islam, so while we are that marrying our daughter, we will give the dowry also. So that is a very lump sum amount. Therefore, actually, that that time, for example, the girl will get a dowry, but whereas the boy will not get a dowry. I mean that that the dowry will get from his wife only, but that for marrying in the I mean that that boy we don't, boys will not give dowry to the bride. So that context, actually, that is only the reason that inheritance property, that the girl is getting half and the boy is getting full. I mean that one, what is that ratio I am talking about. So another This thing she proves said my that point. that four wife, yeah, four wife. Actually, reality, if you look जिससे at भी एक बात बताओ, कोई No, मुस्लिम no, wait, लड़का wait, wait, wait. Let him no, let answer me this. complete. You are either you, brother. That at least you should listen others also, or you just tell that I will do Go on, monologue. go on. Sorry, go on. Yeah. Yeah. Other things she mentioned that Muslim, all Muslim men are having a more than four wife. Therefore, actually, you should be very cautious while marrying a Muslim man. And another thing she mentioned about that special marriage act. Like first place I am disagree with her, because I am against marrying. I am against interfaith marriage, because that being a Muslim, I feel that that a Muslim should marry only Muslim only. And even that actually if somebody marrying a Muslim man or Muslim girl is marrying another faith fellow Sorry, who Yusuf, is, I muted you. This is wait a minute, wait a minute. This is not what we are talking about, your opinion or my I'm opinion. not, I I'm have not coming to given the my conclusion, madam. Yusuf, I'm not talking about that. Is Yusuf, I asked you to anybody wait. is Please which do not anyone open can your marry mic. anyone. Yeah, just 1 second. I'll pull you up. So the point of the discussion is not about what our views are, what our morals are, whether we support interfaith marriage or not. I personally do not support, especially interfaith marriage with Muslims. Christians and Buddhists and Sikhs to fir bhi chal jata hai, but not with Muslims. But we are not talking about what your alternative worldview is, Yusuf. We are talking about legal routes as to how to keep Hindu women safe when they are marrying into Muslim families. And yes, as you acknowledged, under legal routes, if a Hindu girl goes through the Shariat Act and does a Nikah Nama, she will have no protection as to she cannot stop her husband from having 4 wives, which is not the case with Special Marriage Act. Under the Special Marriage Act, if a Hindu girl has married a Muslim guy, she can stop the guy from having 4 wives. So yes, Special Marriage Act is better. Now, I am not asking for your personal views here. So yeah, if you want to contribute something on the topic
as to how Special Marriage Act is better or for worse, you can, but we don't want a morality lecture as to whether interfaith marriage is good or bad. That is not the topic of the room. अच्छा, एक लाइन कहना चाहता था मैं आई। हाँ जी, go on Amit ji. जी 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 जी, थैंक यू। तो मॉड्स और जितने भी सुन रहे हैं, जो मॉड्स की जितनी बातें, मॉड्स और जितने भी स्पीकर हैं, उनके बातें सुनकर मेरे अंदर का लिब्रांडो जाग गया है और वो बोल रहा है कि वो ज्ञानवापी में मैरिज काउंसलिंग सेंटर बना दें। Okay, that's interesting. Not a bad idea. But अच्छा विशाखा जी, आई हैड वन कमेंट टू मेक कि जैसे किसी को कोई इन्फेक्शियस बीमारी या डिजीज़ है तो उससे हम लोग क्वारंटाइन करते हैं, उनको अलग रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कुरान और हदीस पढ़ा है और देखा, आप लोग सब लोगों ने एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छे अच्छे दिए। तो ये इन्फेक्शियस बीमारी है तो उससे लोगों को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमको जैसे वैक्सीनेशन करते हैं तो वैसे वैक्सीनेशन सेफ ऑप्शन नहीं होगा, मतलब कि सारे नॉन मुस्लिम्स के लिए। हाँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो, बीमारी के लिए तो आप वैक्सीनेशन करते हो, लेकिन अगर आपको बीमारी लग गई, ये रूम वो है कि सपोज आपको बीमारी लग गई है तो उसमें आप क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या आप फॉलो करेंगे। अच्छा, नहीं तब ठीक है। No, the point is कि देखिए सर, हमारे वर्ल्ड व्यू कुछ भी हो सकते हैं। वी नो लव जिहाद इज अ रियलिटी। नाउ मोस्ट केसेस में होता है या नहीं, अभी तो उसमें कोई डेटा नहीं है, बट जितने केसेस वी हैव नोटिस, देयर हैव बीन मोर देन maybe 500-600 instances of love jihad in the past 5 years. Actually, everyone should check out Swati Goyal Sharma from Swarajya. She has covered meticulously about each and every small incidents of love jihad or grooming jihad. Now, जब ये हो रहा है, this is reality of our society. We can prevent it. Sure, we can. But again, it is happening. So how do you prevent it? So we spoke on 4 fronts. First front was before marriage, that these are the red signals that I have repeated 3 times. Abhi mere ko khud hi yaad nahi aa raha. Second was during marriage, what you have to do is to adopt Special Marriage Act. Do not adopt nikah marriage, because in that you will lose your every right as a woman. Your property rights, your alimony rights. You cannot prevent your husband from marrying 4 wives. At the same time, you will have no custody rights of a child is difficult. Giving a divorce to your husband is difficult. So that's the reason Special Marriage Act is better, far better than nikah marriage. Second, but the only warning signal with Special Marriage Act is once you have done Special Marriage Act, do not, in any case, no matter how much there is a emotional turmoil or emotional manipulation for you to get converted to do a nikah marriage, do not do that, because once you do that, the special you got, the protection that you got under the Special Marriage Act gets cancelled, because now you're a Muslim. Because to do nikah, you have to convert. And once you have done the nikah ceremony, you are officially a Muslim, and all your rights is cancelled. Now Shariat law will apply to you. So now your husband can marry 4 wives, he can give you talaq and throw you out of the house. Alimony, very difficult, you can't give him divorce, etc, etc, etc. So there's a lot of issue. So that's the reason Special Marriage Act is the way. And the second way is do not convert once you have done Special Marriage Act. And the fourth spectrum through which we saw today's topic was, in case if it has happened, what are the red signals that you have to get out of the marriage? The third aspect that we spoke is, we gave you multiple examples. If he is trying to forcefully convert you, in most cases beat you. We saw Wajid Khan's wife example, how she was beaten by her in-laws to convert. Those are the signals that you have to take your child, picking up and leave from that house. Get a divorce, leave. And the last case scenario is that your family has to be supportive. In most cases, the girl's family disown the girl the moment she marries outside the religion. And in those cases, you're putting an axe on your girl's neck, because anytime anything happens to that girl, no one is there to look after her. No one. So if any mishappening is happening with that woman, the best thing is family, because family is everything. If they are, worst case scenarios, if they are not available, if they are not having good relations, if they have completely disowned the woman, the best thing the Hindu woman can do is to contact Hindu organizations or women's shelters, like maybe Durga Vahini or
VHP or other women shelters as well. NGOs bhi bahut sare. They will help you in rehabilitation. NCW. NCW. They'll help you get jobs. Government jobs lagwa denge. I think Durga Yuva Vahini does that. I don't know if NCW does it, but jobs lagwa denge. And in most cases, they'll also try to counsel your parents and get them patched up. Can happen. So these are the things it has to happen. And in today's room, no one can even say that we are trying to spread some hate, because these are just cautious steps as to what you should know your rights as a woman when you're entering a interfaith relationship, especially an interfaith relationship with a Muslim guy, because this is what has happened in a good chunk of cases. Now, people will say, no, you don't have percentage as to most cases. Fine. In good chunk of cases, these things have happened. So how do you cover these things? We gave you multiple routes. Now, buddhi sab mein hai. I think people should just apply it. हाँ आंदोलन जी, वैसे मर्द लोग आज पूछ रहे थे कि मर्दों को हमने एक्सक्लूड कर दिया. आंदोलन जी, व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर देम? I think Andolan ji is not here. SM, do you want to say something? SM, Hira, Amit ji, Neeraj. Sorry, I had left the room for a while, so I just came back. So what are you guys talking about? Just Yeah, give so me we a are done. We are done. We covered the before marriage aspect. How do you get married once you get married? And if there are actual cases of torture against you, how do you prevent that? How do you get out of that marriage? And how your parents should respond. Those No, are the things. Vish, what you spoke about, support from the family, that is 100% true, because I know of a girl personally. She basically got with this Muslim guy through her friends. So she used to go to their place to study, and you know how their cousins and all hang out. So this guy got close with her and said, let's run away and all of that. And she agreed, and they went off to Goa. And that's when she found out that his entire economic status is very different from what was portrayed, and he was literally like not at all the way that the kind of family that she came from. Okay, whatever, she started living with him, but then they forced her to wear a burqa, and they started force feeding her beef, and she was a Gujarati Brahmin. She'd never even eaten egg, and beating her, and I don't know what all happened with her for 2-3 months. And her she had told her parents that she's doing what she wants to do. Finally, after 2-3 months, she called them up that I'm in trouble, like help me. And they were there for her. Luckily, they didn't disown her. She came back home and safe and sound. And of course, like in society, like they did look at her differently, and she's not married till date. She's having a lot of anxiety, and she's not gotten out of only that experience, the kind of dhakka that you get, that someone who you trusted and loved, this can happen to you, can get beaten up like this. So she's not yet out of it. She's not the same anymore, but parental like support is everything. So that was the only reason why she's safe and sound today. So I agree with you. Exactly. I mean, family is everything. You need to have a shield around you. But most of the time I ignore this person, but this is a genuine question. So his question is, of the 14 cases of love jihad registered by UP police, only 2 cases were by the women. Rest all were by the relatives. Yeah, because in most cases, women are not in a very good position to go to a police station and file a complaint sick. And what's your point by this? That it's a very minority of incidents. Well, even if it's minority, those women's rights must be protected, and that's why you need a law. वैसे तो if I use that argument, Hira, wouldn't that apply to domestic violence as well? Because only 40% cases of domestic violence. And also, sick, half of them are dead. You forgot them. No, forget that. Out of just 1 second, SM. If you use that logic that only out of 10, only 2 cases are true. By that logic, even out of 100% marriages, only 40% of husbands beat their wives. So it's actually a very minority. Majority of them don't. No, that's like that's way fine. of covering That's up. fine. SM, 1 second, yaar, 1 second. So I am saying minority cases hi hai na. Majority of 60% of marriages, women don't get beaten up. So what is your point, that we shouldn't have a law? What logic is this, yaar? No, Haan, see, sorry, one SM, thing go on. very clear, okay? No sort of domestic violence should ever be encouraged or should ever be accepted by anyone, be it if especially by a woman
who actually decides to get married, whether it's inter-religion, inter-caste, or having within the same faith, same caste of marriage, first and foremost. Secondly, do not keep your parents under your confidence. I'm sure today's time, things have changed. Bring them in your confidence so that anything happens tomorrow, your family is never going to abandon you. Thirdly, we should definitely encourage the Special Marriage Act. And if anybody actually wants to do an interfaith marriage, right, or intercaste marriage, like what they have written over here, I would say intercaste marriage, I think better would be Hindu, Hindu get married under the Hindu Marriage Act. But okay, it's your personal choice. But I would say we should encourage more of a special marriage act, and let people know that what are your rights, what are your things, and what are your going to be your advantages, legally, and everything else. So these are the few things that we need to do. And very rightly said, I think I should thank you, Andolanji, for keeping this room to create more awareness, so that the ladies know what their rights are, especially when they're choosing any of them, be it a man or be it a girl, especially to the woman. If they are choosing a Muslim guy as their partner, then she should be knowing where she is entering into, what is her future going to be, and what she can do to protect herself. I think this is something very, very important thing, no matter what. But you can never accept certain things. And I would say that, as we all say, our religion is also our identity, and we should carry it with the pride. And if you are going to do a next, if you're going to do an interfaith marriage, teach your kids both the thing, best of both the things, and let your kids, have a choice of accepting whatever they want, and let them choose where they want to go, where they feel they'll fit in, whether be it a Hindu or whether be it any other thing. And that, I think that's the thing I have seen right in front of my eyes, you know uh, a case of interfaith marriage, and they have been successful. They have been really successful. It's just that are you able to respect, are you able to accept the other person's And identity and is their the woman religion. being able to be as assertive as the man is about his religion? Exactly, exactly. So everything has to come as a package. So basically, you need to respect each other as a person you are, without asking them to change. That's the bottom line. Sikh, what's your point? That it is used to harass couples, so we shouldn't have the law. By Before that logic, we shouldn't have any law, Domestic Violence Act, 498A, rape laws. We shouldn't have any laws because it can be misused and it can be used to harass men. Is that your point? अच्छा सिक चैट बॉक्स में लिखते रहो या ऊपर आके बात करो, जैसा तुम चाहो। मैं कुछ पॉइंट यहाँ रखना चाहता था। And now मैं don't go to and एक last cheez Amit ji, and now don't go to the Hindu code law, because if you are blaming the right wing, हाँ remember we there is lot about we Nehru. normally Vishakha ji, we normally do not give platform to Sikh, specifically when women are there on the panel. His past I have transgressions a, have been, yeah. I अच्छा have मैं No, a, कुछ actually, कहना this is nothing to do with a right wing or a left wing thing. Every time we don't have to get a politics into it. We are talking about the rights of the woman, and dude, we are talking something very important. If you are so sick-minded, dude, I So really feel, you should SM really add C to your name, and you're a really sick person. SM, it is not just हाँ Sikh, बोलिए। but it's the entire left, ecosystem, which is ready to trample upon the rights of women for their friendship with Islamists. They have proven that many a times. Let's not expect something good from them. नहीं, but आंदोलन जी, no, they've done that globally. आंदोलन जी, They've done that globally. बट ऐसे ही है ना, अगर ऐसे शर्तों में अगर हमें फ्रेंडशिप चाहिए इस्लामिस्ट के साथ, तो नहीं चाहिए भाई। नहीं, अगर हम कोई लोगों को तो पता है इस्लाम ना SM मैम, आप उस फ्रेमवर्क से नहीं सोचती है ना, ये लोग सोचते हैं। They have compromised. They will give 10 lives of a woman, but would not like to question their friendship with Islamists. If hundreds of women are even die, okay, are harassed every day, they will not let it go. That friendship.
No, All the right. They Islamic they even Islamic refuse to they acknowledge oppose it it. as a problem. They even refuse to acknowledge this as a problem. They oppose the triple talaq law, Andolan ji. They oppose Acha, the triple talaq law. Tathastu ji, let's not So, dive acha, from the anyways, topic. Do you have anything to yeah, yeah. contribute, like any other Yes, I do. opinion as Yes, to? I do. Yeah. I was just wondering. I joined pretty late. Thank you for inviting me. I just wanted to check if y'all had discussed the other option besides all of these things that you've sorted. That the women, Hindu women, remain dharmic instead of becoming religious people after getting into a mixed marriage. One. Number two, unka, I think we should promote that toxic feminism also. That if they become feminists and when they marry, they can question the Muslim men that why should I convert? They do that with Hindu men. They should for changing names and all of that. वो सेम चीज इस्लाम में भी वो प्रमोट किया जा सकता है. If they're marrying a Muslim man, then similar thing should apply there as well. वो थोड़ा feminism अंदर से जगाए. And another thing, the families can always, Hindu families can always say that yes, we agree, we will agree for the marriage with a Muslim boy as long as the Muslim boy converts to Hinduism. आर्य समाज में जाके शादी करे. So that is another thing that we can push for. घर वापसी भी होगी इससे. So I don't know whether you discuss No, these points or not, but I think this will be nice. Pratestu, the point which you raised now is very important. Of actually if the Hindu girl opts to get married to a Muslim guy, and then we ask them to do a marriage as per Arya Samaj. I'll give you a very good example. Okay, ये मेरी family में हुआ है. With one of my cousin. Okay, not in India but in US. Six. So Sorry. SM. Just can you just give me 10 yeah, seconds go before ahead, you start go your ahead, go story? ahead. Because I'm pretty sure I'll give you good time too, because I want to hear that story, because even I said a story. So just 10-20 seconds ही मैं लूँगी. तो no, Sikh ji, and this is to everyone, not just him. We need to have a law. Even if it is 2% of cases, we need to have a law, because if we go by that logic, only minority cases in majority cases, it's not actually a case. By that logic, sir, we have to remove all rights that we have for women. So we can't do that, right? Even if majority cases are false, that does not mean anything. You still need the law. And second, how to prevent its misuse, even in cases of love jihad laws per se, how to prevent its misuse will come by issuing guidelines and providing safeguards, which the high courts keep on doing. For every law they have done, for 498A, the Supreme Court has issued guidelines. For 375, that is the rape law, the high courts and Supreme Courts have given guidelines to make it such that there is less misuse. And finally, even in the cases of domestic violence that has happened, so in every case, dowry law, any case, there has been given safeguards. But just because there is misuse does not mean you shouldn't have a law. You should have a law, and then the courts and the government further on should bring in amendments and bring in safeguards to prevent misuse of the law, even if it's minority of cases. Very fact Yes, we are SM, go on. addressing. Very fact we are addressing sick is obnoxious. I mean, he's No, disgusting. I think a lot of people will have that question, so it is a good enough question. So yeah, SM, please carry forward. Yeah. So I was just giving you an example. ये मेरे cousin के साथ हुआ है. My own cousin, my first cousin. ठीक है? She's a Hindu. The guy is a Muslim guy, and we had and I'm sure till now she's not converted to Islam. Okay, she's still a Hindu, and they had and generally हम लोगों में ये बातचीत होती है कि अगर निकाह करेंगे they have to actually convert, or they will be given a special, they'll have to do that shuddhikaran to adapt to the Islam, and then they can do the nikah. And very surprisingly, I got to know very late on, since my Mausi just passed away very recently. So when we were talking to her, she was telling ki, because she had both nikah in the afternoon, in the early morning was nikah, and then we proceeded with having a saat fere wali shadi. And that's when we got to know, because there's a lot of speculation, about all these things. Baatcheet mein. Initially, we were not aware about it, but very recently I got to know कि there's some samaj in the Muslims where they do not actually have to convert,
and they don't have to really adapt the Islam, but then they can do the nikah and everything, and they can actually do it. And it was very nice that that her mother-in-law actually gifted her the Mangal Sutra when during the Saat Fere and all these things. हमारे मतलब मेरे side में Mangal Sutra is not mandatory. But anyway, she gifted it as a thing of respect, and she did it. And this particular case, I'm sure even in the US, they must be having some law where they would give them a special privilege of having, both the people coming into the same, getting married, having an interfaith marriage, and still retaining their original identity, right? And it has been successful. उसके घर में आज भी, temple है, छोटा सा घर में जो हम लोग रखते हैं. And the same time, she also has, उनका जो holy book है, Quran and everything, where they do it, and it is nice. And if we can have one such example like this where they have done interreligion marriage, right? Why not? I'll give you one more example. Now this is with my family friend. It is not a it, the guy is a Christian and the girl is a Tambram. Okay, so again came back to they were like, if you have to get married in the church, then you'll have to convert, because they'll give you some water that will uh, you know uh, to clear your spirit and everything, and to actually adapt yourself into They'll Christianity. baptize you. Yeah, exactly. So this aunt of ours, she's like a family friend. She was like, no, no, we'll not do anything of this sort. We'll not adapt any of this sort. But just for the sake of ceremony and customs, we will do the church wedding. Anyway, at the end of the day, the girl said, no, we are not going to. We don't want this one. We don't want to do church wedding because we'll get converted. No, they were like, okay, fine. Let's do one thing. Let's just get registered marriage, and let's have the reception. This is one example. Okay, so यहाँ पे फेरे नहीं हुए, यहाँ पे Christian wedding नहीं हुआ है. And there's one more case of my again very close family friend. मेरी बचपन की है, मेरे से बहुत बड़ी है. She's a Punjabi Sikh सरदारनी है. Got married to a Christian guy. Again, no fere, no Christian wedding. Got married, got themselves registered marriage under Special Marriage Act, and they're still doing good. They had all the ceremonies, they had all the other ceremonies and all the reception, and they're doing good. And the thing is, at the end of the day, your partner is able to accept you for the person you are, giving you the freedom to do what you want to do in your religion, yet are able to understand each other and stay under that concept of marriage, of having a lifelong relationship, of being together. And I think that's the beauty of what we should be promoting over here, when we have 3-4 examples right in front of our eyes, where we can say that it's just that the other person is able to accept you for the one you are. Why not? But I would want to come back to the point where Tatastu had actually picked up from the Hindu family. When a Hindu guy is marrying to a Muslim girl, or vice whatever, and then why can't we ask them to do a Arya Samaj marriage and do a Ghar Wapsi, right? uh, do you think our parents are that even till now I haven't really seen that strong from our parents coming out and telling, okay, do a Ghar Wapsi. They would still say ki ठीक है, both the guys and the girl likes each other, they like each other, they are ready to get married, they're able to respect each other, and they're still able to fulfill whatever they have to, and yet stay in under one, under the house. And I think it's you can give them a choice of doing Ghar Wapsi. Agar nahi bhi hota, I think we should be able to respect them. I just feel that we can't really force, but then I do accept your point. It has just come out from the house, but how many of us are actually ready to talk about it, even in the house? Even about doing Ghar Wapsi, or even No, telling that, there's a see, I problem agree. in See, Islam. problem never Because, happens. The problem never happens between the couple. SM problem usually happens when the time comes with kids, and kids usually I've observed, and I have quite a few relatives again within family, near and dear friends, and extended family as well. And what I've actually realized, and this is not a gut feel, but I've seen all
100 out of 100 cases, the kids will always be Abrahamics. And that is again, and why you say that sab theek hai. I mean, sab theek to hai, lekin you have to actually see there is a when it comes to religion, there is a certain there's a concept of intolerance and religious supremacy. And when it comes to dharma and dharmic traditions, there is the concept of mutual respect. And those are the two that need to be pointed out every time. Hindus need to know that they practice mutual respect, and if they're marrying into Abrahamics, they need to know that they are religious supremacists. They might be half-heartedly practicing their religion, and these marriages are successful for the time being. Then But there's a concept of Hajj test. When the boy will go for Hajj, he'll come back. He will not have the temple. He will not allow a temple inside the home. That's called the Hajj test. It's a classic correct. test. The people have Uh-huh. tested this theory in London. In UK, there have been n number of cases where people had great marriages for almost 10 years until the husband went for Hajj. So you know what I mean. So this is something that needs to be understood very, very clearly. No, That's a very new point. SM 2 minutes रुक जाइए please. That's a very new point. I never thought it from the 1 second. Sick. Seriously. Firstly, if you marry under the Hindu Marriage Act, you will still have rights to property, polygamy not allowed. So yeah, if Hindus are encouraging ghar wapsi, here women's rights are protected. Even if you think not in the Hindu religion, under the law, under the Hindu Marriage Act, it is protected. Property rights, inheritance, divorce, and no polygamy. Then if you do it the same with Islamic law, that's not the case. So there's a difference. And secondly, Ramola ji, the best opinion was of yours, court marriages, which is basically Special Marriage Act. That is the best solution until now. And for all the leftists and the congressies, since we have discussed all the red flags and all the check marks to tick before you marry into such a household, since we have done that, just one last thing, be ready for before 2024 there will be a huge meltdown which I would love to see. That is when the UCC comes, and once the UCC comes, that is the Uniform Civil Code, all these bullshit arguments will get demolished, because we don't have to think so much. There will be one law to marriage, divorce, inheritance, everything. Wait for that. Yeah. And Tatastu, what I was discussing, or even that could be only like 1 out of 10 cases, uh, about actually, a person at the end being at the same religion, yet not being able to convert, right? After having kids and everything. I'll give you one more example, okay, right in front of my eyes. So we used to go for sailing. So I met this girl where I used to go for sailing, yachting, okay? And I didn't know, which I got to know very recently or very later on, that her parents had also had an interfaith marriage. Okay, so the father was a Hindu, the mother was a Christian, or something of that, vice versa. And both the kids were being given a Hindu name, okay? And she had written very beautifully, when she got married, and she was telling, or when she actually gave birth to a baby, because she got married to a Tambram guy, okay? And she wrote in that thing, when she had a baby for herself, the beauty of having the parents from both the faith, yet teaching us the interfaith thing, the beauty of the things that is there in both the faith, and telling us, what will be the best among us, rather than forcing us, what we need to do, what not to do. And see, we have also seen one more case, right? This girl could have married a Christian guy, but again, she did a love marriage. She found a guy, from our faith, and she got married. So again, these are like about 2 or 3 cases out of 10 cases, rare cases. But I think we should appreciate that there are small numbers, but there SM, are there are SM, numbers we can actually talk about, and this should be an example to everyone, rather than those SM. examples what you're talking about, See, let's where not they conflate. forcefully convert. SM, let's not conflate a few things, okay? I'd say a 90% Huh. of the cases where a girl is marrying a Hindu guy,
Hinduism and Hindu dharma and dharmic traditions. I will not call Hindu religion because it is not a religion. Correct. And since we are talking, since it's a Even debate, the Hindu words Marriage matter. Act, Yes. even the Hindu So personal law protects all the rights. exactly. Correct. So now we should not conflate. The problem is not with the Hindus. So Hindu boys' family does not have a problem in giving mutual respect. The keyword is mutual. The mutual respect, the mutual is a problem with Abrahamics. It's not a problem with Dharmics. It's not a problem with Eastern philosophies. It's not a problem with indigenous philosophies. The problem is with the Abrahamics. And that is something that I'm pointing out again and again, over and over, that when you pick up an example, yes, the children have Hindu names, but they will have no problem respecting Jesus, Allah, or whoever they want to. But the problem is Allah disrespects Hindus. My own mother does it. Agree. The I problem have is a Allah Bible in my disrespect home. Hindus. So that is our objection. The problem is the book disrespects us. And that is something that needs to And be pointed out over Tathatoji, and over and over again. have you Thank you. noticed one more thing? Hindus actually have a lot of interfaith marriages. For example, Can I just come in? Andolanji, Okay. just one Please point. go ahead, Just one point. Andolanji. Yeah. No. One important point, right? Where interjection is required. As I again said, the objective of this room is to create a checklist specific to the topic in question. The more we deviate from the topic, Sorry. while we, yeah. So this is the replays are on, and the idea of the room is to have a very scholarly debate on the key points of checklist, intended towards enabling women to use this checklist in case such kind of relationship. Nothing more. We can. All right. Point taken, Andolanji. I think on that note, I think everyone has established their points. All the checklists are done. So if anyone else wants to add a checklist, you can go on. Otherwise, we will have to wrap up with this room. Can I add my point? Yeah, but it should be checklist. It shouldn't be an opinion on interfaith marriage. Yeah, one last line I like to before ending the room. May I, Amit? कोई बोल नहीं रहा है ना? हाँ जी आप बोल लीजिए सर. हाँ, मेरा एक सुझाव था भारत सरकार को कि क्यों नहीं हर एक मैरिज को रजिस्ट्रेशन उसमें कंपलसरी कर दिया जाए. ये तो पॉसिबल है ना. इसमें हाँ, क्या वो है, यूसीसी में कवर लिंक नहीं. हाँ, यूसीसी में कवर होगा कि नहीं दैट आई डोंट नो, क्योंकि अभी तो यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं है. मेरा कहना है कि जितने भी मैरिज होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे स्पेशल हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी मैरिज हो, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया जाए. उसको चाहे कैसे भी हो कि मैंडेटरी कर दिया जाए. तो उससे क्या डेटा भी आएगा और उससे पता भी चलेगा कि कितने स्पेशल मैरिज में हो रहे हैं. और तो उससे बहुत कुछ चीज़ें मेरे ख्याल से जब डेटा रहता है तो ज़्यादा फैक्ट में हम लोग बात कर पाते हैं. तो उस पर्पज से मैं कह रहा हूँ लिंकअप किया जाए गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट जितने बेनिफिशियरी होते हैं. ये मैं दिस इज माय पॉइंट. अच्छा, किसी और को कोई पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज, अदरवाइज वी विल रैप अप विद दिस वन. I'll add my point. So just one point which I would try to retaliate. When we are talking about changes in law, जैसा मैंने पहले कहा, विशाखा गाइडलाइंस में पावर स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखते हुए कंसेंट के बावजूद अगर द पर्सन इज इन अथॉरिटी, कंसेंट को भी अगर वुमेन चाहे तो सब्सिक्वेंटली डिनाई कर सकती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सन ऑफ पावर एंड पर्सन ऑफ अथॉरिटी. इस इंटर रिलीजियस मैरिज में स्पेसिफिकली इस तरीके का प्रोविजन, डीमिंग प्रोविजन आना चाहिए कि अगर कल को मैरिज एसएमए में हुई है और बाद में उसको कन्वर्ट करा गया है निकाहनामा में. This video was made possible by Creative Contents.